Shall we start? Okay. Good morning, everyone. On behalf of BPFTIO Film and Television Institute of Odisha, I, Swastika Panda, welcome you all to this celebration of ours, where we are celebrating 25 years of long and glorious journey. Thank you so much for all of you to being here. It is an art to decorate every picture as a flower in the golden story of the silver screen. It is a skill to capture every image on camera, and training is needed to make the character more alive. BPFTIO, or BPFTIO Film and Television Institute of Odisha, has been imparting training in the same art, skill, and training in a professional manner to very talented and budding students of the institution. Bhabantu jodi ए फिल्म इंस्टीट्यूट न था ताले फिल्म निर्माण क्षेत्र रे ओडिशा आज केउठी थांता साउंड रिकॉर्डिंग एडिटिंग कैमेरा साउंड डिजाइनिंग एमदी अनेक एस्पेक्ट रहिछि फिल्म तैयारी क्षेत्र रे सेही स्थिति रे बा सेही चित्र रे मानचित्र रे आमे कोठी थांते जदि भारतर प्रत्येक आंचलिक चलचित्र जगत सहित गोटे मानचित्र तैयारी करा जाय थांता ताहले आज ओडिशार स्थिति कौ स्थान रे थांता आउ एइथिपाई ही आमे कहू जे जातीय तथा अंतर्जातीय मंच रे जेतेबेले आम ओडिशार गौरव आ गारिमा को शोकेस करूछंती आमर एई एलुमिनीज माने बा आमर एई अनुष्ठान रो जो माने पाठ पढ़िछंती जो माने आगो को बढ़िछंती जो माने फिल्म क्षेत्र रे काम करिछंती से माननको आज प्रतिटी ओडिया धन्यवाद देवा कथा कारण से मानक पाई आज आम ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री आगो को जाइछि आउ आज मध्य अनेक क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिछि जहा पाई आमे ओडिया सिने प्रेमी हिसाब रे गर्व अनुभव मध्य करू सो आमर से अनुष्ठान रो जो माने एलुमिनी रहिछंती अनुष्ठान रो जो माने पाठ पढ़ी आगो को बढ़िछंती आउ ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री को आगो को नेबा पाई जो माने काम करिछंती जो ओडिया आज बाहर जाए जातीय और अंतर्जातीय स्तर में ओडिशार ना को आगो को नहीं सुनाम आनी से भितर आज आम गहन में अनेक जन उपस्थित अच्छा से समस्त गोटे जोरदार करताड़ी हो जाऊ एंड आम आज आसी पहुँचीचु थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली BPFTIO फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिशा एवं मु अनुरोध करी समस्त को छिड़ा होगापाई फॉर द BPFTIO एंथम which is composed by Shri Om Prakash Mahanti and written by Shri Rakesh Kumar Das.
Thank you so much. American filmmaker Robert Bernard Altman have said, filmmaking is a chance to live many life in one time. ଯେତେବେଳେ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେକିଂକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଭିଂ ଇମେଜେସକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯାଉଥିଲା shadow play ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲାଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ୍ all over the world. କିନ୍ତୁ by the time the technique have been emerged, used, and we see that on screen. To discuss on this, we will have a master class on developing film techniques. Jothri Amosoita Rahibe Aji Manchare. Eminent sound designer Shri Rakesh Ranjan, who always believed that sound has to be driven by the story and the content, because sound is the most misunderstood craft, he has said in one interview. Sound of any film must relate with the perception of audience, and to make us understood the importance of sound designing, we have Shri Rakesh Ranjan sir with us today, who is sound designer, whose efforts has made films like Etraz, A Wednesday, Chennai Express, and the list goes on. And if I will say such things, then it will take some time. I request him to come on stage. We will be having Shri Prashant Naik, eminent film editor, heading the Department of Editing, Whistling Woods International, Mumbai. His masterpieces have brought him national awards for editing, starting from working as an assistant director in Odia feature film. He realized that editing is the most important key in filmmaking, and so he went for editing. I request him to please join us on stage. Sunya Swarupa Saptapadi, I Am Kalam has brought him immense success, and with that, harvest of hunger. Thank you, sir. Now I request Shri Jogendra Panda, eminent DOP, to join us on stage, who is very well known for his efforts to make films in 3D back in 2010-11, has grabbed attention of many related to the film fraternity. I request my dear friends to felicitate our esteemed guest and panelist with flower bouquets, please. प्रथमे आपण समस्तंकु धन्यवाद आपणकर शेड्यूल भितरु बिजी शेड्यूल भितरु जेते बेले आमे 25 इयर्स ऑफ जर्नी सेलिब्रेट करूछु आपण माने आसिले आ हमकु समय देले सर जेते बेले आमे टेक्नोलॉजी कथा कहूछु केवल फिल्म मेकिंग नह स्क्रिप्टिंग रु टेक्निक यूज हबा दरकार बा आरंभ हबा दरकार जेते बेले आपणकर आरंभ समय थिला प्रशांत सर जेते बेले आपण स्टार्ट करथुले आ आजिर समय भितरे टेक्नोलॉजिकली केते डेवलपमेंट आपण देखुछन्ते गुड मॉर्निंग एठी आसीवाटा गोटे प्रकार रे प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड फील करूची मु आगरो आसी एठी वर्कशॉप नेची जो प्रकार रो इंट्रोडक्शन देले धन्यवाद डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऊपर कहले हिस्ट्री ऑफ सिनेमा दैट इज माय कोर सब्जेक्ट एक्चुअली व्हिच आई टीच एनो स्टार्टिंग फ्रॉम से 324 BC जते बेले एरिस्टोटल रियलाइज्ड कि हमर गोटे ब्रेन रे डिफेक्ट अछि आ से डिफेक्टटा बेसिकली इट कीप्स द इमेज व्हाट वी सी फॉर फ्यू सेकंड्स when 1/8 of a second in our retina. In 1824, Peter Mark Roget experimented on that. Tapare 1877, Muybridge experimentation happened. Joti horses in motion.
सेमती मोशन पिक्चर स्टार्ट होता तापर एडिसन रो लैब रे हला एंड नेक्स्ट फर्स्ट पब्लिक एक्जिबिशन ऑफ फिल्म्स हैपेंड विथ लुमियर्स पैकेज लुमियर ब्रदर्स फिल्म्स डेवलपमेंट एतिकी आसी जाइए माने गोटाए स्टेटमेंट जदि मु कहिबी हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इज एक्सपेरिमेंटेशंस इन सिनेमाटोग्राफी and history of films or experimentations in editing is the history of cinema. जितने की एक्सपेरिमेंटेशन है सिनेमा रे आगर एडिटिंग नथिला इट वाज शॉट जॉइनिंग वन शॉट टू अनदर देयर वाज नो इमेज साइज चेंज एणु स्टार्ट है एडिटिंग विथ एडविन एस पोर्टर लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन द ग्रेट ट्रेन रोबरी तापर D.W. ग्रिफिथ टुक इट टू अनदर लेवल जोटा को आम रेफर करूँ क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा और कंटिन्यूटी स्टाइल सेटा सेल्युलॉइड फॉर्मेट रे थिला मु लंबा न नहीं करी बाकी माने भी अछंती कहिबे सेल्युलॉइड फॉर्मेट रो हमर आसिला VHS वीडियो फॉर्मेट किछि दिन चलला जोटा को आमे लिनियर सिस्टम कहउथिलो लिनियर एडिटिंग होतला सेते बेलको तापरे फिल्म टू वीडियो है जते बेल को टेलीसिने करिकी वीडियो रे एडिट हबो फाइनली रिवर्स टेलीसिने करिकी नेगेटिव कटिंग हेकरी फिल्म रिलीज हबो सेटा गोटे स्टेज तापरे वीडियो टू वीडियो है जते बेल को एनालॉग बीटा डीजी बीटा आसिला तापरे कंप्लीटली डिजिटल जोठी आमे 2K 4K 5K 6K 8K रेफर करूछु एबे आमे से स्टेज रे पहुंची जाइछु मझे गोटे कन्फ्यूजिंग स्टेट थिला जते बेल को फिल्म टू वीडियो ट्रांसफर करतले आउ तापरे एडिट हबो आउ तापरे सेडा एविड इनस्क्राइबर रे हो कि FCP रो सिनेमा टूल्स रे ही के कन्फर्मिंग करिक आमे पुणी ताको नेगेटिव कटिंग करतले 23 फ्रेम्स पर सेकंड आउ 24 फ्रेम्स पर सेकंड 25 फ्रेम्स पर सेकंड 29.976 एमती सब सेटा कन्फ्यूजिंग थिला बहुत कन्फ्यूजिंग थिला एबे जो स्टेज रे पहुंची जाइछु एबे भी अच्छे से 23.976 24 बट स्टैंडर्ड इज 24 फ्रेम्स पर सेकंड चेंजेस कौन आछि आगर जो प्रकार रे फिल्म होतला एबे जो प्रकार रे फिल्म होछि ता भितरे जोगेंद्र बाबू ता ऊपर हाईलाइट करिवे एबे मोस्टली सिनेमाटोग्राफी टाको इमेज प्रोवाइडर हिसाब रे हम देखुछु लेटर पोस्ट प्रोडक्शन गुड़ाई जिनस पॉसिबिलिटीज हो जाउछि जोथि पई हम शूटिंग बेल को बेसी समय नष्ट न करिक वी आर कैप्चरिंग द इमेज एडिटिंग रे व्हिच राकेश जी विल अगेन एक्सप्लेन ए लिटिल कटिंग स्टाइल केमती चेंज होइछि आमर माने गुड़ाए एक्चुअली आई वाज द मॉडरेटर फॉर ए सेशन जोड़ा एडिटर्स कॉन्क्लेव होता दिल्ली स्टार होटल रे सेठी बॉम्बे रे एंड आई वाज मॉडरेटिंग दैट मु पचारली हमर जो प्रोमिनेंट एडिटर्स अछंती समिति ये फाइनल डिलीवरी ऑफ साउंड तमर कटिंग पैटर्न टाको इफेक्ट करे कि दे डिडंट हैव एनी क्लू बट राकेश जी has done a film which he shows as example. He will explain about it. Stereo रे जो टाइप रो हमें कटिंग करी पारिबो 5.1 रे सेमती न 7.1 डॉल्बी एटमॉस ता बेल को हमर कटिंग स्टाइल टिके चेंज करिया में पड़े नले इट विल लुक ऑड एडिटर्स आगरो जो हिसाब रे हमें काम करतलो आज भीतर पॉसिबिलिटीज न देखिले असुविधा पड़जा कहीं मुझे रेफर करी जुरासिक पार्क को माइकल कान वाज द एडिटर ही वाज एडिटिंग द फिल्म विदाउट द डायनोसर्स सो केते समय रखिबे से डायनोसर रो इमेज आसीबो केते समय से रहिबो दैट वाज समथिंग व्हिच यू हैव टू इमेजिन एंड कीप दैट टाइम तो से पॉसिबिलिटीज गुड़ा को जानिले जाइकरी आज सिचुएशन रे आमे रेलिवेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आम जदि बुझिकी निजको अपडेट करवा ताहले आम रेलिवेंट मो सांगे मोर बहुत गुड़ाए कलिग्स मु देखी जो माने
अपडेट करि पारलेनी दे हैव बीन आउट ऑफ जॉब. So, technology ro development is a boon and a ban too. Kahi pariba ame. Rakesh sir, you said that sound is the most misunderstood craft. But with the advancement of technology, with the growing phase, is there any kind of chance that we can understand this design of sound, the enhancement of sound in near future? Hi, good morning all. I'm really privileged to be here. See, first, to all the students, you guys are in a really privileged world right now because of the technological advancements which you guys are learning. When I was a student, I learned the analog way. We were still in the optical zone. Things were very difficult. But because of the difficulties, we had a discipline of cinema, what to do. Now, see, how long do you take to adapt to a technology? How many of you change your phones within 6 months? Can I see the hands? A year? Probably most of you change your phones, and you take only 5 to 10 minutes to get used to it. So the technology will keep on changing. You guys will adapt to it. Don't be afraid of it. Cinema was always driven by technology. It had the technological aspect, and the other aspect was storytelling. And I happened to be in the convocation at my school, FTII, where the great master, Mr. Ray, was there. And we had a question to him. How do you tell a story? How do you tell a story? All of us have our childhood memories that we would go to our aunts, uncles, grandmothers to hear to a story. It had no visuals, but it had sound. But it was the art of that person who's telling the story that would keep us engrossed. So technology is one aspect. It will keep on changing. It is evolving. And if we don't evolve our craft, then definitely we are doomed of telling a story. Because the concept of space with the advent of modern immersive sound is gone. I'm trying to see the screen at your school. The film screen used to have a black border. How many of you have seen that? Cinema halls, black border. Now that black border is gone. It's a semicircular screen kind of a thing. And that border is gone, vanished. Now with that vanishing border, the sound has also come into a different space, the immersive space. It's there. What Prashant sir was talking, that the cutting, the lensing, the taking has to change. Because you need to understand that from a single source sound, it's all around you now. And as an editor, director, cameraman, you will have to think about the lensing. If action is happening in a mid-long, long shot, and a close shot, the sound is going to be different, right? Guys, interact. I'll be the only guy who will be speaking. So the lens is very important. So the mid-long shot, the sound is going to be small, mid, louder, and if it covers the whole lens, it's going to be very loud. And not only loud, it will get into the space of the surround sound because I'm breaking that frame barrier. If I'm touching something on those frames, so the sound is entering the audience space. Now, this is very simple to understand. This is no rocket science at all.
In the mono time, if you have a OS shot, it works very good. And if you have fire in the middle, OS cutting becomes over the shoulder, ठीक है, एक master लिया, इसके OS, उसके OS. The moment you come into an immersive sound space, this OS becomes tacky because the fire keeps on jumping from the left of the frame to the right of the frame. And I have pictures to show you, or probably I can give you references of films where such funny things do happen. But that was the time when filmmaking was evolving and it was coming to the sound technologies were changing. So we need to get used to the technology and think about it, what it can do. My guru always insisted कि देखो ये जो टेक्नोलॉजी है उनके टाइम में when he used to record Mr. कुंदन लाल सहगल तो माइक्रोफोन को श्री साउंड स्टूडियो में स्टोव के ऊपर रख के गर्म करते थे, ठंड में वो जम जाती थी कार्बन. Now that has changed. You have hypersensitive microphones, highly directional microphones, and the digital technology has given you immense freedom in the behind the scene thing, be it cinematography, be it editing, be it sound. But if you are not disciplined, then I see few directors, frame में सब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहा है, लेफ्ट राइट क्रेन भी दिख रहा है, केबल दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन जो था वो साइड में रखा हुआ है, सर बाद में इसको रीसेंटर करके रीफ्रेम कर लेंगे. Doesn't work. So I was told, follow the discipline of analog era and you will be good. So this has helped me in terms of discipline and my thinking of cinema. I still process sound the way I used to process it in the analog era. It will have, my recording chain is not without a compressor for dialogue. I'll be limiting my tracks when I'm doing a immersive mix. So that kind of things are basic in cinema. The technology is there, but the technology is not there to bind your legs and imagination. कि नहीं boss ये करना. No, 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 no. You have to move forward from the technology. That's their helping hand. How are you going to tell the story? So Mr. Ray told, you have to tell a story as if you are telling to a small child. सब कुछ clear होना चाहिए. Nothing has to be, oh, this is because this is so. No, it has to explain itself. So, hence, my contention always is, and my fight is with the screenwriters actually. When they do a script writing, or many direction kids, when they do a script, the description of the shot, or in the script, the camera pulls back from the mountain, we see a rising sun, and we find this girl standing over there. She turns back, goes inside the kitchen, puts off the gas, and then she walks out. Now this is one shot. The way screenwriters and people write. But my point is, what do I want the audience to hear in this shot? Have I thought of it? What was the motivation for her to move from there to the kitchen? All this detailing when you, as a student, when you are doing your film, when you don't do it on the paper, it will not come. You guys are learning the art of converting the text with your audiovisual technology and learning into a magic on screen which the audience, irrespective of their class, creed and educational background, are going to consume. There'll be rickshawalas, there'll be scientists, engineers, doctors. They all need to understand that. So that journey of the text with the help of the audiovisual medium to the audience is an interesting journey, but end of the day, it is the text which is getting deciphered there with the audience. The audience is consuming the actual text, and they don't feel the technology, what has happened, you know. So the technology is just there to take from position A to B, that's it. Technology और कुछ नहीं करेगा, it will do nothing.
It'll just help you solve the problem. But how you solve a problem? Certain people who know the craft will do it with ease. Their shooting is very, very organized, no shouting, stuff like that. And even the post is seamless. But if you are disorganized, which is the discipline of the analog era, if you are brilliant job you will do. You'll be successful and good filmmakers. This is for intro. Probably that's, I'll hold on here. But the thing is that when you are saying, I don't feel like interrupting because it's very interesting to know different aspects of your experience, because this will help the students who are learning over here. And now I'll come to Jogendra sir. Sir, when it was like starting of the film industry, when the filmmaking was started, and when you started taking actions for the 3D cinemas, say journey, say struggle apanko pai kemti thila, and then when we see 3D cinemas of Hindi and other regional languages, how you feel? Because you're one of the makers of 3D cinemas in this cinema world. Hello. Good morning. Regional film रे 3D cinema जानी नहीं मु किंतु मु छुआ बड़े गुटे But we hope that it will come soon. हाँ छुआ बड़े गुटे film देखी थी, that is a Tamil movie called My Dear Kutti Chattan. That is the first 3D film that I saw. सेते बड़े बहुत मु बहुत छुआ थी किंतु बहुत fascinate करते लासे. Say to say जिनिसटा जानिबा पई भारी इच्छा थिला. तापरे FTI ब्लैक एंड व्हाइट जमाना रो आमे आसचु बॉम्बे आसिलु बॉम्बे रो फिल्म रो लाइक टीवी रो डिजिटल फिल्म आसी गला. तापरे जेतेबेला आमे प्रथमे देखिलु भलो 3D मूवी थिएटर रे सेटा गोटे मैजिकल मोमेंट थिला. आउ ता विषय जानिबा पई भारी इच्छा थिला. ता पे गोटे पैसा दरकार थिला. जने प्रोड्यूसर राजी हेले तो जाई की ट्रेनिंग नेलु. 3D माने आमे जेमती गोटे आखि रे देखु सेटा हला साधारण फिल्म. 3D हला दुईटा आखि, दुई आखि रे देखिले आपन को स्टीरियोस्कोपिक विजन टा मिले. दुई आखि रे अलग अलग दुईटा छवि देखिले आपन 3D देखि परिबे. ताको अचीव करिया पई बहुत कष्टकर काम अच्छी. But say जो scene आपण देखिले, when you felt the essence of 3D cinemas, आपण को से जो experience थिला, मो request करबी if you can share with our students. मो तो पाइनवुड स्टूडियो लंडन रे देखितली जोटा ऑर्थो 3D. there is something called ऑर्थो 3D माने एकदम रियल. सेटा अंडर वाटर शूटिंग हेतला. समुद्र भितरे माछ गछ सब अछि आ कैमरा भितरे जाउछि. आउ मु गोटे स्पेशल स्टूडियो रे देखितले. आउ दैट वाज अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस. माने सत्य जेमती पानी भितरे रहितला भलिया लागिला. आउ बहुत आश्चर्य धरणर छवि से जोटा कि आपण माने देखि पारंत नै एटे थिएटर रे. जेहेतु थिएटर रे जा देखुचंती सेटा ऑर्थो 3D नुओ, सेटा जस्ट 3D गोटे कंप्रेस 3D देखंती आपण. आउ सेटा भी पुणे दुईटा कैमरा रे तैयारी हेतला. से कैमरा सेटअप बहुत बड़ आ बहुत डिफिकल्ट तार पोस्ट प्रोडक्शन सेमती अचीव करवा. किंतु आजिकल 3D बहुत सहज होगा जेहेतु टेक्नोलोजी डिजिटल समय आउ कैमरा बड़ ना छोट अच्छी. आगु छोट कैमरा को उड़िया को हेले आम हेलिकॉप्टर यूज करतलो. आजिकल तो ड्रोन साहाଯ୍ୟ जे भी उड़ी दे पारछि. सेतरे खाली हेलिकॉप्टर नो सेतरे स्टेबलाइजर लगुतला. इमेज बहुत हलुतला. ताको स्थिर करने स्टेबलाइजर लगुला. आजिकल से सब किसी दरकार नहीं. सब बहुत सहज पाई हो. किंतु किसी जिनस चेंज है ना. माने आपन को 3D करने को हेले दुईटा इमेज नवाक ही पड़ो. 3D किंतु सब कथा कही हुए नहीं. जमी सिनेमा रे मजा अच्छी 3D टा गोटे जस्ट भावती गोटे गिमिक. इट्स नॉट सिनेमा. आपन को जदि 3D भल सिनेमा करने पड़ो से सबू करने पड़ो जोटा कि आप साधारण सिनेमा करने चाहते. टेक्नोलोजी जो गुड़ाए जिनस सहज हो जाइए किंतु सिनेमा तैयारी करने
अनेक जिनस सेमिति अच्छी जमती माने 60-70 वर्ष पूर्व थिला आज भी से सब जिनस करियो स्क्रिप्टिंग करिया को पड़िबो लेंसिंग करिया को पड़िबो कैमरा मूवमेंट गुडा को चिंता करिया को पड़िबो से सब किछि चेंज हे नै हुए तो सेते बळे गोटे छवि नबा पाई बहुत लाइट लगे पड़ुला आजिकली बहुत कम लाइट रे करि परिबे सेते बळे लेंस गुडाक साफ नथिला आजिकली बहुत बढ़िया लेंस आसी गलानी सबू हाथ रे हल्का हो गलानी छोट हो गलानी किंतु सेतिक बुद्धि खर्च करिया पड़ियो भल सिनेमा पाई सेटा चेंज है नै आपण से क्षेत्र रो किछि सहज हो जाय नै टेक्नोलॉजी किछि साहाय्य बेसी करि पारि नै आउ गुडा नुआ नुआ जिनस बाहरी किछि जथा रिसेंटली मो देखली वर्चुअल स्टूडियो माने आपण एमती गोटे पर्दा अच्छी से आपण जहाँ भी चाहिए सब चेंज हो पार आपण बैकग्राउंडटा आपण कैमरा हैंडल धरले से पछर इमेज भी हल्व फोकस कले बैकग्राउंड भी आउट ऑफ फोकस हम आपण जो सीजन दरकार गोटे सेकेंड रे चेंज हो सन एंगल कौन दरकार सूर्यटा कौटे अच्छी उदय होची ना अस्त होची जहाँ कहले सांगे सांगे जीव एवरीथिंग रोड रे आपण देखुचंती बहुत हाई स्पीड रे गाड़ी चलाउचंती से सब किछि ना एमती गोटे स्टूडियो रे होची से सब टेक्नोलॉजी नुआ टेक्नोलॉजी से गुडा को आगो के हेल्प करूची इन फिल्म मेकिंग्स प्रशांत सर सब बेले कहा जाए जे गोटे फिल्म जिते बेले तैयारी करा जाए सितरे इमोशंस को भी रखा जाए गोटे इमोशन कनेक्ट करवा दरकार लोकों सहित से एसेंस को लोक बुझीबा दरकार जो कथा राकेश सर मध्य कहले जिते बेले आपण फिल्म एडिट करंती आपण को मुंडरे भी सही चिंताधारा थाए बा आपण को मनरे भी सही चिंता आसे जे डिफरेंट शॉट्स को एडिट करिकी जोड़ीबा भितरे एमिति तैयारी करबा दरकार जेमती गोटे कहानी लोकों को पाखरे पहुँचीबो आ सहजरे लोक से कहानी को बुझी पारुथबे जो राकेश सर कहले स्टोरी टेलिंग उपरे एक्चुअली दैट हैज नॉट चेंज्ड से अच्छी आगुरी थिला मु जो आरंभ कली लुमियर ब्रदर्स रे स्टोरी नथिला गोटे इनसीडेंट कैप्चर कले जजेस मेलिएज ट्रिक फोटोग्राफी कले से भी गोटे मैजिक शो देखुचंती कि गोटे वुमेन बसची ता ऊपर बेडशीट गोटे कवर करदेले टाणी नेला बेलू से गोटे कंकाल स्टोरी टेलिंग आरंभ है एक्चुअली अगेन एडविन एस पोटर जिते सी सिंड्रेला को शूट कले डिफरेंट एक्शंस रे आउ सब जाक जोड़ी देकर जिते देखिले दैट टोल्ड ए स्टोरी अबाउट सिंड्रेला तापर कहानी को आउ गोटे लेवल को लेकर जाइए DW ग्रिफिथ विथ बर्थ ऑफ ए नेशन एंड मेनी थिंग्स जोठी से क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा बेलू से माने थिएटर रो जितकी कॉन्सेप्ट थिला थिएटर रे आमे केमती थिएटर देखु आमे बसले सेठी ऑडियंस हिसाब रे सामने रे थिएटर परफॉर्मेंस होउची एणु आमर लेफ्ट एंड राइट इज डिफाइंड सेठू 180 डिग्री एंगल रो कॉन्सेप्ट आसिला तापरे प्रीवियस फिल्म मेकर्स गुड़ाकर इमेज साइज चेंज हो नथला जोठी कैमरा रखीदेले सेठू इंसिडेंट को रिकॉर्ड कले तापरे देखिले सो ग्रिफिथ प्रथमे से इमेज साइज भी चेंज कले फॉर ए ड्रामेटिक रीजन तापरे इंटरकटिंग जोटा आगर पैरेलल एडिटिंग बोली कहूँ पटर जोटा डिस्कवर करते ताको एनादर लेवल को लेकर गले अगेन ग्रिफिथ तापरे रशियन फिल्म मेकर्स आसिले जो मैंने हॉलीवुड सांगे कम्पीट कर पारे बिकॉज ऑफ द बजेट दैट वाज रिक्वायर्ड आउ डिसकंटिन्यूटी एडिटिंग स्टार्ट है सीट एमती होकर स्टोरी टेलिंग किंतु समान होकर रही स्टोरी टेलिंग रे किसी चेंज ना टेक्नोलॉजी चेंज होची आमर स्टाइल ऑफ एडिटिंग चेंज होची कि स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग चेंज होची सी टेक्नोलॉजी रो एडवांसमेंट सहित जेमती आपण किछि समय पूर्व प्रारंभ रे कहले जे 4K 8K एमती टेक्निकली अनेक गुडी डेवलपमेंट आमे देखिलु से डेवलपमेंट सहित एडिट करबा समय रे से इमोशन को आपण डिलीवर करबा केमती एक्सपीरियंस रहबा आमे कौन करूँ बेसिकली स्टोरीटा को प्रथम जिनस हो स्टोरीटा को देखियो शॉर्ट सिलेक्शन करूँ जोटा स्टोरीटा को आग को बढ़े नब सांगरे
ए कंटिन्यूटी टाको हम बहुत इंपोर्टेंस दउथलो आगरु डिसकंटिन्यूटी एडिटिंग जेबेठु आसिला सेटा टिके माने पछकु पळै गला बेसिकली इट टुक ए बैक सीट डिसकंटिन्यूटी एडिटिंग भी सही इमोशन टाको प्रोजेक्ट करथला समान हिसाब रे लेटेस्ट ये होची गोटे थ्योरी अछि जोटा वाल्टर मॉक ए फेमस एकेडमी अवार्ड विनर एडिटर एंड साउंड डिजाइनर से ताको डिफाइन करछंती आ क्वांटिटी हिसाब रे से परसेंटेज दैछंती प्रत्येक जिंस टाको सो इमोशन स्कोर्स मैक्सिमम 51% तापरे स्टोरी दैट्स 23% ता तळकु रिदम व्हिच इज 10% ता तळकु आई ट्रेस आमे कोठी देखुचे स्क्रीन रे एते बड़ स्क्रीन नेबे तो कोठी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अछि से 7% तापरे कंटिन्यूटी जोटा 2D स्पेस ऑफ एक्शन बोलगिरी कहा जाउची 5% तापरे 3D प्लेन ऑफ एक्शन जो थरे आमे 2 डायमेंशनल स्पेस रे 3 डायमेंशनल स्पेस टाकू क्रिएट करबा पे चेष्टा करू दैट इज 4% एणु जदि इमोशन टाकू नेबी माने बाकी सब जिंस पछरे रही गले भी चलिबो बट इमोशन शुड बी रीचिंग टू द ऑडियंस आसे टेक्निक देखेनी कोठी कंटिन्यूटी एरर हे गला कोठी आउ कोन हे गला आमे बाहुबली एत्ते बड़ माने सुपर सक्सेसफुल 1000 मिस्टेक्स अछि ता भितरे बट वी डोंट माइंड वी डोंट सी दैट आमे जोठी देखुछु आमे इमोशन संगे आमे कनेक्ट करूछु एडिटिंग बेलकु से मटेरियल संगे मु जोड़ी जाए मो निजो एक्सपीरियंस जदि कहबी आई एम क्रिएटिंग ए वर्ल्ड एंड आई एम सिटिंग देयर आई एम गाइडिंग द कैरेक्टर्स ए एक्टर एमती कहबो कि ए कैरेक्टर एमती ही करबा ऊपर को जीवन निश्चय सेठी भी मु जगुछु बेसिकली इमोशन आगर जो जिनसटा आमे हैंडीकैप हो जाउतलु गोडा जिनस रे टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस गिविंग दैट इमोशन राइट नाउ मो गोटे फिल्म एडिट करथली आई एम कलाम सेति बेलकु लिटरली आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर फाइंडिंग 1 फ्रेम 2 फ्रेम्स मोर टू प्रोजेक्ट दैट इमोशन डायरेक्टर बहुत जल्दी रे अछि कट कहि छाड़ी दबा पे एंड एक्टर्स बेसिकली दे हैव गॉट ए टेंडेंसी ऑफ ड्रॉपिंग द इमोशन द मोमेंट दे लिसन कट बट पर फिल्म गुड़ा को जोटा सप्तपदी कहले सप्तपदी बेलकु आम आई हैव प्लेड अ लॉट विथ टेक्नोलॉजी बिकॉज जोटी मो इमोशन पाउनी सेतिकी फ्रेम रे स्लो मो कर देली एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर Rakesh sir, we are watching Hollywood cinemas, but the sound designing and the way the characters are speaking in those world, when Indian cinema will grow to the same platform, what is your opinion in this? See, my take on this is Indian cinema basically has evolved from the Jatra. Because in our society also, do we talk softly? No. As a Indian milieu, hey, kya ho raha hai? See, all our superheroes, they won't be superheroes if they don't speak like that. That's the basic concept. Jatra you are doing in an open field, mane kete bada audience thi basically, and you are party kare, hey, kaun is it? Things are that dramatic. It's come from there. Grassroots seat आसी तेणु करी आपण माने जेते बेले इंग्लिश फिल्म देखिबा जाउछंती do you understand the dialogue eka sangere mane the moment you enter do you get the dialogues can you hear it no it takes time for you to get used to that level of the sound Hindi film you can sleep and then wake up and then also you will understand and more than the Hindi film the Tamil film that's the dialogue is going there so your brain is relaxed okay aankh band karke I can bujhi paribi to film to but the moment I speak like this I love you all guys how are you I am forcing you guys to pay attention to my lips and listen to me sound is not technology sound is psychology it is psychological and see you're waiting कि मैं भूल गया डायलॉग
कि बोल क्यों नहीं रहा हूं? No. Sound has got all very interesting elements. And we are rich. Have you ever seen any critic write about sound? No, they will not write. Because sound has got so many layers, from physics to psychoacoustics to acoustics to communication engineering, routing, and end of the day, connecting a meaning to it. So it works on different layers. And actually, the people, we sitting over here, we manipulate your perception. माने बोक्का कर दू तो आपण मान को नहीं कि गोटे हॉल रे बंद करी कि वी टेल यू नाउ बिलीव दिस ए जिनसटा होची प्लीज हसीबे कांदीबे नो इट्स नॉट दैट he probably he'll use his colors to draw your attention. Probably the art director in Ritvik Das film, I'll get the name of the film, Meghe Dhaka Tara. When the leading lady comes back to meet the hero, there is an ashtray, big ashtray, wooden ashtray. उसके ऊपर हाथी के pictures बने हुए हैं. Look at the symbolism. The art director has put that. And that is the feeling which this character is going through. And the same feeling the audience needs to feel. So all of us are manipulating your perception. End of the day, we are making, nothing is real on screen. But with technology, we make it real, absolutely real. So in the present day context, if I want something to happen anywhere, I need Panda Babu to give me a shot and Prashant to hold that shot for a while. If I need my bullet to travel from the back to the screen and tuck, I need that shot to stay, come from there, and not necessarily center it. You know, when I say centering, from the mono era, the cameramen, they used to center objects. That's the theory, old theory. Ki centering karke rakhiwa. No. For the acoustical space, I need that off-center now to create the dynamism in the hall. Now, let's suppose I need to have this space, I need to have this space, I need to have the head also, the top space. Tenukari, lensing, the duration of the shot which you are holding, and where does all this boil down to? Come on, can you think about it? Where does this boil down to? Imagination. See, end of the day, the director is the captain of the ship. How he is going to execute the shot? But he has to imagine that first. And imagination comes, imagination ta kutu apna paive. You are 18-year, 22-year-old boys, girls. How do you get that imagination? Do you have that experience of life? Tenukari, you need to have that experience of life. Observe people. And if you don't observe people, I'm really sorry. You can't be a storyteller. He's a storyteller, I'm a storyteller, he's a storyteller. And if you want to be a successful storyteller, you have to observe life. Too young to observe life? How many of you read books? 2 hands, 3 hands, 4, 5, 6. Highly disappointing. 7. I conduct interviews across the film schools in India. And the moment I ask, give me a name of Indian author, guess what? Guess what? One name. I love you guys. Chetan Bhagat. That's it. And the moment you say, Gitanjali padha hai kya? Oh my God, what is he asking? Gitanjali kya hai? And matlab, no, they don't have any sense of Indian writers. They have not read. Your stories, Odisha re jodi apana nijo history, nije culture re jodi deep dive down karibe, Muna Bhai and Nirad Babu, they used to make films from this land only. Their stories. So I'm not telling you
कि don't go to Bombay or Hollywood. Definitely go. But find stories around you. So many stories. And be sensitive to that story. If you are sensitive and true, the audience will love you. Technology is not going to help you. I have worked with many big directors. One of my directors, he had a big star cast of the Bombay industry. You name and he has. 5 heroes, 5 heroines, 3 villains, blah, blah. And camera moving all over, even under the table, coming from there, getting into places, I don't know. But the film flopped. The next film he made, minimum budget, and camera rakha, bolo dialogue, camera rakha, dialogue bolo, film khatam. And the film was Saransh. Anupam Kher, I don't know how many of you have seen the film. The film was a super hit film because the audience could connect with that old father trying to grab the asthi of the son. So you have to have a connect. There are certain connects which are universal. There are certain connects which are regional. There are certain connects which are national. Jodi apno ma kahi debe, any language, ma is ma yaar, damn it. And ma ko ma bologe to ye emotion, ma. See, the tonality and texture also matters. Like the painter and the cameraman, when he does his frame with different colors and things, the sound designer has got texture. This is not understood by many designers, that sound has textures. And it has many layers of textures. So probably you'll have to look into films, read books, watch films, and then come to a conclusion ki, okay, what works for you? Suppose I say relate black to a sound, black color to a sound, what would you tell me? What sound comes to your mind? Someone said silent? Did someone say silent? Yeah, probably creating a vacuum. Have you ever heard the word silence is positive and negative? नहीं, okay, ये बड़ा क्लास का चीज़ है. Probably I'll leave it. See, I'm a very bad talker. I go on talking and talking, and I don't know where to stop. Probably I'll stop here and let. We'll discuss, of course, because there is a limited time, but still, the way you are conveying the things, the reality, ground reality to our students, that is commendable. And ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟିଚିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଲଗାଇବେ. ଆଇଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍. ଲାଇକୱାଇଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ସେ ଇମୋସନ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ସେ ସିନ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଡେଲିଭର କରିବା. ହାଉ ଡୁ ୟୁ ସି ଇଟ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ with the technology use? ନା ସହଜ. ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ. ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସହଜ କରିଦେଇଛି. ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା, ମିଚେଲ୍ କ୍ୟାମେରା, ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ମିଚେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଓଜନ କି 70 କିଲୋ. ତ ସେଥିରେ ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରାହେଉଥିଲା ସବୁ ହେଉଥିଲା. କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା, ଲେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସବୁ ହେଉଥିଲା. ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ. ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫକୋର୍ସ ସହଜ କରିଦେବ. ଆପଣ ବରଫ ସିନ୍ କରିପାରିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି. ସପୋଜ୍ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଥାଇକି. ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେତିକି କରିପାରିବ. କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଇମୋସନାଲ୍. ଏବେ ଆମେ, yes sir, please. If I may interrupt over here, he talked very nicely. खूब भला जिनसे Mitchell with Moorhead. It's a nightmare for cameramen. I don't know how many of you have seen the Moorhead. What the FTIA guys did, say जेतेबेले पास करी कि आसिले, cameramen like KK Mahajan, AK Beer, Sudarshan Nag, what they did, they entered small flats to shoot a film, which was taboo. You can't do. But they broke that ceiling. KK would shoot a film anywhere, you tell him.
And like Aruna Raje, one of our editing graduates who became a director, and Murthy sir and Beer, they have worked quite a lot with her. Mane 10 by 10 room re, that Rihai, that scene of Hema Malini, I think I'm quoting the right picture, I think. Very small room, and Vinod Khanna came for a 9 o'clock shift at 3 and he said ki Aruna मैं चला जाऊंगा जल्दी. Aruna went blank. She went to Murthy sir, क्या करें, इतने सारे shot breakdown किया हुआ है. Murthy sir said, don't worry, we'll take it in a single shot. Reduce the number of shots, we'll do it. Now this is where your education will help you. How you solve problems, that is why you are in a film school. Tenu kori. Not because it's glamour and you come to a film school, bulabuli kariba, sango heba. No, that's not the purpose of a film school. Film school purpose is, you guys when pass kari ke gala pare, you can be problem solvers. Don't create a problem for an actor or other technicians. So you have to solve a problem. And that is where the film education is going to come to you. So please you continue. मु किंतु कहूँ मु बॉम्बे रे हुए तो मु सब बड़े बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट सब यूज करे माने रोबोटिक आर्म हो लेंसेस हो पेरिस्कोपिक लेंसेस प्रूफ लेंसेस विभिन्न प्रकार लेंसेस जोटा कि आम साधारण जान न था मते किंतु ये जो चेंजेस भल लगे प्रथम आम फिल्म लोड करूँ गोटे 400 फुटिया कैन जोटा केवल 4 मिनिट चलूला बर्तमान डिजिटल रे आपण एकदम लंबा चले पारे ता माने आपण सिंगल शॉट रो फिल्म प्लान करि पारिबे सेटा भल ना खराब जेहेतु 400 फुट फिल्म 4 मिनिट चलूला तेणुक एडिटिंग निहाती दरकार थिला आजिकल बिना कट्रे भी लोक चेष्टा कर फिल्म करने जमी 2K 4K दुईटा जाकर स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी सेम किसी फरक ना से 2K 4K डिमांडटा अन्य जिनस नुआ बड़ साइज टीवी आसपाई 4K आमती आम 24 फ्रेम थिला एबे नुआ शूटिंग मेथड आसी 60 फ्रेम रे आरंभ होता 18 फ्रेम रे जेहेतु आमर परसिस्टेंट विजन होची 1/18 सेकेंड से 24 है 24 रु टेलीविजन 25 30 तेणुक टेक्नोलोजी सब बड़े पॉजिटिव आउ सहज करने जाए ताकि आपण को मुंड ठू कैमरा साउंड बड़ जमी न हो जाए हाँ आउ सब बड़े टेक्नोलोजी आपन को प्रॉब्लम गुड़ाक सॉल्व करके दौची ताकू ठीक से यूज करवा हले ओके प्रशांत सर आपण केवल हिंदी तो नुहे अनेक ओडिया सिनेमा रो मध्य एडिट करचंती लाइक वाइज इफ आई से कोकली एंड ऑल सो से जो डेवलपमेंट को फिल्म टेक्निक्स रो जो डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस रे बिकॉज़ यू आर द फाइनल वन जहां परे हमें सिनेमा देखिबा को पाइबो सो ओडिया सिनेमा रे से डेवलपमेंट I take objection to that. He's not the final one. Okay. Yeah, post-production process. Okay. So से डेवलपमेंट को आपण ओडिया सिनेमा क्षेत्र रे केमति देखुछन्ते Difficult to say that actually. से मो ओडिया सिनेमा आरंभ कली एक्चुअली शून्य स्वरूप तापर नेक्स्ट करतली हार्वेस्ट ऑफ हंगर प्रॉपर ओडिया तो नुह सी ताकू एक्चुअली मल्टीलिंगुअल कहि पारिया ओडिया अच्छी से हैदराबादी लैंग्वेज अच्छी से कॉन्ट्रैक्टर गुड़ाक हिंदी कहते इंग्लिश कहते तापरे कली मु माटीर बंधन सेठू कोकली मझे गुड़ाए शॉर्ट फिल्म्स इत्यादि भी करी चेंजेस आसी ता भितर प्रथमे जो हिसाब रे आमे कलिंग स्टूडियो रे बसिक स्टीनबैक रे करूँ अन्य जो हार्वेस्ट ऑफ हंगर कला बेलू FCP आसी सारी से कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग आसी सारी लोक ताको रेफर करती नॉन लिनियर एडिटिंग बोलिक
डे वन रु फिल्म जो दिन आरंभ है इट वाज नॉन लिनियर मझे लिनियर हो जाता जो वीडियो एडिटिंग बेलू तापरे कंप्यूटराइज एडिटिंग जितक बेले आसला जिनसटा को सहज करदेला एडिटिंग बेलू आम गोटाए फ्रेम गोटाए शॉर्ट रिमेनिंग पोर्शंस जो हिसाब से रखुलु से टर्मिनोलॉजी जो एबे कंप्यूटराइज एडिटिंग रे टर्मिनोलॉजी सब आसची बिन कटिंग्स ट्रिम्स सबू से आमर ट्रेडिशनल फिल्म एडिटिंग डिसिप्लिन टाक हमको मेंटेन करने सेम जहाँ से कटिंग संभाल रखुलु से शॉर्ट नंबर बिगिनिंग एंड इत्यादि मार्क करके रखुलु ट्रिम्स हेले 2-3 फ्रेम गोटाए फ्रेम जोटा पर दरकार पड़ पारे से फ्रेम सब हजि जाऊला जदि आम ठीक हिसाब से प्रिजर्व न करूँ टेक्नोलॉजिकल चेंज रे जिते कंप्यूटराइज एडिटिंग है से जिनसटा नहीं फिजिकली जो कटिंग करूँ जाइए कटिंग टेबल को एठी असुविधा ना सिक्वेन्स गोटे कलु डुप्लिकेट कलु नेक्स्ट डे मुझे रीनेम करदेवी विथ द फर्स्ट एडिट सेकेंड एडिट थर्ड एडिट और डेट वाइज सो माय फर्स्ट एडिट इज देयर आई कैन गो बैक टू दैट इफ आई डोंट लाइक द लास्ट एडिट 9th एडिट आई कैन गो बैक टू माय फर्स्ट एडिट एंड ब्रिंग इट बैक दैट इज हेल्पिंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग एक्चुअली जो जिनसटा आम मार्क करूँ गोटे डिजल्व करार अच्छी कि फेड आउट करार अच्छी गोटे सेकेंड हेले एपटू 12 फ्रेम फेड आउट हम सेपटू 12 फ्रेम फेड इन हम ताकू आम इमेजिन करूँ गोटे सेकेंड भल लगे ना 2 सेकेंड भल लगे ये आम इनस्टेंटली अप्लाई कर दो डिजल्व ऑफ 2 सेकेंड्स ओके नो इट्स नॉट लुकिंग नाइस लेट मी अप्लाई 3 सेकेंड्स डिजल्व पॉसिबल विदाउट एनी डिफिकल्टी लाइक राकेश सर कहते जो ऑप्टिकल ये प्रिंटिंग कथा छोटिया छोटिया जिनसटे जोटा करूँ आम से काटिक ऑप्टिकल प्रिंटर पाक पठाऊलु से आणिक देवे तापर फाइनल को जाऊला एवं से वी आर फाइनलाइजिंग इट एंड सेंडिंग इट टू डीआई जो अपग्रेड हो र फुटेज काम करूँ तार ट्रांसकोडिंग हो जो नेक्स्ट लेवल को आसी जाइए ट्रांसकोडिंग इज बेसिकली आम रेफर करूँ रैंगलिंग टाक जे र फुटेज टाक एडिट वर्दी करने डाउनग्रेड करा हुए एबे कैमरा टू क्लाउड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आसला जो आम रैंगलिंग करवा दरकार नहीं आम डायरेक्टली प्रॉक्सी पाइबू क्लाउड कैमरा रू क्लाउड को गला क्लाउड रू विल ब्रिंग इट टू द एडिट टेबल आगु गोटे जगार एडिटिंग स्टूडियो रे आम काम करूँ एवं आप घरे बसिक काम करें फ्रेम आईओ हैज मेड इट मच इजियर ये जो पेंडेमिक है से लोक दे एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज स्टूडियो जाई पार नथिले जीवा कर्फ्यू हो गला ऑलमोस्ट एणु दिस टेक्नोलॉजी हेल्प एट दैट टाइम गोटे सेंटर जगार हमर माने ये फुटेज अच्छी तार प्रॉक्सी प्रोजेक्ट गुड़ाक प्रॉक्सी फाइल गुड़ाक हमको अवेलेबल हम थ्रू क्लाउड वर्क देयर नॉट वन पर्सन मी एज एन एडिटर आई एम वर्किंग ऑन दैट another person Rakesh sir as sound records he can be working on the same project music will be working on the same project and Foley all these have become possible because of technological advancement yes sir ओडिया सिनेमा किंतु बहुत भल दिग आछि मु भाबुची मु सेइटा ही आपन को पाखु को आस्तली जे सिनेमाटोग्राफी क्षेत्र रे आपण ई डेवलपमेंट को केमते देखछन स्पेसिफिकली टू हॉलीवुड इंडस्ट्री सब फिल्म देखिया सुजोग पाइनी किंतु दुईटा फिल्म एग्जांपल देबी गोटे हला से डॉक्टर दमन दमन आ गोटे फिल्म प्रतीक्षा नेशनल अवार्ड हाँ एबे पाइछि से फिल्म संपूर्ण देखि पारनी किंतु मु जहाँ देखी जेतिक देखी बहुत सैटिस्फैक्टरी और बहुत उच्च कोटर काम हो प्रतीक्षार एडिटिंग तो बहुत भल हो जहाँ मुझे जाने जी जाने आ दमन पूरा सिनेमा थिएटर देखी बहुत बढ़िया फिल्म आ से दुईटा जाक फिल्म बोधे आम इंस्टीट्यूट पिला कंग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया दमन करछंती देवी प्रसाद लिंका से प्रकार फिल्म कले निश्चय ओडिया सिनेमार स्थिति बहुत भल आसिबो निहाती वेल बहुत किछि अछि जोटा आमे सार मानकठू सिखिबू जानिबू जो पिला माने हमर बा जो स्टूडेंट्स माने अछंती से माने मध्य जानिबा दरकार बट वी हैव
short period of time to discuss. Jadi kichi questions achi sir mananko pai, then it's open for the students if they want to ask any question. Anyone? Mic. Good afternoon, sir. Myself, Suresh Kumar Gole. Basically, I am from Hyderabad, but I am working past 5 years in Birla Global University as a faculty. Yes, sir. My question is, all the panel members, the thing is, the technology is developing like anything, from A to B editing to now generative AI editing. So, film is completely affair of the director. So, the director is the author, and under the direction of the director's commands, the editor will do the editing. But it is slowly going far from the human intervention in the film. So because AI is doing the editing, I think when AI is doing everything, and who have to enjoy the film? The creative is the human beings, creative idea, it has to come out from the brain, and it has to, just like a painting. These days we are enjoying the artificial painting and AI generative painting. But I think cinema is going far from the human beings. What do you say, sir? Probably. I'll answer you. Thank you, sir. If you become your audience, first audience, nothing is going to change. Yes. If you are making for someone else, it's different. But you are the first audience of your film. Okay, so you do what you feel right. No, sir, just a minute. The thing is, recent Telugu films, Bahubali and what is called Triple R. So I think the technology did the whole thing compared with the old movies. So we are looking at the technological grandeur rather than the human, camera work and etc. That was my primary. I'll come to that. I can take that, Prashant. Okay. I teach also. Apart from being a professional, I teach also. And you might say that I'm old school. The AI will mix your film brilliantly for the immersive sound. Will it feel the same which my fingers are feeling when I'm mixing the film? Yes or no? No. If the answer is no, AI is there to help you. Don't be a slave of AI. Make AI the slave. Tell him what to do. ChatGPT, Prashant sir will show you. They give you wrong answers. Don't. So you need to understand your craft. And otherwise, you are trying to make the jinn your boss. कि boss, तू आजा मेरे ऊपर मेरे सर पे कथकली कर. Will you allow? Don't. Have you seen a recent movie called 12th Fail? Yes, sir. Watched. It has all the human angles. Yeah, that's what I said. Yeah. Because we are appreciating the grandeur of this non-human interventions. That's why. See, I'll come to that again. AI will help you doing it. जो wrangling कथा मु कहूतली, you give the instructions and it will do it in few minutes or maybe in 1 hour. Humanly, which was not possible. For days, we were doing the syncing and sorting, syncing, and then assembly. So it happens instantly. After that, it's my mind which will give the instruction to the AI. And whatever I will give the instruction, AI will follow that only. It cannot go beyond that. So my instructions has to be very clear, firstly. Secondly, AI will not vary from that, so I'll have to bring in that human angle or the emotion that we're talking about. I'll come to one particular example from a film which I edited,
Saptapadi. Traditionally, a lot of fast cutting we did, and the hero is throwing the chair, it's hitting on the door, and then there is a sound which is going. He goes out, then 3-4 cuts we took for him to reach to the car, and then he drives. 7.1. Then we realized the cutting is not helping telling the, or projecting the emotion. So we took out all the cuts, took the throwing of the chair and the car straight on the road, and the sound overlaps, and the sound of throwing of the chair, that goes to the entire theater. And it gets mixed with the car driving sound. So that AI will not be able to give you. Thank you very much, sir. Good morning, sir. I'm Jyotirmay Mishra, student of Journalism and Mass Communication from BJP Autonomous College. My question is to Rakesh Ranjan, sir. That, sir, you were talking about emotions and stories in the movies. And right now, we can see that monologues are in trend. And we can relate and we can feel emotions in monologues nowadays more than that of exchange of dialogues between two characters. So what can be the reason for that? And where is the way the stories are leading to? But now, because now there's many movies out there in which there are more than 2 or 3 frames of stories that the audience they themselves get confused in looking for. See, I started the whole conversation with scripting. And from text, audio-visual transition, again, when it comes back to the audience, it comes with all the emotions and the feelings, and the text is deciphered. You need to keep in mind one thing. Who is your audience? What you're talking, your generation will relate with that. Right? Probably my generation will not relate with that. So how do you bridge this gap? Now, this is the art of masters who will bridge this gap so that your interest is alive and it satisfies me as well creatively, right? So that's a balance. And that's what I was telling you, the AI will not help you. It has to be you taking a call. Do I answer your question completely or partially? Sir, you told about generation gap. Sir, I would prefer DDLJ over Satyaprem Ki Katha. Satyaprem Ki Katha is recently released. DDLJ was released when even my parents were not married. So I would prefer that over this. So what can be for, so what, how is that like, I can like that but not this? No, see, the films, they work on very different planes. DDLJ probably is a example जो कि it has run across generations, you know. Even my mother liked DDLJ. So the honesty of the filmmaker is there. Have you watched Rishida and Bimal Roy's film? Can you name anyone? Anand, have you watched? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How do you like the death sequence of Mr. Rajesh Khanna? So it was pathetic. I cried even in that. Okay. How many elements of cinema were there? Gimmicks? No, they went. One shot, Mr. Bachchan enters, shot director holds, start, da, 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 da. तुझे मरने नहीं दूंगा. And see the tape run out. मैं तुझे जाने, ha, 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 ha. Tape, symbolic. How simple it is. Gimmick नहीं है, बिल्कुल. And it touches and you cried. You tell me, your generation cried. I also cried. But if you try to take your audience for granted, कि boss मैं जो भी bullshit करूँगा, it will work, you are doomed. Don't take the audience for granted. They are literate bunch of people. They have come to either get entertained, you make a David Dhawan film, or you make film which probably Shaji Karun and people in Kerala, they do, in Bengal, they do, in Odisha, Munna Bhai and Nirod Bhai, or Janu Barua. So either you work with the sensibility with these directors,
transcends the age barrier. But David की फिल्म कौन देखेगा यार? एक ही ग्रुप है जो देखेगा उसकी फिल्म. And I take the name because he's my classmate. He'll not mind कि मैंने उसका नाम ऐसे ले लिया, है ना? So this is a thing which you'll have to understand, and this will come with experience. What is working, what is not working. See, every director will tell you he knows the pulse of the trade. All big commercial directors. What is the pulse of the trade? Ask this question. So, sir, is this the sole responsibility of the captain of the ship, the director? No, I don't mean to say that, never. It's a very democratic process. Script writer, director, actors, costumes, characterizations, mannerism, cinematography, lighting, production design, sound, editing, everyone is responsible. Thank you, sir. You Thank- answer my question. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much. So, ଭାବୁଛି ଆମର ଏଇ ସେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜିର ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସମାନ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଡିଂ फिल्म मेकर्स माने आज आम गहण अच्छा से हुए तो बहुत हेल्पफुल हम आई विश फॉर दैट नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डायरेक्टर BPFTIO श्री देवाशीष घोषाल सर टू कम ऑन स्टेज एंड फेलिसिटेट आवर डिग्निटरीज. Thank you, sir. Thank you so much for being with us today to discuss many aspects of filmmaking which can help our students to grow more and to make films in such a manner that will take this industry more further. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you all for being wonderful listeners. Otherwise, अभी के जनरेशन में आई एम यूज्ड टू टेकिंग क्लासेस फॉर 180 and 140 किड्स. वो पीछे वाले रो में सब अपने सेल फोन पे रहते हैं. सेल फोन रे बिजी थांती से माने. So the best rule is keep your cell phones here in the class. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So now we'll have a short break for 10 minutes, and I request all of you to please come back within that time, because in the next session we are going to discuss a very important aspect of filmmaking, which is budget. So I request all of you, after this short break of 10 minutes, we'll get back to the next session.
Hello. I request all of you who are outside of this auditorium, please take your seats so that we will start the next session. Okay. While assembling, I request my dear friend to play the film on BPFTIO, please. Okay. In the Year 1998. A history is made, a dream becomes true. Situated on the bank of the river Mahanadi near Jobra, Biju Patnaik Film and Television Institute of Odisha, popularly known as BPFTIO, was established in 1998. The intention was to meet the emerging demand of well-trained and skilled professionals in the field of film and television production. Started with only one course in cinematography, the institute made steady progress. Soon it became a diploma course with 3 main subjects: cinematography, sound and TV engineering, and film and video editing. Education isn't just a job, it's a passion for us. Our goal is to create true professionals that will inspire generations to come. Through a well-designed curriculum and modern teaching methods, the students are provided with adequate theoretical and practical classes. Workshops are also conducted regularly. In addition to learning the technical and aesthetic principles of filmmaking, students also study classic films screened in our state-of-the-art auditorium. They regularly participate in film festivals, seminars, and other skill development programs. We are proud of our alumni who took the glory of the institute to further heights. They are visible all over the country. Placements of our students are very high. From 2021, it became a 4-year degree course of BPUT under the Skill Development Program of Odisha. The extra funds provided by Government of Odisha has helped the institute to acquire latest high-end equipment. Our faculty includes award-winning working professionals who generously pass on their academic knowledge. The professors and teachers with their industry and academic experiences make this institute one of the finest film schools in the country. We are proud to be a part of the Odisha's
entertainment industry. Films made by RX students are successful, regularly receiving several awards. With the latest infrastructure along with industrial internship combined with a qualified, dedicated and tech-savvy team of teachers, the students are ready to join the industry. The state government has recently allocated 8 acres of land in a picturesque location surrounded by greenery at Ramdaspur near Trishulia, Cuttack. With over 25 years, BPFTIO continues to inspire and support individuals on their aspiration for a career in film and television. Though our road to success is full of challenges, the Institute will continue to climb the ladder of success in years to come. The corridors of the Institute ring with cheer and joy as we prepare for its Silver Jubilee celebration. With the support of our chairman and director, the staff and students are excited to make this celebration a memorable one. So, join us, be part of our grand celebration. What a commendable and glorious journey we have, ladies and gentlemen. So now, moving towards our next session, and before that I'd like to announce that we are having an exhibition in this campus where we can see many developmental and technical equipments related to film editing, sound and filmmaking, camera. So all of you can go and watch there. It's open till 6 p.m. in the evening. Thank you. So to make any film, budget is one of the most important aspects without which we can't make films nowadays especially. But nowadays we are listening a terminology, low budget filmmaking. Can we make films in low budgets? And if so, how can we make films in a better way with this squeezed budget? To discuss, I would like to request Shri Ranjan Satpathy, Creative Head, Tarang Cine Production, who is widely recognized as one of the most esteemed creative professionals in Odisha. Distinguished by an impressive portfolio of work, he is a prominent addition to the roster of the most accomplished creative directors, boasting numerous accolades and awards. I request him to come on stage. And to join with him today, we have an Indian filmmaker born from Manipur, whose debut feature film brought home National Film Award for Best Film on Environment Conservation, Loktak Railimbi, Lady of the Lake. He believes that movies are like windows to the world. Cinema allows us to visualize the world across time and space. Everyone, please welcome Havam Pavan Kumar on stage. Hello. Let's say good afternoon, and Good afternoon. let's try for a very informal discussion, and but let's make it very interactive. We think that we don't need an official moderator to do it. Assuming the subject is all about how to think of a low budget filmmaking, a low budget film.
before we discuss and you ask, let me give 4-5 pointers. If you people would have seen Pushkara recently, I must say that this is the best example how to think of a low-budget film. Can I see how many people who have seen that movie? Can raise your hands, please? Pushkara. Have you heard about Pushkara? Yeah. So it is an adaptation from a Odia novel, and we thought of doing this movie during COVID only, and it is purely located in the ambience of Puri, the heritage ambience we all know, and the character is very much relatable in that ambience, called Pushkara, how a boy from Jagatsinghpur district came with his father, and he struggled a lot, he lost his love finally, and how he adapted that typical profession, Pushkara. So, if I'm not wrong, we have met this budget 27 lakhs, the whole, more or less. And the film is directed by this institute's finest DOP, Chintu Mahapatra. This was his debut as a filmmaker. Sorry, mistakenly. Subhranshu Das, since we all call him Chintu, so Sabyadanko bhai Chintu Mahapatra sang relate hai ki that Mahapatra came. Sorry, forgive me. And it was his debut as a director, and he did it very well. Probably it has been screened in outside Odisha. It was well received in Bangalore, Bombay, Chennai, Hyderabad. All NROs sitting over there, it got well appreciated. Since I am in production, I must say, we covered a rupees of 1 crore rupees gross out of that movie. So, a budget of 27 lakhs could earn a rupees of 1 crore. I think it could be a small example, but a very bright and valid example how a low budget film can work in theatre. It is very important what to say. What to say need to be followed by how to say. Karna kya hai? If we are decided that this is something we need to communicate, this is something we need to convey, this is my central theme of my movie, this is something I want to take to my audience, if I am very much sure about it, then the budget follows. We can't think of a budget first and a subject next. I must say today, when a film is made with an iPhone 14, what kind of lens you are using is not important. What kind of impact you are getting from the screen for audience is more important. If it is that, and sitting on a theater, if you are being hooked, and that is arresting your senses as an audience, then you are done. And the secret of making a low budget film, since we completed more or less 75 projects, big and small, through Tarang Cine production. Your script, your cast, and if your idea is little organic, new, you are working on a premise which has never been told, is very new, then you are done. You are somewhere else. Either you place your product for streaming or you place your product for theater. It doesn't make any difference. Finally, you are expecting an engagement on your product, engagement of your content. So that is all about the thing. And when we do small budget film, then always we think there is a tiger we need to kill and there is one bullet left in our revolver. Then we are more conscious how to recheck your revolver again and again. It could be your script, it could be your locations, it could be your resources. We'll discuss step by step, taking your questions. And finally, I think the people who know edit and audio,
We both are those who play a very prominent role in nowadays filmmaking. It could be either in streaming in or in OTT or in theatre. Then no one can stop you to be a filmmaker. That is all about today. So I must ask you, sir, how do you think this is the right parameter to think of a low-budget film, according to you? Well, first and foremost, I would like to congratulate everyone here on this completion of 25 years of this beautiful institute. This is my first time here, and it's a beautiful campus. I congratulate everyone. And also, I would like to thank the chairman and the director for making me a part of this beautiful and memorable journey. I think I was planning something else, but I think it's also good that it's more of an interactive session. So I would like to start by showing two clips, maybe from my two films. ahumlak kauraga matumin na tokre ahum mahik tokpaka ichi duna boy an hai adu matam ta ina icha siloire hai basi ei wakhanda dum phawri听说的了，西门大那个这里阿里个烧个就不开呢，阿里个烧那个他的婆那大的菜糠苗，就个那啥子，大家开呢，个从这里个快最好，这呢快最爱那个阿个嘛个他这个，安你里个安我这个天那是不好修从这个，哦。The first one, Nine Hills, One Valley, was my second feature film, and this Lady of the Lake was my first feature film. I think here we are mostly talking about fiction feature films. I have been doing documentaries for the last 15-16 years, and in 2016 I did my first feature film, which is called Lady of the Lake,
which was screened at Berlin and Busan. Well, to talk about low-budget filmmaking, I made these two films without any money. I mean, I started both the films without any money. Because I think if you want to do something in life, you can always do that. That's what my whole, that gives me driving all the time. And I have been like making films for the last 23 years. And I have successfully done it. I mean, I'm able to survive. I mean, I'm continuously making films. So basically, I have some kind of 10 commandments for low budget filmmaking. And so if you really want to make a film, forget about documentaries or fiction. If you really want to think about a film, I think you need to be film educated. And everyone knows that cinema is a minimalistic medium, and I think it starts from there. So that way you guys are privileged in a way that you're in a film school and you know how to, play things cinematically. And I think that is one thing which you should use very, in a very effective way when you're doing low budget filmmaking or so-called independent cinema. I mean, it's not just about low budget, it's also about to do with independent cinema, because there's no support for independent cinema in this country. Even all these OTT platforms or all these channels, whatever, they came with a big bang, but no, I mean, forget that when you are thinking of doing an independent cinema, forget that people are going to support you. So you need to know this medium very well, and you should also know that it's a technical driven art form. So, but then we are lucky that because of the coming of digital technology, things have become really easy. I mean, now everybody is a filmmaker. I mean, yeah, but then it's difficult to make a good film. But it's good that we have access to the medium now. Everybody can make a film in Manipur. At one time, after the coming of the digital technology, we were making 300 movies in a year. But then, since the quality was not good, now it has come down to 10 or 20 films. So to start with, I think you should know the medium very well. And also, I think you should write your own script. And it's not just because it's a low budget film. Low budget also it helps in your budgeting, because if you're writing for yourself, you don't have to pay people. So I think you should, but it's also good that as a filmmaker, you write your own scripts. You write your own stories. So I think that you should write your own scripts, and you should choose subjects which are very close to you. So what happens is, if you choose subjects which are very close to you, when you're doing a fiction, what happens is, you save a lot of money in recce. You save money on the sets. You can use real locations, and even actors. You can use actors from your own community. When you're doing films which are close to you, you can always have non-actors, who is from the community. A lot of people are actually doing that. I did that in my first feature film. I did that in a different way because I've been doing documentaries for a long time. So what my idea was to shoot a fiction like a documentary, the way I have been doing documentary for a long time. So that was very different. But I think it also helps for others when you have a story from your own community, and your community, the people from your community are acting. But I'm not sure whether your main lead should be a non-actor. It depends on you. But you can always approach the actors. There are a lot of people who want to do different things. And I have seen Adil Hussain doing Northeast films, and a film from Meghalaya in Khasi language doing free. If you want someone like that, you can always approach them. It's not that everybody will do everything for money. So I think you should start with your own script,
You should write your own script. You should always, look for your resources around you, meaning you have your friends. You can always ask them to help you. So I made my first feature film along with my classmates from SRFTI. So all of them came to help me, and I figure out something that a lot of people are actually working in the industry, but they're also fed up with the same kind of monotonous kind of films they are doing. So they also want to do something different. So that way you can always approach your friend circle. And even while choosing a technician, maybe your friend might be having a camera, so maybe he might be able to bring in a camera also. That's how it. You can always use your resources to do your film. You can always have your classmates as an editor. But I think you should never compromise with sound. The digital cameras nowadays, you can, all the cameras are very good. But the problem with sound is, if the sound is good, the film is gone. So I think you should always have a proper sound equipment and a professional doing it. I mean, you have friends from the film school, but you should be always very careful about your sound. And always try to work with a small crew. I made my first feature film with I think 5 members. We were only one cameraman, I myself, my sound recordist. Then there was one assistant of sound who used to also do the cooking for us and everything. So it was like 4 or 5 people, and one was handling production. So I think my whole approach to low budget filmmaking is a bit different from yours, because I don't really care whether people are watching my films or not. I'm a very independent kind of filmmaker. So I really make films which I really want to make. I mean, and also, it's not that I don't keep audience in my the marketing in mind, because I also want the return of my film so that I can make my next film. But I believe that there is an audience for all kind of films. So it's just that the problem in India is that we don't have the right people to take our film, distributors or sales agent to do that, to take our films to the people who will buy the films. So it's always a challenge. But then you can, if you want, you can really make your films, you can shoot your film, and always after shooting the film, you can go for all the labs. I mean, I'm just quickly saying things. You can always apply for work in progress lab. You can always apply for editing labs. Even script writing, when you start from the script writing stage, you can go for script writing labs. If your script gets selected, you might get grants to write your film. So there are different ways of going about independent cinema or so-called low-budget film. There are very different ways. Even after editing your film, you can always edit. Nowadays, you can always edit your film in a laptop or whatever PC you have at home. So you can send it for post-production labs where, like at Film Bazaar in NFDC, Film Bazaar Market, there is a work-in-progress lab where, if your film gets selected and if it is among those 5, chances of getting a DI award is also very high. Or also, if you make it to those 5 films, work-in-progress, chances of other people getting involved in the project is also very high. So there are very different ways. I think we should talk about it in in a different maybe a class or something later on. So roughly these are the ways of doing it. And I also did follow the same pattern with my first feature film. It was in work in progress lab in Film Bazaar and FDC, from where it was picked up. And from there, someone showed the film and liked the film so much that he gave the DI for free. And I did the DI at Cherry Picks in Kolkata. So the owner was very much happy with the film that he gave it for free. And then from there, the film was picked up by Busan and then later on in Berlin. So that is kind of roughly what I have gone through, yeah. So I must say,
If you're involving your own family and communities as an actors, you don't need to feed them or give them remuneration. Momo, dahi vada, chowmein ho jayega to. It's okay. but then what I have learned from this 15 years of career in documentary filmmaking, money is very important. It's not that it's not that you don't pay everyone. It's good if you can pay even 100 rupees to them. Because everybody, whenever, people are fed up with digital cameras nowadays. Whenever, it's not just about feature film. It's also about news or, documentaries. Whenever you go to any place with a camera, people think that you are earning money. And I how I did the film in the lake, I asked them how much they earn in a day. So that way I used the boatmen and the boat and the people. I gave them minimum, whatever, like suppose they used to earn 500 rupees in a day. So I told them I want to, make this film, but I can't pay you much. So I can pay you this much amount. But so money is one thing I think you should be very clear from the very beginning. But as he said, a lot of people might work for free in the film also. But then it's always good to be very clear from the beginning. Otherwise, you will end up having a lot of problems during the shoot. And I think you should not have problem while doing the production of a film. Let me give a very beautiful example. Recently it happened. We have made a movie called Pade Akaso. It's yet to release. It's a biopic on Dr. Shruti Mahapatra. And Sushant Mani as a director is doing it, and we just completed the last schedule of that movie. If you know Dr. Shruti Mahapatra, the lady who has lost 75% of her body got paralyzed. And now she is an icon. She is doing a lot of things in her life. And when we went through her life journey, there are 10, 12 instances we were driven that we should make a movie on her. And then we started doing the bullet points, how to make this movie, because it should not look like a boring biopic, because she is a living legend and many things we can't do in the name of fiction. Since it's a biopic and she is very sensitive and seems she is somebody. Then after many rounds of discussions, then we landed with tentative narratives. Then I wanted the father character, because in her life, her father played a very large character, because he was a doctor by profession, and he stood by Shruti on each and every walk of her life, and what Shruti is Shruti today because of her father. Then we thought that actually one administrative officer, and in 1980s, 90s, the way he would have handled his daughter in so-called trauma, then we should cast somebody in Mumbai. Then with that script, personally I approached 3-4 good actors, like Cecil Sharma and others kind of things. Let me confess here, the character was played by Rajesh JS, the father character of Shruti Mahapatra, and he didn't take any remuneration. This is how a nice script, a good script, can motivate a highly paid actor to work without payment. So this is a very exceptional example. This can't be a parameter that we should follow. The moral is, if something you want to say, very genuine, very virgin, very organic, fresh, pehli bar, pratham thara, and you are very clear on that, you are going to convey this thing. And in the context of 2002-04, when we all are over-communicated, with lots of information, lots of communication, YouTube khol do, millions of videos are there, lots of streamings are there. It is very difficult to create a position for yourself in the mind of an audience. और आपका काम में वो बातें होना चाहिए. Script has to be kadak, चाहे कुछ भी करो. While doing this script, you think of your trailer. Never think of the promotional aspect once you are done with your movie. No. First you decide what you want to convey, how you want to market it. आप इसको कैसे market करना चाहते हैं, कोई भी. Don't be afraid of with 300 crores movie bracket.
matlab the kids who are studying over here and dreaming to be a filmmaker don't feel biased by 400, 300 crores, 100 crores movies are working in box office. Not like that. We are blessed in an era where alternative exhibition platform is available. Movie is just not meant for theater today. There are many nice content which is available in streaming platforms and people are consuming it. People are consuming a content on the basis of video on demand. उनको अच्छा लगा, they are consuming it. अच्छा लगना बहुत जरूरी है. It should excite someone. Secondly, try to think of a script or an idea which has never been told. You are telling first time. That imagination you have. To do a low budget film, I have customized my thoughts in such a way. Let's trust on 3I. We all could have inspired by a single event or a single inspiration, but the way we imagine are very different. That is what we are. That is what you are. But both of things can never be visualized unless it is got implemented well. So I for inspiration and I for imagination and I for implementation. Then जैसे sir ने कहा, you can take your own community, you can take your own available resources. When we had no money, we used to travel here and there, asking a doctor to facilitate a hospital for shoot. ये होता रहता है. When you know the people around you will try it, but you should know what to do. The craft which we learn from here is how to do. It could be editing, it could be sound, it could everything. It's a craft we need to learn in our lifetime being a filmmaker. But something which is you are and you will identify that thing that is what you want to do. So focus on what to do. क्या करना है, कैसे करना है, मदद भी मिल जाएगा. Like the film labs are available, film bazaar is available, NNPs are available, crowdfunding also is now playing a very major role for a film making. Those who are running scarce of money or scarce of funds, वो problem नहीं है. But करना है क्या है, वो बहुत ज़रूरी है. छोटा हो सकता है, it could be a small idea. There are many notable, remarkable, short length movies available in YouTube and anywhere else you can see. More budgets are not concerned, but it is clicked. So, innovation has nothing to do with a big budget calculation. Innovation is something, the idea is being conceived by you and you want to communicate to your audience and be audience friendly. Keep yourself at audience and think of, क्या उनको interest लग रहा है ये? Are they being hooked by my narratives? Is it essential that I am getting attraction? अगर ठीक है, तो ठीक है. And today, the most difficult thing is people, suppose we are reading a book, we can't do something else. Suppose we are watching a theater, we can't do something else. But in mobiles, when the content is available nowadays, so people are being distracted from here and there. So the level of concentration is being reduced day by day. So when you consider the level of concentration is being reduced, then your content has to be compelling enough. Then the whole focus, na हमें करना है. Redo it, revisit your script 10 times, 15 times, 20 times. Talk on it, argue on it, and first reject yourself. Then come to your resources, then come to your cast, then do edit yourself. आप खुद editor बन जाओ. You can do a better edit. Every filmmaker is a better editor because he knows what to say. What are those portions need to be edited out. And if you are skilled with audio and video, then you are a complete filmmaker, I think so. So to take this discussion forward, should we make a bit interactive? I just want to add something before we go open. I think it should be more interactive than this thing. I just want to add that, since you guys are in the film school and you're going to start, start planning for your first film, I think one thing you should do is you should have your script ready. This is the time to write your own script. Because, I was also told by my teacher to write your script before you leave the institute. So, but then I didn't do it. So I faced a lot of problems, because I spend more time on writing. When you go out of this institute, if you already have the script, you can
you can always go to the producer, or you can always apply to the labs. There are a lot of labs nowadays. If you're doing your first film, particularly, you should be very careful when doing your first and second film. This is, you should always keep this in mind. People are going to watch you. All the film festivals, all the people around the world, they are looking for fresh talents, and there is always a place for young filmmakers in all the film festivals. Suppose in Busan, the main competition is for first and second feature films, and in Rotterdam there is Bright Cinema section. Then in almost all the film festivals in the world, so these first two films are very important, and you should always give your best. And I think the best way to start is to start writing script from the film school itself, and then even if you have done the script, I think you should always try to take the film to a script lab. You should always apply for a script writing lab, so that it's not just about getting money to develop your fund. It's also about doing publicity for your film. Suppose if your film gets selected, script gets selected for Hubert Ball Fund or NFDC script lab, then people already in the industry know that these people make already this project is there, and they will start looking at your project. So that is, I think that is one way of starting your film. And then there are always lab at different stages for first and second time filmmaker, and I think you should follow this pattern, so that and also all these labs comes with mentoring, with experienced filmmakers and editors doing mentoring, giving mentoring to the projects. Normally, when I do my documentaries, what I do is I'm an alumni of SRFTI. So what I do is I always go back to SRFTI guest house, take my laptop or iMac and go there and edit my film. And when the rough cut is done, I show it to all my teachers one by one from every department. And then I decide, don't get confused with that, but then you take all the, you are not always right. So you can use these resources. What I mean to say is these are also the way to use the resources. There are very different, thousands of ways to go about it. I'm just giving one example. So even till today, whenever I do a film, I enjoy going back. It's not going back to SRFTI, staying in the guest house, having my own laptop or iMac, and projecting it through the LCD screen in our guest house, and editing it and watching it all with all my teachers one by one, and getting their feedback. And that has always helped me. And and luckily my films also have been liked by people. I think it's also partly because of that. So I think there are thousands of ways to make independent cinema / low budget film. There are a lot of ways, and I think it's just as he said, my friend said, you should have the will and the will to do it. Actually, you should have the will to do it. And lastly, what I want to say is, if at all I have to care about audience, I was thinking that when will I make a film for audience? I think maybe if I'm making a children film, I might think about the audience. But whenever I do a film, I make it for myself. And when I'm happy, I think I can. There are thousands of other people with whom I can also connect. And it's just that I think SRFTI has also started producing courses. And so now there are a lot of trained producers and distributors. Things are slowly coming up in India also. So don't worry. I think you should always go out and make your own kind of films. I think we should now leave it to them. Any questions? Couple of questions we can take if anyone.
Either none of you want to do a film with low cost, or, or you have plenty of money. We have a Yeah, question. please. Good afternoon, sir. I'm Jyotirmay Mishra. My question is that what are the basic resources that can be available to us at least amount and cost that are required for making a movie? Like just, for example, I'm a student of journalism and mass communication. I don't have that much idea about the filmmaking and all. But right now, in case suppose I'm planning to make a movie, as sir said, with my friends and the surrounding, then what are the basic resources and liabilities that I require for making a movie at least cost? Let me take this question. आपका मोबाइल कौन सा है? कौन सा कंपनी का? Samsung. सैमसंग क्या है? It's a very old model, J8. अच्छा. इसमें फोटोग्राफी वीडियो अच्छा आता है? Quite, yeah. Okay. Quite okay. So it is enough for you for photography, right? That's with you. Keep your friends along and target your family. Many aspirant actors are there. Those who are not actors till the day, so they will be with you. Just feed them proper lunch and dinner. That's all. Don't pay them remuneration. But first decide what to say. आपका script क्या है? If you have a script and don't complete a script in a repeat that आज मुझे script लिखना है, today I will complete the script and day after tomorrow I'm going for a shoot. No, not at all. Give your enough time on script what you want to say and understand why you are going to say. And also target your character, what the character wants to achieve. This is very, very important. If the character, if I am not being communicated what the character is going to achieve, then I may not achieve. Basic ho gaya, then suit it with proper rough dialogues. If you want to make a prototype project with you, you are a mass comm student, you are not a filmmaking student, fine. I am also a mass comm student. So it's not like that actually. So in the era of communication, we need to tell a story. He who tells a story, he is a filmmaker, right? Then sounds के बारे में ज़्यादा सोचो. It's very important today. If you have a very unorganized sound, चाहे वो small filmmaker हो या बड़ा filmmaker हो, no one is going to achieve. ठीक है? Then you approach we kind of people for the post production. If you don't have those kind of facility with you, you need the minimum kind of things. ठीक है? You'll get edit suit, you'll get a proper mixing, then see on your edit table, आप जो बोलना चाहते थे, क्या वही आपने shoot किए हैं? Maybe after a couple of days you will find out it is nonsense. You may reject it and go for reshoot. This is a fast process. Resources बाद में. Then actually you grow yourself as a storyteller. First grow yourself as a storyteller before you think of a filmmaker. When you think of that, yes, just my friend told he is a student of BPFTIO, still actually, abhi bhi when he's doing and editing something, he wants his teachers to see it on a first look. This is great. Okay. And there are a number of models available in YouTube now. How to start a story, how to narrate a story, how to wind up a story. Okay. Gradually, you will wind up somewhere else. Some difficulties you face, come to our production house, Tarang Senior Production. We will facilitate you. So what are the conditions that the production house require in the movie? Means what will they, so in case suppose I make a film, a short film, and I go and present the production house, then what are the things that will the production house look for in a movie? I didn't get what you're saying. You have already finished the film? No, sir. I'm just asking that, like, suppose in case a movie is being presented to a production house, so what are the basic criteria for the selection of the movie by the production house? What will they look for in a movie? I don't know what he's saying. Okay. Maybe he has a script. You have a script?
No, sir, not right now. With Now me. you are a student. Yes, sir. You want to start a production house of your own? No, sir. She Acha, wants you to think approach a what What kind of script? Yeah, what are the criteria that your production house will look for in my movie that it will be acceptable? Every production house is equipped with certain infrastructures. They see what kind of investment the investment is they're going to make on a project. And first of things they will say that is it feasible, viable? If it will be produced with X budget, are they going to get back this money from theatre or from other means of platforms? There is no such, every idea is a good idea. ऐसा कुछ नहीं होता. Any idea is a good idea. It is how you are going to say, how you are going to narrate, how you are going to implement. ठीक है. अब जवान मूवी का अगर मैं वन लाइन आपको पूछूं, आप क्या बताओगे? What is that log line of जवान मूवी? चलो मैं आपको पूछता हूं. गांधी मूवी, have you seen? Yes, sir. What is the log line of Gandhi movie? Nationalism and patriotism? No. I'll say It's 2 words. just one line. Have you seen Sole? Yes, sir. What is the log line of Sole? The friendship between, so the friendship, Anyone can say what is the log line of Sole from filmmaking? Revenge. Anyone? मुझे पूछोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा, एक ठाकुर ने 2 गुंडों को उठा लिया आपने रिवेंज पूरा करने के लिए. This is a better log line, what I understand. So when I want to convey or communicate that film, had it been I be a filmmaker, मैं उसी को stress करता. If it could be Gandhi, then I would have thought of the journey of an ordinary man to being an extraordinary. ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେବାର ଯାତ୍ରା. This is all about Gandhi. ठीक है. If you want to take a script to any production house, it depends what the script is all about. Is it something to pitch for a festival? Is it something to do for a streaming? Is it something for a theatre business? Then your essence of the script, the central theme of your script will decide how much money the production house is going to invest. But of course, your script has to be interesting. It has to be a nice story. It has to be a nice beginning. The character needs to be very unique. Blah, 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 blah. Whatever kind of things. Any idea, any story is always a nice story. I'll just add something. I think what we are reaching is we should know how to write a proposal. You know, this is why I was saying that nowadays you need to learn filmmaking. You know, so you need to know how to write a proposal, documentary proposal, short film proposal, or feature film proposal, and you should also train yourself to pitch in front of people. So this is how the world works nowadays. So you need to know how to write a good proposal for a documentary, how to write, so things like log lines, synopsis, treatment of a film. The treatment in a documentary is different from a treatment in a feature film. So all these things, and also you need to put it down in a proper, if you're doing a fiction film, you need to put it down into a proper script writing format. There are a lot of softwares who does that. And so, you need to know all this before approaching a producer. So if you don't do that, they will think that you don't know filmmaking. I mean, a lot of things are involved in writing a proposal. You need to have an audiovisual presentation, even if it is a short fiction. So, these things, you need to go, either you need to go to a lab to learn this, or go to, so in India, there are 2 places where you can, 3 places where you can actually learn documentary proposal writing. One is in Dokij in Kolkata. There is another one happening, Dokustan is a new concept. PSBT used to do that. As you're a mass communication student, I'm giving more emphasis on non-fiction filmmaking. And there are other also small places where documenters, where they do all this. So you need to learn how to write a proposal first. And not just making films, because
even I had a lot of problem initially while approaching people, because normally we people, I think, I come from such a background that we don't talk much. So then suddenly I realized while I was in SRFTI that I need to talk. I mean, until unless you talk, how are you going to communicate with people? How will people know you, And until unless you write a good proposal, how is someone going to trust in you, and that also professionally. At this age of digital technology and AI and all this stuff, I think you need to be very, I don't know, film educated. You can't just say like probably when people were making celluloid films, when a film, low budget film from Manipur used to come to the national awards, ठीक है यार ये लोग बहुत कम बजट में फिल्म बनाते हैं, ठीक है ये लोग मतलब certain circumstances में फिल्म बनाते हैं, इसको अवार्ड दे देते हैं, ये था. लेकिन अभी के at this time with digital technology you can't afford to do that, no. Sub image, everything is so clear. ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो low budget ये वो, इसका भी बात नहीं है. But that's why I was saying that sound is something which you can't compromise. Camera is something मतलब वो 2K HD you will get it anywhere. मतलब बहुत सारा कैमरा में मिल जाएगा, इमेज अच्छा भी आएगा, लेकिन साउंड ऐसा चीज़ है कि आप कभी compromise ही नहीं कर सकते. So I think I'm just going out context, but मेरे को लगता है कि proposal writing is very important, and as a documentary, I think as a mass communication student, I think that is also very important to know how to write a good non-feature proposal. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. So now I would like to request Chairman, sir, BPFTIO, Shri Sanjay Patnaik, to come on stage and felicitate our panelist. And thank you, our panelist, for a beautiful session. Thank you so much. So please, you can come forward. Thank you so much, all of you. Thank you, sir. So after this beautiful session, now it's time for a lunch break. I request all of you to please have your lunch, because this is not end here. We have more discussions, and we will be having our role models from BPFTIO to have the next session. So I request all of you to take your lunch, and after 30 minutes, we'll start once again. Thank you.
ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଛି। ପାଦ ମା ଏକ ଅକ୍ଷରବାଚୀ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆସେ ମମତା।
I request all of you to settle down. And now we are moving forward to our next session, a discussion with the BPFTIO role models. And in this, we will be having with us 1, 2, 3 in 2008, Atithi Tum Kab Chaoge in 2010, Son of Sardar 2012, Guest in London 2017. Not only these, the list is very long. And also, he has worked in television, a writer, director, filmmaker, all in one. Everyone, please welcome Shri Ashwini Vidsendhir with us today. I welcome him on stage, please. And along with him, I request Shri Chandrasekhar Ratha, a comprehensive professional with a proactive attitude, capable of thinking in and out of the box, generating new design solutions and ideas which can best reflect on screen. Along with him, I invite Shri Devi Prasad Linka, who is a very talented and passionate independent filmmaker. His filmmaking journey began at BPFTIO Film Institute in 2001, and he has worked with many renowned production houses. I don't have to say much about him. If I say one name of his film, that is Daman. Ladies and gentlemen, please welcome him. Along with them, I request Shri Manas Behera, who is 2001 batch BPFTIO alumni, who is a location sound recordist presently working in Z Sarthak show, and Shri Rasmi Ranjan Das, who is studio owner and an entrepreneur, who is acoustic designer and a 2003 batch alumni of BPFTIO Film and Television Institute of Odisha. Hello. Thank you. Please. So जोश में है साहब आज ओडिया रे मु बेसी कथा ही परिबिनी जेहेतु आमर सार अच्छे अश्विन धीर, तो आज हम लोग अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। जितना कोशिश कर सकते हैं आप हमारे साथ इंटरेक्ट करिएगा। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का तो आपने मिल लिया, बट मैं आपको देता हूँ। जब हम लोग बॉम्बे गए 98-99 की बात, ऑफिस करके एक सीरियल आ रहा था, दैट वाज ए वेरी हिट सीरियल रिटन बाय सर। देन लापतागंज प्रोड्यूस्ड बाय सर, डायरेक्टेड बाय सर। देन अभी एक 1500 से 1800 एपिसोड तक एक सीरियल चल रही थी सब टीवी में सर, वो सीरियल चिड़ियाघर। देन हर शक पे उल्लू बैठा है, बहुत सारे ऐसे सीरियल सर किए। फिर अपनी फिल्म की जर्नी में आपने सभी फिल्मों का नाम सुने होंगे, अतिथि तुम कब जाओगे, देन सन ऑफ सरदार। अभी सर की एक और बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है 1-1.5 महीने के अंदर, हिसाब बराबर विथ आर माधवन। तो सर बीइंग ए सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉट सीनियर मोस्ट, मेरे ऊपर भी एक बैच था। 98 से पास होने के बाद मैं बॉम्बे गया। तो सर ये दास्तान चंद्रशेखर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर ये BPFTIO जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने काफ़ी कोशिश करके पैन इंडिया में अपना एक नाम रखा हुआ है। बहुत जगह पे, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, आउट ऑफ इंडिया हो, BPFTIO के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो एक रीजनल स्टेट में एक इंस्टीट्यूट है जो कि पैन इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता अपना स्थान एक गहरी जगह पे बनाने जा रही है, आप उसके लिए और क्या ऐसा कुछ आइडिया देंगे ताकि हमारे BPFTIO स्टूडेंट्स को आगे जाने की एक हिम्मत मिलेगी और उनको एक मौका मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि यार बॉम्बे, दिल्ली, बाहर माँ बाप को छोड़ के, क्योंकि उड़ीसा स्टेट के सारे बच्चे जो होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं सर। हम लोग अपने एक परिवार के साथ हमेशा रहते हैं,
जब हम लोग एक फिल्म लाइन के लिए आते हैं तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि फिल्म लाइन में आने के लिए पहले लड़कों को भी अलाउ नहीं करते थे कि कौन से ऐसे लाइन में जा रहे हो। कैन यू ऑल पीपल हियर मी? आप सब सुन सकते हैं मुझे? आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इन हिंदी बोथ, राइट? सो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग? प्लीज रेज योर हैंड्स। बस इतने लोग। एवरीबडी मस्ट बी हैविंग वन स्टोरी ऑफ देयर ओन। सबके पास अपना एक कहानी है कि नहीं, मुझे बताओ। हाथ उठाइए ना, फिर ऐसे नहीं यार, कम ऑन। ठीक है, वो कहानी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते आप लोग? आपके पास प्लेटफॉर्म है सर। See, I tell you very frankly, why I'm saying this, when I came inside, I saw a lot of pictures outside. You know how many great people Odisha have produced in filmmaking? I don't know. Why? Because we don't respect our celebrities. हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे यही नहीं मालूम दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमारी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो लोग, जैसे बाहर इतने सारे आपके एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के फोटो लगे। मैं अभी सर के साथ आ रहा था, मैं देख रहा था, हमने कहा सो मेनी ग्रेट पीपल हैव वर्कड इन ओडिशा सिनेमा, बट हार्डली पीपल नो। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन आज व्हेन वी आर इन दिस जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, हमारे काम से ज़्यादा हम बोलते हैं। पहले क्या था, लोगों का काम बोलता था, राइट? अभी हम बहुत बोलते हैं, है ना? लेकिन वो अपना काम करके गए ना, तो उनको उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, पहली चीज़। वाई एम सेड दिस बिकॉज आई थिंक वो डिजर्व करता है मामला वहाँ पे। दूसरी चीज़, कंजर्वेटिव फैमिली कुछ नहीं होती। आई ऑल्सो केम फ्रॉम वेरी स्मॉल फैमिली फ्रॉम कानपुर। आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई। I was born and brought up in Kanpur, Uttar Pradesh, very small town. Like you must have people have heard from Uttar Pradesh, Kanpur. I also belong to very middle class family. My father was in bank, like any of your parents might be. So I had few stories to tell. मेरे पास अपनी कुछ कहानियाँ थी जो मैं कहना चाहता था। हम जब दोस्त बैठते हैं ना, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, हम सब बैठते थे तो हम गपशप करते थे बहुत सारे, राइट? यू मस्ट बी हैविंग ना, बहुत सारा गप मारते होगे ना आप लोग बैठ के? सब करते कि नहीं करते हैं? क्या ऐसे बैठे हो, सर बैठे तो बोलेगा नहीं कोई क्या? कम ऑन, गप करते हो कि नहीं करते हो? स्टोरी सुनाते हो? यस। तो ये वोकल हो उसके लिए तो हम स्टोरी सुनाते थे। वी यूज्ड टू वॉच मूवीज और क्लास में आके स्टोरीज सुनाते थे मूवी की विद साउंड इफेक्ट्स। यहाँ पे साउंड इंजीनियर्स भी होंगे, बताएंगे कड़बक कड़बक टुक 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 ऐसे आवाज़ निकालते थे मुंह से। You know, that was the passion जब बच्चे थे, हम लोग छोटे थे ना। So that storytelling, filmmaking is nothing but storytelling. There is nothing like you can learn camera, you can learn sound engineering, you can learn everything. These are the technical parts. But unless and until you people have your own story to tell, small story, कोई भी story हो, because creativity के बिना तो sound engineering भी नहीं होती है, creativity के बिना तो cinematography भी नहीं होती है। And everybody is creative because everybody dreams. सब सपने देखते हैं ना, सबको कभी ना कभी तो सपना आता होगा, किसी का कोई कहानी का, किसी गर्लफ्रेंड का, किसी के बॉयफ्रेंड का सपना कुछ तो आता होगा ना, इसमें क्या छुपाने की बात है? तो वो सपने ही तो हैं कहानी। प्लीज बी वोकल अबाउट योर ड्रीम्स, स्टार्ट राइटिंग। नोबडी कैन स्टॉप यू बिकॉज स्टोरीज जितनी है ना, जितनी स्मॉल टाउन्स में स्टोरीज हैं वो कहीं नहीं है। बॉम्बे में स्टोरीज नहीं है। स्टोरीज हम लोगों की हैं, आप लोगों की हैं जो बैठे हैं ना यहाँ पे, आपकी स्टोरीज हैं। आई कैन सी दीज गर्ल्स सिटिंग इन फ्रंट, दीज बॉयज सिटिंग इन देयर, दे एवरीबडी हैज अ स्टोरी। व्हेन यू कम टू मुंबई ना, हमारी स्टोरी खत्म हो गई है, हमारे पास स्टोरी नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन हाई राइज अपार्टमेंट, यू कम डाउन एंड सिट इन कार एंड कम, एसी गाड़ी में बैठ के आते हैं तो स्टोरी नहीं मिलती है। बट व्हेन यू वॉक ऑन रोड्स, when you meet people, when you interact people, हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया। वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया, दैट्स फाइन, इट्स गुड, कोई बुरी बात नहीं है। बट हम आपस में इंटरेक्ट करना भूल गए। हाउ मेनी पीपल इंटरेक्ट विद द टीचर्स? हाउ मेनी पीपल इंटरेक्ट अमंग देम? नहीं, यू आर वन ऑफ देम ना। आई वॉन्ट टू सी हम तो टीचर की जान खा जाते थे। वी आर आफ्टर टीचर्स लाइफ। यू नो वॉट, आई वॉज इन 11th आई थिंक।
So I had I just started, I developed a liking towards literature, Hindi literature, because I am from that belt. So, and गज़लें जो पोइट्री होती है उसका मुझे शौक हो गया. तो I heard one poem जिसका मुझे आंसर, जिसका मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता था, बिकॉज वेरी टिपिकल उर्दू में थी. तो दैट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी एक्चुअली. You know, there was one, I studied in through PCM, Physics, Chemistry, Maths. तो हमारे एक टीचर थे, मिस्टर सर्वेश प्रताप सिंह, SP सिंह, सुनते होंगे तो पता होगा उनको. So he was हिस्ट्री के टीचर थे वो. उस पोइट्री का मीनिंग जानने के लिए मैं उनके पास रोज जाता था, मुझे रोज भगा देते थे. बिकॉज ही यूज्ड टू से कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, पोइट्री क्या करोगे. लेकिन जब तक मैंने वो मीनिंग नहीं समझ लिया, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ा, और आज तक वो मतलब याद है मुझे. सो आप अपने टीचर को छोड़िए मत. मेरा कहने का मतलब है, इंटरेक्शन से बड़ी कोई चीज नहीं है, बहुत जरूरी है. सो जैसा इन्होंने बोला ना, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, हर व्यक्ति के पास इतनी, आज देखिए जितनी स्टोरीज है मुंबई शहर में ना, जो जिन्होंने अचीव किया है, दे आर ऑल स्मॉल टाउन पीपल, ऑल स्मॉल टाउन पीपल. आप किसी का नाम लीजिए, अनुराग कश्यप, आप सब फैन होंगे, देखते होंगे फिल्में उनकी, राइट. स्मॉल बिहार से, बनारस से आके वो आके आ गया. एनीबडी, यू नेम एनी डायरेक्टर और एनी एक्टर, आई स्पेशली आई विल से टेक्नीशियन, डायरेक्टर, एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो सारे के सारे स्मॉल. शाहरुख खान, आप यू मस्ट बी नोइंग, एवरीबडी नोज शाहरुख खान. दिल्ली के छोटे से, दिल्ली से आया, दिल्ली छोटा शहर नहीं है, बट दिल्ली से बॉम्बे में आके अपने आप को खड़ा करना इज अ बिग थिंग, आसान नहीं है बॉस. सो आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यू वांट टू, यही सुनना था आपको, क्या करना है स्टूडेंट्स को. बस मैं यही सुनना चाहता था सर से कि भाई आप अपनी हिम्मत मत हारो और लगे रहो. जो भी 4 साल का कोर्स है उसको करो. बॉम्बे ज़्यादा दूर नहीं है या दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, उड़ीसा तो अपना घर है. कोर्स का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं है बॉस, मैं इसे कोर्स नहीं, सॉरी, बट ये आप पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग FTI जाते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन मुझे जो लगता है कि जितना आप आपस में सीख सकते हैं, बातों से सीख सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, सिनेमा देख के सीख सकते हैं. क्योंकि एक पॉइंट पे जब आप फील्ड में जाएंगे ना, तो शायद ये जो आपको सिलेबस या सिनेमा पढ़ाया गया है, शायद आपको याद भी नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वॉर में जाते हैं, वहाँ पे तो जितनी टेक्निकलिटी सिखाते हैं ना एक सोल्जर को, वो सब भूल जाता है फिर तो, क्योंकि सामने वाला फाउल खेल रहा है. तो आप अगर रूल बुक से जाओगे तो आप नहीं खेल पाओगे ना. आपको तो बोला गया कि नहीं वॉर में ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, नहीं वहाँ जाके तो पता लगा किसी ने उल्टा ही खेल दिया. So if you start playing with the rule book, then you are gone. So मेरा कहने का मतलब है, ये आपके लिए बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. ये 4 साल अगर आपने अच्छे से बिताए, तो इसका मतलब है आपके अंदर मंशा है. यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट विल टू डू दैट. हम जब पढ़ते हैं, हमारा जो एजुकेशन, हम कॉलेज में होते हैं, उससे हमें कोई डिग्री मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है. लेकिन इफ़ यू स्टडी ऑल दोज 3 or 4 years इन कॉलेज, वो हमें वो देता है मादा कि हमें लगता है कि ये हम कर सकते हैं. हिम्मत, परसेंटेज डजंट मैटर, 90%, 70 ऑल फेक, ये को मतलब नहीं है. और हमारे उधर ना कानपुर, यूपी, बिहार में परसेंटेज ऐसे मिल जाते हैं, कितने चाहिए, 90 चाहिए, 95 ऐसे मिल जाते हैं, बहुत सारे सब दुकानों पे मिलते हैं उधर. व्हाट आई एम सेइंग, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज योर करेज, योर विल, पैशन. ये 2-3 चीजें हैं बॉस. अपने माँ बाप को देखो, अपने माँ बाप, सी एवरी, आप हीरो स्क्रीन पे मत देखिए, हीरो आपके घर में है, हीरो आपके घर में है. हम जो बाहर स्क्रीन पे हीरो देखते हैं वो हीरो नहीं है, ठीक है, वो स्टार है, वो अलग अलग दुनिया है, मैं उनको. लेकिन हमारे हर घर में एक अपनी कहानी है. आपके पापा की कहानी होगी, आपकी मम्मा की कहानी होगी, आपके भाई की कहानी होगी, आपके नेबर की कहानी है. दैट्स अ स्टोरीज, वही है, और कोई स्टोरी थोड़ी होती है. जितनी स्टोरीज हमारे बॉलीवुड में या किसी उड़िया सिनेमा में होंगी, असमी सिनेमा में होंगी, भोजपुरी सिनेमा में होंगी, किसी भी सिनेमा, वो स्टोरीज आपको अगर देखोगे. अभी हम, मैं एक कहीं डाइवर्ट ना कर लूँ, अभी हम अंदर बात कर रहे थे, हमने कहा एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी, एवेटार 2, सबने देखी होगी, है ना.
आपने एक बचपन में कहानी हमने तो पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, एक आदमी जंगल में जा रहा है एंड व्हाट ही सीज देयर इज अ शेर है उधर, और वो दिखता डर जाता है कि शेर है और ये शेर तो मुझे खा जाएगा, तो डर के छुपता है। लेकिन वो क्या रियलाइज करता है कि शेर तो बहुत डरा हुआ बैठा है, बहुत दुखी है। तो उसने क्या देखा कि उसके पैर में ना एक बहुत बड़ा कांटा है, जंगल में उसको कांटा लग गया पैर में, सो ही कांट वॉक, सो ही इज इन पेन। तो इसको थोड़ा डर इसका दूर हुआ, ही वेंट नियर टू दैट शेर, उसके पास जाके उसके पैर से उसने उसका कांटा निकाला, गॉट इट ना, कांटा निकाला एंड शेर को बहुत रिलीफ फील हुआ एंड शेर वहाँ से चला गया। तो ही सेड थैंक गॉड आई डिड समथिंग गुड, शेर ने भी मुझे नहीं काटा। ये बात खत्म हो जाती है। कुछ साल बाद, 1-1.5 साल बाद, ये आदमी, पुरानी बात है ना, राजा महाराजा तब होते, किंगडम हुआ करते थे ना, तो ये आदमी एक दिन इसने से कुछ गलती हो गई तो पहले राजा ने पकड़ लिया और क्या बोलते हैं कि इसको हाथी के पैर के नीचे कुचल दो और शेर के आगे डाल दो। तो इसको भूखे शेर के आगे डाल दिया गया। ये कहानी सबने सुनी होगी। और जब वो शेर आया खाने तो ये तो डर गया कि खा जाएगा, लेकिन शेर इंस्टेड ऑफ ईटिंग दैट मैन, वो आया और उसको पैर उसको लिक करने लगा। देन ही रियलाइज ये वो शेर है जिसका उसने कांटा निकाला था। ठीक है, तो ये नहीं पहचाना, शेर ने पहचान लिया। करेक्ट, यही कहानी हमने सब सुनी है। अभी एवाटार 2 सेम कहानी है। अगर एवाटार 2 याद है किसी को, वो बच्चे को पानी में फेंक देते हैं, वहां उसे ब्लू व्हेल मिलती है, ब्लू व्हेल के फिन में एक नेल छुपा लगा होता है, करेक्ट है, वो नेल निकाल देता है। ठीक है, क्लाइमैक्स में वही ब्लू व्हेल उसकी हेल्प करती है। ये कौन सी कहानी है बॉस? यही कहानी है ना, ये उड़ीसा की कहानी है, ये यूपी की कहानी है। सो आई एम सेइंग स्टोरी सेम होती है, ये मैं कहना चाह रहा था बॉस। सो देखो, आपको लगेगा यार ये तो बहुत कमाल कहानी है, हॉलीवुड में कही, हमारे, अरे नहीं बाबा, ये हमारे मम्मी पापा ने कही, ये हर जगह की कहानी है। सो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि कहानी, देखिए सबसे हम बड़े हो गए, बहुत सारे सीनियर लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, हम मूवीज देखते हैं, हमें कहानियां कौन सी याद होती हैं मालूम है? वो जो हम अपने बचपन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सरल होती हैं, सिंपल होती हैं और एक उसका इम्पैक्ट होता है। अभी आपसे पूछूं कोई रीसेंट फिल्म, आपने कोई भी फिल्म देखी होगी, आप उसकी कहानी बता नहीं पाओगे मुझे, बिकॉज आप बताओगे तो बहुत भूल जाओगे। बट अगर आपसे कोई एक मैं जातक कथा या अमरचित कथा ऐसी कोई कहानी सोचूंगा, आप बता दोगे, बिकॉज वो सिंपल होती है। तो स्टोरी टेलिंग जितना सिंपल हो, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, हम भी गलतियां करते हैं बहुत सारी, बट सिंपल, सिंप्लिसिटी। आप अमेजोन पे ऑर्डर नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना? आप कपड़े ऑर्डर कर सकते हो, अपने शूज ऑर्डर कर सकते हो, अपने मेकअप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी ऑर्डर नहीं कर सकते आप, इसको अब्जॉर्ब कर सकते हो। सो दैट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। मैं तो कहता हूँ, अपने बच्चों से भी बोलता हूँ, जब मैंने आके यहाँ से थोड़ा बहुत कर लिया तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज मेरे भी 2 ही किडनी हैं, 1 दिल है, 2 आंखें। अगर कम भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है एनीबडी कैन डू इट, बट ओनली वन थिंग, यू हैव टू हैव दैट पैशन फॉर वॉट एवर यू डू। कुछ भी करो जीवन में, कुछ भी करो, पैशन के साथ करो। अगर नहीं भी करना है ना, तो भी पैशन के साथ करो कि नहीं करना है बट पैशन लाइफ में मत छोड़ो बॉस। दैट्स द ओनली थिंग दैट विल मूव, आपको आगे लेके जाएगा। बाकी अदरवाइज क्या है, हम जाते हैं इधर, बैठते हैं, गप मारते हैं, हम इश्क करते हैं, हम प्यार करते हैं, वो भी पैशन से करते हैं। सब कुछ पैशन से करो, स्टडीज पैशन से करो, कुछ भी, बट दैट्स ऑल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप यहां पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा सर, इफ आई एम अलाउड टू से दिस। हमें लगता है, जब इन्होंने मुझे, चंद्रा ने बताया मुझे इस सब के बारे में, मुझे नहीं जानकारी थी सर, आई एम सॉरी, मुझे ये मेरी कमी है, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम सब बहुत ही अनपढ़ लोग हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। और हम व्हेन यू कम टू बॉलीवुड, जो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसी को हम सेंटर मान लेते हैं ना फिल्म मेकिंग का, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हर जगह एक सेंटर है। असम में, उड़िया में, इवन मराठी में, बहुत जगह बहुत अच्छा सिनेमा बनता है, बहुत अच्छा सिनेमा बनता है।
लेकिन हमने ना 2-3 तरह के सिनेमास को सिनेमा मान लिया है, एक हिंदी सिनेमा को मान लिया है, या तेलुगु है, तमिल है, इन्हीं को हमने सोच लिया, बट ये हमारा इंडिया को डिफाइन करता नहीं, इंडिया को डिफाइन नहीं करता। इंडिया को उड़िया का सिनेमा डिफाइन भी करेगा, इंडिया को जानू बरुआ का सिनेमा भी डिफाइन करता है, इंडिया को बहुत सारे लोग हैं उनका सिनेमा डिफाइन करता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम अपनी बात, मैं लाइफ में अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ पीछे रह गया, क्योंकि मैंने खुद को आगे नहीं किया। आप तभी पीछे रह जाएंगे जब आप खुद को आगे नहीं करेंगे। आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और लोगों को बताना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं बताएंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई जानेगा। मैं अभी आ रहा था, मैंने कहा उड़ीसा इज अ वेरी पीसफुल स्टेट। ये ऐसा बच्चा है जो पूरी उड़ीसा, अगर मैं सब स्टेट्स को बच्चा बोलूं, देखो होता है ना कि खूब सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, एक स्टूडेंट बहुत शोर मचाता है, दिन भर शोर मचाता है, नंबर आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो पॉपुलर रहता है ना, कि यार पास भी होता है, लेकिन यार बहुत, एक होता है चुपचाप रहता है और अपना काम करके निकल जाता है। ये उड़ीसा है। व्हाई आई एम सेइंग, उड़ीसा ना ही पॉलिटिकली शोर मचाता है, ठीक है, बाकी स्टेट बहुत पॉलिटिकली शोर मचाते हैं तो लाइमलाइट में रहते हैं, और अदरवाइज भी गॉड ब्लेस उड़ीसा की बहुत पीसफुल है, टचवुड। सो मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए हम जब उड़ीसा की बात आती है तो पॉलिटिकल नक्शे पे भी डिस्कस नहीं करते हैं उसको। आई एम सॉरी बट दिस इज इट। हम डिस्कस इसको करते हैं बिहार, यूपी, एक्स वाई जी। उड़ीसा शरीफ लोग होते हैं ना, जो शरीफ लोगों की चर्चा नहीं होती है, शरीफ लोगों की चर्चा नहीं होती है। ये उड़ीसा वैसे ही बच्चा है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, शरीफ स्टूडेंट होता है, उसको ना वो अच्छा है, क्यूट है, प्यारा है, बैठो बैठो। लेकिन नॉटी बच्चे जो होते हैं ना, वो उसको टीचर ही बोलता है नॉटी है, लेकिन उसको कहने का मतलब है हम अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा, अब ये फंक्शन आप कर रहे हैं, आप इसको कहीं तो होना चाहिए था, ट्विटर पे होना चाहिए था, इतना प्लेटफॉर्म है वहाँ कि हमारा सिल्वर जुबली है ना फंक्शन। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, इसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना आप लोगों का फर्ज है, स्टूडेंट्स का फर्ज है। आप यंगस्टर्स है, आपका इंस्टीट्यूट है बॉस, आप नहीं लोगे तो कौन लेके आएगा? आप लोगों को लाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, लेट पीपल नो अबाउट दिस। आप नहीं जब करोगे, लोगों के पास ना बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बहुत कुछ चल रहा है, उनके पास इसके लिए टाइम नहीं है सर। व्हाट आई एम सेइंग, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। सो प्लीज, दैट्स मेरा ये कहने का मतलब है। इतनी मेहनत करते हैं, यू नेवर नो कौन कहाँ से क्या निकलता है। यहाँ से हो सकता है बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन जाएं, टेक्नीशियंस निकलें, लेकिन थोड़ा सा ना आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो थैंक यू वेरी मच अश्विन सर। अब मैं, मतलब सर ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सो दैट एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। अभी मैं देवी प्रसाद लेंका, एमिनेंट डायरेक्टर ऑफ उड़ीसा, दमन फिल्म सबको पता है, पैन इंडिया भी इसकी फिल्म ने तहलका मचाई थी, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इसकी तारीफ की थी। तो मैं देवी से एक चीज़ बतला चाहूँगा कि देवी, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस सेम इंस्टीट्यूट BPFTIO वेयर वी स्टडीड ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स BPFTIO के तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो ऐसा क्या एक मंत्र देगा देवी प्रसाद कि सारे लोग अगले 4 साल जब यहाँ से पास करके जाए तो एक एक दमन बनाए। गुड आफ्टरनून। 25 वर्ष जो आज आम बनाऊे सिल्वर जुबली, ता देहर मोर 21 वर्ष हो गला, कारण 2001 मु जॉइन करी एठी, से ही पछरे बसली। तो सार जो कथा होते मुझे देखुली से पछ पिलाटा मु बसची सेठी, मत से फील होता। हाँ हाँ, ओडिया रे कहबी, ओडिया रे दमन केते जण देखछन्ती? ओके, सार जो कथा कहले डर कथा, मनीषर सबुठ बड़ शत्रु किए? दमन डायलॉग अच्छी, डर। से डरटा को छाड़िया पड़ो। मु 2004-05 जो गली, कम से कम 10-15 वर्ष मु डर ही देखी। आपण मानक समस्त डरेबे,
समस्ते आपण साइट रे जी आज बेस्ट फ्रेंड सी भी डरइबो आपन को तो एकुटिया लड़ीबार अच्छी तो दमन फिल्म सेकेंड गीत तो थिला जे एकला चल रे तो एकुटिया जीवाक पड़ो आउ सेटा आपण केबे भाबंतु नाही जे 4 वर्ष कि 3 वर्ष कोर्स पर मु मोर कैरियर आरंभ करी नो आपण जो दिन ये ना लिखिले से आपण फिल्म लाइन को पलि आसिले तो सेटा भाबिकी चलतु सार जमती कहले आमे डेली किछि ना किछि करि परिबा आपण पाखरे मोबाइल अच्छी किछि भी कंटेंट आसुची कोठु आम पाखकु मु गोटे दिन बसली कहली जो टाइम रे भाबुतली मु तो एडिटिंग रे पास आउट हेली तो भाविली एडिटिंग करिवार नहीं फिल्म डायरेक्शन रे जीवार अछि तो 2002-03 रे मु डिसीजन नहीं थिली जे इंस्टीट्यूट थिला बेले सेकेंड ईयर रे जे मु डायरेक्शन को जीबी तो सेठु जो प्लान कली डायरेक्शन को जीवाई मु खोजिली बाहर किए डायरेक्टर अच्छा क्या पाख मुझे जापरि बिना पैसा रे जाकि ठिया हो पारि तो ठिया हेली एठू पास आउट पर पुणी गोटे फिल्म कली लकीली मु हिमांशु सार को आसिस्ट करी फिल्म कथांतर रे बहुत किसी शिक्षा को मिलला तापर टोपाई सिंदूर दीटोपालुओ बसंत साहू को फिल्म रे कली विष्णु सार अच्छा एवं विष्णु सार बहुत कहीकि मत भितर पुरेले तो से जिन शिखला मुझे भाविली डायरेक्शन को जीवी बोली तो गोटे ऑफर आसला मते झारखंड रू जे प्रथम कोरठा लैंग्वेज रे फिल्म जोटी कि चीफ असिस्टेंट काम तो मत लगे मु असिस्टेंट कली लास्ट असिस्टेंट तापर फास्ट असिस्टेंट तापर चीफ असिस्टेंट तापर नेक्स्ट होची डायरेक्शन एटा मु भाबुतली 2005-06 रे जेतेबेले सेटा करदेली तापर कहा पाखु गली कंटेंट नहीं कि समस्ते कहले तमे करिचो कोन मु कहली मु चीफ असिस्टेंट करची फास्ट असिस्टेंट करची ए जगह करची ना ना तमे फिल्म कोन करचो तो सेठू सबू जहाँ भाभी से सबू पहाड़ थिला मोर भावनार से सब भुजुड़ी गला तापर बॉम्बे पलैली प्रैक्टिस करने को डायरेक्शन रे किंतु सेठी भी सेमती किसी हेलानी पुणी एडिटिंग कली कहीं कहूँ ये स्टोरी जे समय मत नहीं नहीं कि जाऊला मोर इच्छा थिला डायरेक्शन रे बट सेटा हेई पारुनी ता माने आपण लाइफ रे गोटे जिनस चाहूथिबे सेटा हबनी बट आपण वेट करंतु वेट करंतु जदि पैसा दरकार होची सेतिपई किछि काम करंतु बट लक्ष्य सेठी थाउ लक्ष्य जदि विच्युत हो जिवे ताले आपण लाइन छाड़ दे मो सांग बहुत लाइन भी छाड़ी आम इंस्टीट्यूट पिला बहुत लाइन छाड़ देइचंती आ मते भी गोटे टाइम रे एमती समय आसला जोठी मु लाइन छाड़ी देली किंतु लक्ष्य थिला से फिल्मटा करी बोली मु कहली किछि दिन पे ब्रेक नुए किछि पैसा रखे तापर जाय कि मु फिल्म बनै परबी तो ईयर आसीगला 2012 मुझे जाकि बॉम्बे एडिटिंग कली 5-6 वर्ष पुणी फेरिली पुणी हिमांशु गोटे काम था मैटर बंधन से आउ डायरेक्शन को गले ना सार मत जदिव कही डायरेक्शन को जीवाई मत देखार जे सबू जो सबू डिपार्टमेंट रही केमती काम कर कारण पैसा आमको कई देऊ ना समस्ते कहते जे फिल्म कला माने एठी टंका खाई जाउछंती तो सही पार्टा जगिया मु एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हिसाब से जॉइन कली मुझे देखिली जे लिकेज कौटी हो हाँ जना पड़ा लिकेज कौ बाटर हो तो से जिनस शिखिली तापर पुणी लगे जे फिल्म करिया माने इवन एमती भी है मु गोटे शॉप को जाइए मुझे गोटे टीवीसी कर दिंतु माने 2012 कथा कहूँ 5,000 टकर करदेबू से कह 5,000 टका अनु चौधरी फोटो गोटे उठे लगेदेवा डायरेक्शन देवनी गोटे फोटो सुट करदे एमती बहुत जिन शुणा मिलला तो सही टाइम रे भाविलु जे नाई गोटे काम करिया पड़ो मते फिल्म बनेया पड़ो बने भी केमती पैसा तो नहीं तो 2012 रे गोटे चैनल खोलु बहुत पिला जानि नथिबे से जिनस से विषय कहूँ घोस्ट वर्ल्ड टीवी मु आ मो पार्टनर विशाल दिज जाक लागलु भूत खोजारे 12 रे कारण इनकम तो क्या पाखु गले सेमती हो नहीं तो आम बुली बुली कि डेली 50 वीडियो शूट करूँ मुझे आसिक एडिट्रे भूतटे लगेबी ताकू छाड़ू घोस्ट वर्ल्ड टीवी देखिलु व्यूज बढ़ीगला जेहेतु डायलॉग नथिला सेटा वर्ल्ड वाइड चलला वर्ल्ड रे जो सीपीएम व्यवस्था अच्छी यूट्यूब थ्रू जदि यूएस रो व्यूअर देखुची मो पाखु पैसा आसीबो अधिका तो सही हिसाब रे आमे डेली वीडियो बनेलु छाड़िलु सेठी गोटे मार्क अप्सलोन बोली गोटे लोक थिला जे यूट्यूब रे टॉप थिला से टाइम रे घोस्ट रे तो सेठू टार्गेट हला भाई आकु काटिबा जाहले आउ किसी भाविनु आम कौटू ओडिशा रू मो पिला कि इंडिया रू पिला सेगुड़ा जानू गोटे टार्गेट कलु गोटे जिद्दी आसला मन भितर यहाँ बहुत इंपोर्टाट जिद्दी
गोटे भल काम को लेकिन निहाती मन भितर आसवा दरकार न से कम आम पहुँची पारानी से सफलतार सेठू कलु 6 मास काम कलापर मार्क कैप्सूल सब्सक्राइबर ठू आमे बढ़ीगलु माने वर्ल्ड रे नंबर 1 चैनल थिला घोस्ट वर्ल्ड टीवी घोस्ट रे तापरे बहुत पैसा आसला से टाइम रे गोटे फिल्म बनैबार पैसा आसला एबे कहलु हेगला से काम 2-3 वर्ष कर सारू इनकम हैला तापरे B4 बुंदेलखंड बोली गोटे हिंदी फिल्म बनैलु ग्वालियर रे शूट कलु बनैलु ताकू भी अवार्ड मिलिला से फिल्म आनी जिते मुझे देखली से कहली जे यही भाया फिल्म माने टॉप स्टार को कथा कहूँ यही भाया फिल्म ओडिशा रे कहीं होने मु कहली आपण 3 मास रे फिल्म सारुछंती मते B4 बुंदेलखंड बनिया पे 2टा सीजन दरकार थिला मु खरा दिने शूट करची शीत दिने शूट करची से टाइम किए दब एठे तो कहले अच्छा ताले एमती हुए मु कहले हाँ यही भाया ही फिल्म मेकिंग हवा कथा तापर समय क्रमे मु गोटे फिल्म बनी बिजू बाबू केते जण देखछंती वेरी लेस ठीक अच्छे से फिल्म विषय गोटे कथा कहूँ कारण जो मैंने देखी ना से फिल्म विषय कहते सेटा हूँ सबुठु जमती ओडिशार सबुठु फ्लॉप फिल्म बोली बहुत शुणा को मिली जो मैंने देखी ना ओके से फिल्म मो खाली डेट कहूँ फेब्रुआरी 20-25 रे आमे से फिल्म रो शूटिंग सरला मार्च 29 रे फिल्म रिलीज हैला से पुणी बिजू बाबू भलिया फिल्म 2 CR रो फिल्म तो सही टार्गेट कहीं फुलफिल कलु आमे जेहेतु मो इंस्टीट्यूट पिला मु सदाबले इंस्टीट्यूट को बैकग्राउंड रखी थाए कारण जहाँ आज भी है इंस्टीट्यूट पे जदि ये प्रथम पाद दे न था तो से फिल्म कलु जमती मासे 2 मास रे फिल्म शूटिंग करके एठी करचंती जदि बिजू बाबू भलिया फिल्म को करचंती ता माने लोक एठी करूचंती कोन तापर फिल्म रो दूरे गली मुझे जो दिन पर्यंत मो मन पसंद जहाँ मु लिखली जदि न हम ताले करिबे नै तो डॉक्यूमेंट्री लागलु रिसर्च कलु रिसर्च बहुत इंपोर्टेंट तापर दमन जोड़ा देखुचंती हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है पर्यंत तो से गोटे कथा कहूँ आपण मैंने ना जदि सत्य कई छाड़ी जीवेनि कहीं ना आपड़ जेहेतु जॉइन कर तो आपण डिसीजन सेटा डिसीजन चेंज करंतु नहीं जेहेतु फिल्म लाइन रे आछंती ए लाइन रे ना बहुत बढ़िया स्कोप अच्छी जेकोसी लाइन ठारू बहुत बढ़िया स्कोप अच्छी पैसा पछरे गोड़ातुनि पैसा आपण पछरे गोड़ेब ए लाइन रे तो आपण गोटे काम करार अच्छी एबेठू आपण को डेली गोटे काम करार अच्छी ओके आपण आपण सांग स्टोरी शुणु साइड रे स्टोरी देखंतु जदि परिबा किनिया को जाउचंती से कैरेक्टर टी को देखंतु जोटा मु करे जोठी भी जाऊँ मुझे एवं भी ये बस ना ये गोटे स्टोरी चलती मो आगे सिल्वर जुबली स्टोरी आपण मैंने मो कैरेक्टर तो मुझे सेमती ही भावे तो आपण मैंने सेमती स्टोरी देखा आरंभ कर से फास्ट पार्ट सेटा हेले आपणकर सबू डिपार्टमेंटर काम इजी हो तो प्रथम आपण को डायरेक्शन आड़ को जबार अच्छे आपण इमोशन आड़ को जबार अच्छे तो स्टोरी शुणिले ही आपण से जिनस पाइबे तापर साउंड रे कौन मु दे पारिबी कैमरा एंगल कौन रख पारिबी एडिटिंग केमती कर पारिबी या डायरेक्शन कौन कर पारिबी सेटा आपण कर पारिबे तो सार जमती कहले बढ़िया कथा जे देखो आपण हाथ में मोबाइल अच्छी गोटे कंटेंट देखिए सतर जदि आप फिल्म मेकिंग रे रही चाहते गोटे डायरेक्टर हाँपी चाहते मुझे चाहूँगी आज 25 वर्ष पाले नेक्स्ट 25 वर्ष पर जमती आम सबू स्टेट थारू आगे थिबा फिल्म लाइन रे सेटा दायित्व रहा दरकार समस्त तो आपण हाथ में मोबाइल अच्छी शूट करूँ एडिटिंग आप भी आसीगला एडिट करूँ भले 2टा शॉट हो 4टा शॉट हो मो पाखक केन्द्रापड़ा कॉलेज रो जो नुआ ओडिशा प्रोग्राम चलची से किसी फिल्म होता तो मत जूरी रखी फिल्म किसी पठे सी जो भाया फिल्म आनी ना से तो किसी जानना आपण मैंने तो जो जॉइन कर माने फास्ट स्टेप सेट नहीं गले फिल्म करने सी जो भाया फिल्म आनी से फिल्म को देखी हम बढ़िया बनई क्यारेक्टर नहीं कि मेकअप रखिकी 7टा फिल्म आसला मुझे देखिली तामाने आम पिला एठू तो कम से कम 100 टाइम्स बेटर रहा कथा तामाने इंस्टीट्यूट भितर आप एमती फिल्म बन पारे जोटा वर्ल्ड वाइड छाड़ी पारे जी ओस्कार नौ सी कौन पृथ्वी बाहर आसुँच कि बाहर आसुना ना गोटे गोटे टाइम रे मो उपरू देखे माने उपरू को जाइए जी अच्छा पृथ्वी रे ओडिशा एठी आमे ए इंस्टीट्यूट पिला तो आमे कहीं सदा भावुचे सीए कर पारला बोली आमे कहीं नुह तो से मुटा आसवा दरकार जे मु ही करी
बी द चेंज जमती महात्मा गांधी कहते व्हाट यू सी इन द वर्ल्ड ये जिनसटा ही बेसी प्रभाव पकेबा आपण को ऊपर चेष्टा करंतु जमा डरंतु नहीं मु गोटे कथा कहबी जमा डरबेनी आज टू स्टार्ट करंतु आ सकाळु उठिबाटू नहीं कि राति शोया पर्यंत जहाँ आपण करिया को चाहउचंती जो लक्ष्य रे पहुंचा चाहउचंती तारी कथा भाबंतु देखंतु सक्सेस आपण पछरे गोडेबो। थैंक यू। देवी बहुत कथा कहला मतलब मोटो ऑफ हिज स्पीच इज दैट कि जो डर गया वो हार गया, तो डरने का नहीं। एबे मु कहबी आमर आ गोटे पिला रश्मि रश्मि होची मु ता विषय बहुत सुनी से गोटे हूँ अकस्टिक स्टूडियो किंग कह पड़ो एंड सेल्फ एंटरप्रेन्योर जार निजर 3टा स्टूडियो अच्छी एवं से तार 4th स्टूडियो कंस्ट्रक्शन रे अच्छी एवं आमर इन्स्टिट्यूट पिला कि जदि गोटे पिला अकस्टिक किंग बन पार्टी तेल आम साउंड डिपार्टमेंट जी पिला अच्छा से माने भी सम्राट हो पारे, तो डरने का नहीं। तो आई एम जस्ट मूविंग टू आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग रश्मि टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज career aspects and what he can do something for BPFTIO so that BPFTIO students after passing out from sound department can be a self-entrepreneur. Thank Please you. Rashmi. Thank you. Good evening. 2003 रे मु पास हिंदी रे कहि परबी तो हिंदी रे तो मैंने 2003 में यहाँ से जब पास आउट किया तो वो मेरा इंटरेस्ट था कि म्यूज़िक रिकॉर्डिंग करूँ। तो लेकिन मुझे बॉम्बे जाने का मेरा प्लानिंग नहीं था और मैं पहले डिसाइडेड था कि मैं उड़ीसा में ही करूँगा, जो भी करूँगा उड़ीसा में करूँगा। तो ऐसे में मेरा इधर कोई जान पहचान भी ऐसा नहीं था, कोई स्टूडियो है जो भी हो। तो मैंने पहले जब पास आउट हुआ तो अपने जो सर है बाबू सर नित्य रंजन उनको बोला कि सर मुझे कोई म्यूज़िक स्टूडियो में काम करना है। तो बोले तो क्यों यहाँ करेगा, बॉम्बे में तो बहुत स्कोप है, यहाँ तो कुछ नहीं है स्टूडियो, अच्छा ढंग का भी स्टूडियो नहीं है, कहाँ करेगा कैसे करेगा, तेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं सर बस एक स्कोप दीजिए, मैं ट्राई करूँगा, मैं कर सकूँगा। तो ठीक है, इन्होंने टाइम लिया और मुझे एक प्राइवेट स्टूडियो में एंट्री करवा दिया। सार्थक स्टूडियो था वो, जो उस टाइम में मतलब इंडस्ट्री का लीडिंग स्टूडियो था। तो उधर मैंने जब एंट्री किया तो फिर मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ तो थोड़ा उन लोगों का साथ भी मेरे को ज़माने की सपोर्ट भी उतना मिला नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई करके आया है। फिर कुछ लोग बोले क्या जानते कुछ नहीं जानते, क्या जान के आएगा, ऐसा हुआ। तो मैंने एक चीज़ उधर अप्लाई किया, अपना बिहेवियर को सही रखा और अपना फोकस रखा कि मुझे ये सीखना है। तो वहाँ पर जो काम करते थे वो ऐसे कोई स्किल टेक्नीशियन नहीं थे, वो ऐसे कर के टेक्नीशियन है, लेकिन वो सबसे बेस्ट काम करते थे। मैं बता रहा हूँ आपको, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो लोग ऐसे लोग थे जो काम को कर सकते थे, टाइम बाय द टाइम कर सकते थे। आपको उस टाइम में मैं बोल रहा हूँ, मैं जब गया था तो एनालॉग में रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम में। तो स्टूडियो था जैसे हाई एट में होता था, तब एनालॉग टेप खत्म हो गया था, हाई एट में काम चल रहा था। तो उधर सारे स्टूडियो में होते थे, जो अच्छा स्टूडियो है उसके पास 24 ट्रैक का रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव, उसके पास 8 ट्रैक का है। तो क्लाइंट भी उसी हिसाब से काम करते हैं कि मेरा 16 ट्रैक में रिकॉर्डिंग होगा, मेरा उतना बजट है, फिल्म का काम है 24 ट्रैक में होगा। तो मैंने क्या किया है, उधर जो रिकॉर्डिस्ट उधर थे उनके पीछे में खड़ा रहा, कम से कम मैं 6 महीना उनके पीछे चेयर में खड़ा रहा। जो एक छोटा सा रूम था जहाँ पर क्या होता है पूरा लाइव रिकॉर्डिंग होता है उस टाइम में। तो पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, रिदम सेक्शन होता है, कीबोर्ड, ड्रम्स, फ्लूट, सिंगर, एवरीथिंग। तो उधर खड़ा होने को भी जगह नहीं होता है। तो मैं उनके पीछे ऐसे खड़ा रहा, 6 महीने तक ऐसे खड़ा रहा कि कुछ सीखने को मिले। तो उसी टाइम में क्या हुआ, कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी मुलाकात हो गया, सब वैसे फ्रेंडशिप हो गया। तो वो जो इंजीनियर थे वो क्या करते थे, जब रिकॉर्डिंग चलता था तो उस टाइम में 8 गाना होता था एक दिन में। 9 बजे शुरू होता था, रात के 9 बजे तक अपन 8 गाना रिकॉर्डिंग करते थे। बहुत हेवी टैक्स था वो रिकॉर्डिस्ट के लिए। तो उस टाइम में क्या होता था, वो क्या करते थे, जब मैं पीछे खड़ा तो जब एक रिकॉर्डिंग से एक गाने के दूसरा गाने के बीच में कुछ टाइम मिलता था तो वो टाइम में वो नीचे चले जाते और एक मिक्सिंग स्टूडियो उधर कुछ गाना मिक्स कर लेते थे। हाँ, तो ऐसे उनको करना पड़ता था, क्योंकि वो भी मिक्सिंग इंजीनियर है, वो भी रिकॉर्डिंग इंजीनियर है और क्लाइंट को भी देना है।
रिकॉर्डिंग भी करना है और आउटपुट भी देना है। तो मुझे उधर बिठा देते थे कि तुम एक काम करो, उसी टाइम में थोड़ा ऐसा बैलेंसिंग उनको देते रहो, मैं आ जाता हूँ। तो ऐसे मैं बैठता था और देखता था हाइट लगा है, ये लगा है, और उस वो तो अभी तो जैसे अंडो रिड्यू वो सब नहीं था। तो उसी बीच में मैं 15 मिनट मुझे मिलता था बैठ के थोड़ा उसको स्टडी करने का। और मेरे साइड में भी जो बैठे थे, म्यूजिक डायरेक्टर हो या अरेंजर हो, जो भी थे, तो एक दिन ऐसा आया कि वो नीचे चले गए हैं और मेरा अरेंजर जो खड़ा है उधर बैठा है, बोला चलो टेक करो। मैं बोला सर मैं कैसे करूँगा? नहीं आप कर सकते हो, करो, क्या है इसमें। तो प्रफुल्ल बेहरा जी थे, वो उड़िया के एक बहुत फेमस अरेंजर है, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम करो, कर सकते हो। तो मैं बोला कैसे कुछ हो जाए? नहीं नहीं मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो 15 मिनट जब वो ब्रेक मिला तो उसमें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो जब वो इंजीनियर जब आए, अरे क्या तू क्या ख़त्म कर दिया पूरा गाना? कैसे कर दिया? अच्छा अच्छा ठीक है फिर बैठ के तू काम कर। फिर वो क्या किए, उन्होंने अपना 15 मिनट को उन्होंने और 15 मिनट उसमें आधा घंटा ऐड कर दिया कि तू एक काम कर, बैलेंसिंग कर और रिकॉर्डिंग करके फिर मुझे बुला। तो ऐसे जब हुआ तो कुछ क्लाइंट्स भी वो सब देखने लगे। उस टाइम में मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा एज, क्योंकि उस टाइम में मेरा एज सिर्फ 22 ईयर्स था। और 22 ईयर्स में उसमें क्या था, एक लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक फिल्म का रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक ये चल रहा है, तो एक इंजीनियर होना चाहिए, बड़ा इंजीनियर होना चाहिए, उसका बाल पक गए होंगे और वो भी बहुत एक्सपीरियंस होगा, ऐसा होता था इंडस्ट्री में। तो उस टाइम में क्या मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसमें मुझे मेरे जो सपोर्टर थे, जैसे अरेंजर हुआ, उड़ीसा के पूरा म्यूजिशियन, डायरेक्टर, सभी ने मेरा साथ दिया। नहीं ये टैलेंटेड है, ये कुछ कर सकता है, इसको देना चाहिए इसको। तो फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और हर दिन मेरा चैलेंज था कि हर दिन नए नए क्लाइंट आते थे स्टूडियो में। आज कोई आया, कल कोई आया। और बेसिकली हम लोग क्या 2 इंडस्ट्री के काम कर रहे थे। उड़ीसा के काम के साथ अब छत्तीसगढ़ के 99% काम कर रहे थे हम लोग। उनका जो म्यूज़िक वीडियो हो या फिल्म का सॉन्ग हो, जो भी हो। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट करे बिठाया। और मैं बता रहा हूँ आपको, 4 साल कम से कम मैंने एनालॉग में उधर रिकॉर्डिंग किया, टेप में। उसके बाद फिर जब चेंज हुआ, इंडस्ट्री चेंज हुआ, तो उसके बाद आ गया अपना DAW आ गया। तो DAW में फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको रिप्लेस करके DAW में रिकॉर्डिंग करना चालू किया। तो उसका पहला मौका मुझे मिला, क्योंकि मैंने उस पर पढ़ाई किया, उस पर सब रिसर्च किया, सब करके कैसे करेंगे, क्या करेंगे सब। उसी टाइम में वो क्या करने लगे, फिर वो मेरे को बोलने लगे कि यार तू हमको भी थोड़ा सिखा दे, जैसा कर रहे तो हमको भी थोड़ा सिखा दे। तो हम लोगों ने मिलके वैसे स्टार्ट कर दिया, उधर DAW में रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तब एनालॉग टेप वो सब खत्म हो गए। उसके बाद ऐसे चलता रहा। मैं फिर एक ट्रांजिट पीरियड आया, 2010 के आसपास आया। तो पायरेसी की वजह से पूरा इंडस्ट्री ख़त्म हो गया। पायरेसी इतना हुआ कि प्रोड्यूसर को पैसा नहीं मिला और कैसेट भी चलता नहीं है, ये ऐसा हो गया। तो उस टाइम में बहुत सारे स्टूडियो क्लोज हो गए। और मैं भी जहाँ काम करता था, उन्होंने भी वही बोल दिया कि मिलन तुम एक काम करो, तुम बॉम्बे कहीं चले जाओ, इधर तो उतना काम नहीं है अभी, तो ये तो ख़त्म हो रहा है इंडस्ट्री। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अगर रिकॉर्डिंग ही खत्म होगा फिर आगे कैसे? पहले तो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी तो आप म्यूजिक वीडियो बनाएंगे या फिल्म बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो फिर सरेंडर कर लिया उन लोगों ने, उन्होंने भी अपना स्टूडियो क्लोज कर दिया। तो उस टाइम में मैं क्या किया, फिर कुछ लोग मुझे सजेस्ट किया कि नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो पैसा भी ज़रूरी था सर्वाइव के लिए। तो एक ईस्टर्न मीडिया करके एक एंटरटेनमेंट था अपना भुवनेश्वर में, मलय मिश्रा जी उधर थे। तो उन्होंने मुझे तुरंत ही बुला लिया, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत सारा पिक्चर में काम कर चुका था। तो उन्होंने बोला कि यार तू इधर आ जा, और यहाँ तो हम लोग रिकॉर्डिंग अपना अभी चालू कर रहे प्रोडक्शन, तो कर ले रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, मैं उधर जाके 1 महीना पूरा काम किया। उसके बाद उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। हाँ, तो अभी थोड़ा बंद रहेगा, लेकिन मुझे तो उधर निकाल नहीं सकते, मैं तो सैलरी में हूँ। फिर मैं उसके बाद जो 1 महीना मैं बस रोड को ऐसे देखता रहा, गाड़ी गिनता रहा, गाड़ी जा रहा है आ रहा है, और मैं घर जा रहा हूँ आ रहा हूँ। तो उसका तुरंत 1 महीने बाद मैंने पूरा डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी करना ही नहीं है, चाहे फ्रीलांसिंग करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे ये जॉब मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने उधर से निकल गया। फिर कुछ प्राइवेट जो स्टूडियो थे उड़ीसा के, जो
ऐसे पड़े हुए थे, तो उनके पास जाके मैंने उनको कन्विंस करके कि अपन ऐसा करते हैं कि पार्ट टाइम करते हैं काम। जो भी क्लाइंट्स मेरे थे, जो जिन्होंने मेरे को काम दे रहे थे, मैं उधर जाके पार्ट टाइम करके फ्रीलांस इंजीनियर के जैसा काम किया। तो ऐसा चलता रहा। उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आया कि जो आउटपुट मैं जब सार्थक स्टूडियो में कर रहा था, तो सेम आउटपुट मुझे दूसरा स्टूडियोज में नहीं मिला। इंजीनियर सेम है, इक्विपमेंट भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम DAW है, सेम मिक्सर है, से वही माइक्रोफोन है, एवरीथिंग। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं चलो अपना एक स्टूडियो बनाते हैं छोटा सा। फिर मैंने एक डबिंग स्टूडियो उधर चालू किया, जो अपने हिसाब से मैंने एक्रोस्टिक, मैं एक्रोस्टिक इंजीनियर एक्चुअली नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको स्टडी करके एक बनाया कि अपने को जो चाहूँ साउंड से वो मिल जाए। उसके बाद जब लाइव रिकॉर्डिंग का इतना फंडा आज तक भी चलता रहा है, तो उसके बाद मैंने और एक स्टूडियो बनाया जिसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्डिंग के लिए, उसका भी एक्रोस्टिक मैंने खुद बनाया था और स्टूडियो का डिज़ाइन एवरीथिंग किया। और वो स्टूडियो अभी तक भी एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड स्टूडियो है, जहाँ पर मुझे मतलब जो बॉम्बे का जो साउंड था, जैसे अपन एक्रोस्टिक सुनते थे अपने कान में है, उसका आसपास तो अभी तक हम लोग गए नहीं। सडनली कुछ अमाउंट उसमें मिल गया, तो लोगों को वो पसंद आ गया, क्लाइंट को वो पसंद आ गया। और अभी तक मैंने वही 2 इंडस्ट्री के पूरा कंप्लीटली काम में कर रहा हूँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। ऑलमोस्ट एवरी क्लाइंट जो आता है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि अपन यहाँ रिकॉर्डिंग करवाएं। और 2013 में फिर मेरे जब फिल्म में क्या हुआ, फिल्म का भी मिक्सिंग मेरे को मिलने लगा। उसके बाद यार तुम करो, री रिकॉर्डिंग भी करो, तुम तो अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा करते हो सब, ठीक है। फिर मैंने एक 5.1 के लिए पहले एक स्टूडियो बनाया था। जब डिजिटल में कन्वर्ट हो गया इंडस्ट्री, तो 5.1 करने के लिए आसान हो गया, तो एक स्टूडियो बनाया जहाँ पर मैंने चालू किया 5.1 मिक्सिंग करना, रीजनल जो भी फिल्म से जो भी है उस सब का करने लगा। और वो अभी वो सब करने के बाद अभी एक 2023 में हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया कि अपने प्रोफेशनल स्टूडियो बनाते हैं। तो प्रोफेशनल के लिए मैंने वही सोचा कि एक्रोस्टिक में कर लेता हूँ ये सब, बट मुझे कुछ स्किल्ड पर्सन भी चाहिए जिनसे मैं प्रॉपरली कर पाऊँ। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपसे क्या मोटिवेशन ले ये स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? व्हाट यू वांट टू टेल देम कि हाउ दे शुड इंस्पायर देमसेल्फ टू बिकम व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, हाउ दे शुड डू दैट एंड हाउ टू अचीव दैट? देखिए, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा जर्नी में आपको बता रहा था, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो भी अभी जो लड़के जो भी जा रहे हैं फील्ड में, उनको उतना पेशेंस नहीं कि कोई चीज़ सीख सकें। अगर किसी के पास जाते हैं तो उसके पास खड़ा होना चाहिए। पहले आप ऐसा बिहेव करोगे, वो आपको कुछ सिखाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे या जो भी कर पाओगे। इतना अच्छा इन्होंने बात अपना एक्सपीरियंस बताया, जितना मैं समझ रहा था। ये सबकी कहानी है, मेरी भी है, इनकी भी होगी। What he wants to say in nutshell, you should have patience. You should learn from wherever you get. जहाँ से आपको सीखने को मिले उसे सीखना मत भूलिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर? सर राइट, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी सर। कि जहाँ भी कोई हो, क्योंकि गुरु सिर्फ आपके यही नहीं होते हैं जो इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, आपको हर कदम पे एक गुरु मिलेगा। हमारे उधर बोलते हैं और गुरु, तो हमारे यहाँ उधर यूपी बिहार में गुरु बोल देते हैं हर एक। और गुरु का मतलब जिसे हम बोलते हैं यस ब्रो, तो ब्रो मीन्स गुरु है उधर। हम ब्रो से कितना सीखते हैं, वैसे गुरु से सीखते हैं। और गुरु का मतलब जरूरी नहीं जो बुक्स लेके और एकदम शांत बैठा है, नहीं। आपका दोस्त आपका गुरु हो सकता है। सो व्हाट ही इज सेइंग कि आप सीखना मत भूलिए, जो मिले उससे सीखिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर? जी सर। सर अभी हमारे बीच में और एक पैनलिस्ट है। वक्त बहुत कम है, तो हम लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक के लिए। वो 5 मिनट बोलेगा, फिर 2 मिनट में अपने बारे में बोल के, मेरे को सवाल पूछने वाला अगर कोई है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अपने बारे में 2 मिनट बोल के इसको खत्म करेंगे। आई थिंक बच्चों को पूछना चाहिए भाई। हम अपनी बात क्या बोले, आप लोग पूछिए ना यार। एक्चुअली आप लोगों को इंटरेक्शन करना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। शुड कम अप फॉरवर्ड, बोलो मुझे ये जानना है। तो सवाल आपके हैं बॉस। आप लोग मुझे पूछ लेना पहले। मानस अपनी कुछ चीज़ें शेयर करेगा जो कि BPFTIO ने उसको क्या दिया और क्या करने से BPFTIO वाले एक अच्छा साउंड इंजीनियर, अच्छा साउंड बन सकते हैं। तो आई एम जस्ट, मानस को मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ मानस। हेलो, थैंक यू।
तो प्रथम कहबी आज बीपीएफटीआई 25 वर्ष सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करची तो खुशी कथा कहीं ना ये भितर मु जानी 25 वर्ष हो गला मु बीपीएफटीआई रु जाइछि बोली कहीं मुझे फास्ट आज गोटे बढ़िया कथा कहबी जब इंस्टीट्यूट को फास्ट एडमिशन करते से चंद्रा भाई आसते आम क्लास को आम सब चंद्रा भाई को देखापी पूरा गोटे आग्रह जाऊँ जे बम्बे रू आस भाई पास करके आज किंतु पाखे बसी सेटा मोर गर्व मु 1997 आम एडमिशन करूँ 2001 आम पास आउट कलु पास आउट पर गोटे मन भितर बहुत भय थिला मु सब प्रत्येक जिनस राकेश भाई को पचारे आपण राकेश सार जी आम से राकेश भाई डाकुल राकेश भाई आम इंडस्ट्री रे काम करि परिबु तो कहीं ना आमर से यूमेटिक रेकर्डर थिला आम से दूर देखुलु छुईवाई भी आमको सुजोग मिलु नथिला फाइनाल प्रोजेक्ट रे काम करने गोटे थर स्कोप मिले आउ से टाइम रे कौन आमर प्रोजेक्ट टेंशन थाए तो आम प्रोजेक्टा केमती कंप्लीट करूँ से भाव तो ता भितर केमती कौन तो राकेश तू सब कर तू व्यस्त है ना तू जा काम कर मु तो पछरे अच्छी मु प्रथम आरंभ कली से जो बिलई कपाल को शिका छिड़ा भाया ईटीवी गोटे नुआ चैनल आसता है ओडिशा को सेटू लोकेशन रे काम आरंभ कली काम करने भितर गोटे देखिल से आम आटमोस्फियर रे माने ओडिशा रे जति भी काम होता सब साउंड अटेंडेंट माने साउंड करते तो आमको भी से गोटे कौन एमाने करें कौन ना यही टाइप रो तांकर गोटे फिलिंग थिला मु लोकेशन रे काम करी करी तांको यही विश्वास देली आती प्रूव कली जे नहीं आम बीपीएफटीआई पिला ही बेटर काम करूँ कहीं सी भी कंपेयर करते ये भी करुच्ची सी भी करुच्ची बट डिफरेन्सटा कौन आम या मु जन आम नुह मु जन जे तुम पचार सी कौन पर या करें कि मुदेवी कौन प्रोब्लेमटा सी जदि कहते आपन को जो प्रोब्लेम है पचारतु कौन प्रोब्लेम है सी कहीपर प्रोब्लेम है कहे कि मुदेवी कौनटा प्रोब्लेम है आ सल्यूशनटा कौन यहीटा बीपीएफटीआई रु यही कॉन्फिडेंस नहीं जाइए समय क्रमे गोटे एमती समय आसला ये ओडिशा टेलीविजन इंडस्ट्री माने से विश्वासटा देली प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जे ना आम बीपीएफटीआई पिला ही बेटर करूँ से मत भरोसा करके गोटे सीरियल रु 5टा सीरियल भी मो सुपरवाइजन रे करी मु निजे करे मो असिस्टेंट मान को गाइड करके जाइए से लोकेशन रे देखिकी एमती या करिवो तापरे किछि दिन पर मल्टी सेटअप कैमेरा ऑनलाइन सेटअप रे काम कली किछि दिन गला तापरे मु एबे वर्तमान तो जी सार्थक रो गोटे रियलिटी शो डायरेक्ट करची जोटा कि आपण माने देखुते दीदी नंबर 1 ये जो डायरेक्शन रे स्विच ओवर करिवार भी गोटे कहानी अच्छी डायरेक्टर जने मते डायरेक्टर गोटे थर एमती कौन सी मिस्टेक रे कहली मुझे भावीदेली कहीं भूल है मुझे भावीदेली या होदव कहले तुम कहीं भावुच मु डायरेक्टर कहले अच्छा अच्छा ताले खाली डायरेक्टर माने ही भाभी पारे तो मो भीतर गोटे माने चैलेंजिंग रहिला जे ना मु भी किछि करिवि मु भी डायरेक्टर होइकि काम करिवि तापर मु मझिरे भी गैप दे देइथिली 2017 रु 2022 मु लाइन छाड़ी गोटे अलगा सेक्टर रे काम करूली रिटर्न कली रिटर्न कला 2022 रु वर्तमान मोर डायरेक्शन जर्नी चली भगवान आशीर्वाद जहाँ रहिबो चलो। चंद्रा भाई डर के आगे जीत है जमती सार आपने बोला डर को जीतना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये जो 4 बंदे बैठे हैं ना आपके इंस्टीट्यूट के चारों के लिए जोर ताली बजाइए एक पहले तो। मिस्टर रश्मि, मिस्टर देव प्रसाद, मिस्टर माना, चंद्रा जितने हैं ना, बिकॉज यहाँ से निकल के कुछ भी कर लेना, एक इंस्टीट्यूट से निकल के
एक फिल्म बनाना मतलब आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। आप जब निकलेंगे ना, कोई भी अपना काम उस मुकाम पे पहुंच जाना, एक भी बना लेना, वो बहुत बड़ा अचीव। आगे तो खैर अलग बात है, लेकिन अचीवमेंट इन चारों के लिए भाई मैं तो कहता हूँ थैंक, वेरी गुड एंड बहुत बढ़िया। थैंक यू और ये सब, ये इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए कि आप कहाँ, और हम समझते हैं कि अपने ही इंस्टीट्यूट में आके बैठना, अपने ही ये अलग एक इन लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, सर बोले थे डर के आगे जीत है। चंद्रा भाई सेतबले कौ मसीह आपण मुंबई जाइए, कारण आपण जब जाइए सेतबले को डर माने बहुत ही अधिका थी, कारण आम क्या आगे पाऊ नथिले। आपण गला परे तापरे जणे जणे आपण हाथ धरिकी आग को जाइए, पाद रखि तापर काम कर सी आउ क्या नहीं, तो से आपण जो डर को जीति थे आपण बहुत कष्ट थी, मुझे जानीपारे से विषय किसी कहूँ। थैंक यू। ये मैं हिंदी में आंसर दूंगा क्योंकि अश्विनी सर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। 97 जब मैं पास आउट किया फिल्म इंस्टीट्यूट से, अभी जो बीजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट है, प्राउडली फीलिंग दैट आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। 97 25 अगस्त को एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 27 अगस्त को मैं अपने आप को बॉम्बे में पाता हूँ। ड्यूरिंग माई 3 इयर्स करियर 94 से 97 के बीच में मैं 3-4 बार बॉम्बे चला गया। घर में पैसे नहीं होते थे तो महानदी बिहार में एक डॉक्टर रहते थे, उनका लड़का मेरा दोस्त था। लेप्रोसी कोटा में 92 रुपीज़ में टिकट मिलता था, वो टिकट बनाता था। चंद्रशेखर रथ लेप्रोसी पेशेंट बन के बॉम्बे गया है 4 बार, क्योंकि जब 101 कोड आ जाता है टिकट में तो टीटी आपसे पूछने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है 101 कोड मतलब लेप्रोसी पेशेंट है। तो ये स्ट्रगल का दौर मेरा चालू रहा, जाके झोपड़पट्टी में रहना, कभी माँ बाप को ना बताना, ये सब दास्तान चंद्रशेखर बहुत है। अगर बनाने जाएंगे तो 2 दिन 3 दिन का सेशन चलेगा, कभी वर्कशॉप में आके बताऊंगा। बट जो दौर रहा, जो मैंने क्या उस पर मेरे को गर्व है, लेकिन इतना भी गर्व नहीं है कि और कोई कर नहीं सकता करके। किसी ना किसी एक को कभी ना कभी पहले जाके उस मुकाम तक पहुंचना ही पड़ेगा, तभी जाके हाथ बढ़ाएगा तो दूसरे आदमी उसका हाथ पकड़ के आगे जा सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने किया मेरे इंस्टीट्यूट के लिए। 97 अगस्त 27 में बॉम्बे जब रीच किया, जिसके घर में रहना था वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, दैट टाइम मोबाइल वाज नॉट देयर। तो सुधीर पलसानी कैमरामैन है, सुशांत भाई अगर इसके बीच में बैठे होंगे, लुल्लू भाई हमारे, वो भी उसी ट्रेन में थे। तो उन्होंने मुझे लेके सुधीर पलसानी के घर पे रखा, क्योंकि उनकी बीवी बच्चे घर पे नहीं थे। तो बोले तू एक रात तो रह ले, दूसरे दिन तेरा तो हिसाब देख ले कहाँ पे क्या करना है। तो रात को 11 बजे वो बंदे ने फ़ोन उठा लिया। लिटरली आई स्टेड 22 डेज इन आर्य कॉलोनी झोपड़पट्टी, वेयर देयर वाज नो लैट्रिन, नो बाथरूम, क्योंकि जुनून था एक कि कैमरामैन अगर बनना है तो बॉलीवुड में बनना है, और क्यों बनना है। तो वो जुनून, और तब सुरेंद्र सर ने हमको अल्टीमेटली थ्योरी को पूरा पिला ही दिया था अंदर। तो थ्योरी के ऊपर हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, लेकिन जैसे अश्विन सर बोले कि आपको कब बाउंस आ जाएगा, आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे, और पता चला किसी ने गुगली फेंक दिया, यू आर आउट। तो अभी जो आपके गुरु हैं मिस्टर मधुसी मेरे ही गुरु हैं, आपको मैं बताऊं। मतलब हमें वो संस्कार दिया गया है कि हम कहीं पे भी गुरु को देखें तो उनका चरण स्पर्श करें। सर बोलते अरे क्या कर रहा है यार, लेकिन मेरे को सब चीज़ों पे शर्म ही नहीं आती है, क्योंकि हमें संस्कार दिया गया है कि 500 आदमी के बीच में चाहे आप अपने आप को किस भी मुकाम तक पहुंचा लो, लेकिन जिसकी वजह से आप उस मुकाम तक पहुंचे हो उसका चरण स्पर्श करना आपके कर्तव्य हो जाता है। हाँ या ना भाई, कुछ बोलो तो सही, सब लोग खाली ताली मार रहे हो, ये होना चाहिए। तो फिर उसके बाद बॉम्बे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, ऐसा करते करते अभी वी आर 200+ BPFTIO स्टूडेंट्स इन बॉम्बे एंड वर्किंग इन ऑल बिग प्रोडक्शन हाउसेस। मैं आपको बताऊं, चाहे वो फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो यशराज हो, चाहे राजकुमार ईरानी हो, कहीं पे भी हो, हमारे BPFTIO के कैमरामैन काम कर रहे हैं, एडिटर्स काम कर रहे हैं, साउंड डिजाइनिंग में समीर पात्रा इज ए बिग नेम, भवानी इज ए बिग नेम, सब बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। और आपका ये बड़ा भाई जो है 8-9 फिल्में किया है, 100-150 ऐड फिल्में किया है। अभी एक शॉर्ट फिल्म जो आप लोगों को आके मैं दिखाया था, उसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। विथ 235 इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑल, अवार्ड्स इज ऑलवेज अ सेकेंडरी थिंग, बट ऐसा ही कुछ काम करेंगे हम लोग ताकि हर इंसान BPFTIO का उस मुकाम तक पहुँचे। वही मेरा एक टारगेट है। मैं मेरे लिए मेरा टारगेट फिक्स नहीं किया है, मैं उन सारे जूनियर्स के लिए टारगेट फिक्स किया है कि अगले, जैसे हम लोगों ने 25 साल में इसको प्रूव किया कि 1 से हम लोग 250 तक पहुँचे वहाँ पे,
अगले 15 साल में वो 250-500 हो, जिसमें से 100 इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो। तो उस जुनून के साथ हमको काम करना है। कौन कौन से चैनल में काम कर रहा है। कल एक टॉग ऑफ वार हो रहा था यहाँ पे, मैंने देखा कि वो नंदीघोष टीवी वाले उसको कुछ बोल रहे हैं। तो वो सब ईगो विगो सब छोड़ के अपने काम पे फोकस करो। जैसे देवी ने बोला, सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में डर, उसके आगे बढ़ो। जिसने सर ने इंस्पायर्ड मैसेजेस दिया कि खुद की इंसान के अंदर अपनी एक स्टोरी होती है। तो मैं सर यहाँ पे चेयरमैन सर बैठे हैं, डायरेक्टर सर बैठे हैं, मैं बीइंग ए सीनियर मोस्ट स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करके एक स्क्रीन प्ले डायरेक्शन का कोर्स एटलीस्ट एक शुरू करवाइए। जी बहुत ज़रूरी है, मैं बोलने वाला था ये। अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन का कोर्स होता है तो जो भी थोड़े बहुत लैकिंग होता है, हम लोग जब जाते हैं बाहर काम करने के लिए, क्योंकि हम कैमरामैन तो बन जाते हैं, लेकिन कैमरामैन को स्टोरी की नॉलेज होनी चाहिए, एडिटर को स्टोरी की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा क्लोजअप शॉट कहाँ पे काटेगा, कहाँ पे डायरेक्शन ने इमोशंस देने के लिए बोला है। बिकॉज फिल्म मेकिंग इज इमोशन, सब लोग बोलते हैं, बट इमोशन को साकार करने के लिए डायरेक्शन स्क्रीन प्ले की नॉलेज होनी चाहिए। सर से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि सर खुद बोलते हैं कि आई एम नॉट ए लर्न राइटर। वो सुनते 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 कहानी बनाए। ऑफिस की कहानी उनकी मैं जब सुन रहा था गाड़ी में आते आते, ऑफिस इज ए सुपर हिट शो, सबको पता है, ये हर घर की 90% की कहानी है। तो हमारी अंदर भी एक कहानी है। तो क्यों ना हम एक सर को रिक्वेस्ट है कि अगर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले का एक कोर्स हम लोग यहाँ पे शुरू करके जाएं तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ एक आदमी निकलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली डिप्लोमा फिल्म में चारों डिपार्टमेंट के अलग अलग रूम मिलके एक फिल्म बनाते हैं। तो कैमरा डिपार्टमेंट को भी पता है एडिटर क्या काटेगा, एडिटिंग डिपार्टमेंट को भी पता है साउंड क्या होना चाहिए, साउंड डिपार्टमेंट को पता है कि फिल्म ऐसी बनेगी तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो जब कोई भी बंदा कोई भी डिपार्टमेंट से निकले तो 100% होकर निकले, ताकि उसके लिए सारे चैलेंजेस जो हम लोगों ने फेस किया था 27 साल पहले, वो फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। वो कॉन्फिडेंटली बोल सकेगा, आई एम फ्रॉम BPFTIO, आई नो एवरीथिंग, वट एवर क्वेश्चन यू आस्क मी आई कैन एबल टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त नहीं है, 40 मिनट का वक्त था, 1 घंटे से ऊपर मेरे को पीछे टांग खींच रही है। तो थैंक यू थैंक यू ऑल। सर के लिए कोई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे अश्विन सर के लिए, तो प्लीज अनदर 5 मिनट्स इफ यू कैन गिव टू। या 2 माइक आपको मैं दे रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन पूछना है प्लीज 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन तो नहीं था, एक अपने मंदिर में मतलब मन में एक गहराई में एक क्वेश्चन था कि सबके लिए, मतलब 500 जन के लिए एक पर्सपेक्टिव जानना था, और हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए कि एक फिल्म मेकर को कैसा होना चाहिए, कि कोई इंस्पिरेशन सेट हो उसके हिसाब से चल के वो ऐसा बनना चाहिए, कोई ऐसा हो उसके जैसा बनना चाहिए, या फिल्म मेकर को अपने जो खुद हो उसका बेस्ट बनना चाहिए। तो सर, आपका फिल्म मेकर को आप जैसा होना चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ। बट सर सबका पर्सपेक्टिव। हाँ सुनिए मैं क्या बोल, फिल्म मेकर को इनके जैसा होना चाहिए, फिल्म मेकर को रंजन सर जैसा होना चाहिए, फिल्म मेकर को किसी के जैसा नहीं होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। ये आप खुद, ये तो बहुत आसान है। आपकी ओरिजिनलिटी क्या है भाई? आप शादीशुदा है? अपनी वाइफ से पूछिए पति कैसा होना चाहिए। अगर वो बोलती है पड़ोसी ऐसा होना चाहिए, तब तो मैं अपनी बात पीछे लेता हूं। अरे बाबा, ये तो बहुत साधारण सी बात है। फिल्म मेकर को उसके जैसा होना चाहिए, बस ये आपका है। तो नेचुरलिटी ओरिजिनलिटी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप कॉपी करेंगे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता है आपको नेशनल अवार्ड मिला है। भगवान आपको बहुत 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 आपको ऊपर चीज़ें और आपके ऊपर मेहरबानी हो ऊपर वाले की। एंड प्लीज डू गुड एंड गॉड ब्लेस यू। सर ये नेचुरल सा सवाल है, मेरे दिमाग में भी था ऐसे ही कि कैसा होना चाहिए। जिस टाइम में मेरे अंदर डर था, जब ये चीज़ मैं समझा कि खुद के जैसा होना चाहिए, तब जाके वो डर निकला। मैं मैंने राइटिंग सीखी नहीं थी, कहीं आता नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं राइटिंग क्या होती है। तो मैं तो अपने लिए लिखता था कि मैं कुछ करूँगा तो लिखूँगा, तो मैं लिखता रहता था।
तो जब मुझे पहली बार किसी ने 4 पैसे, मतलब पैसे नहीं थे तो मुझे पैसे चाहिए थे, तो उसने कहा डायलॉग लिख दो, तो मैंने लिखा, तो बोलता नहीं तुम्हें आता नहीं है। मैंने कहा भी यही आता है। तो मुझे एक बोला कि कॉमेडी लिखना है ना, तो स्टेशन पे जोक्स की बुक मिलती है, जोक्स की, उसको लेके आओ, उसमें से हर पेज पे 3-4 जोक्स होने चाहिए। तो मैं लेके आया स्टेशन से बुक, जीजा साली के जोक्स, ऐसे जोक्स आते हैं ना स्टेशन में मिलते हैं ना, देखा होगा ना, ऐसे मतलब थोड़ा सा, और मैं पढ़ता था। अब मैं कहता था जोक्स तो ठीक हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी चींटी जीजा, इसको मैं डालूं कैसे इसमें? तो मेरे को पता था यहाँ डाल दो, तो मेरे को नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दिया। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब है, तो मैं नहीं कर पाया, टाइम बीता, कुछ और करते करते। एक मेरे पास एक चीज़ थी जो मैं अपने पापा मेरे बैंक में थे, तो मैं देखता था कि सर कैसे वहाँ लोग बिहेव करते हैं। मैं कानपुर शहर में देखता था कैसे लोग कितने कैजुअल हैं, आज भी है, ज़िंदगी को लेकर कैजुअल है, हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। तो बस वो था, वो आता चला गया, और कोई उसका बैरोमीटर नहीं है, कोई उसकी विधा नहीं है। आप अपनी विधा खुद बनाइए। हर कैमरामैन का अपना स्टाइल होता है, हर रिकॉर्डिस्ट का अपना स्टाइल होता है, हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है। जिसका नहीं होता है उसकी अपनी अलग जगह नहीं होती है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ। हमारा आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। बच्चे तो पूछ ही नहीं रहे सर, बुजुर्ग पूछ रहे हैं यार। सॉरी मजाक कर रहा, आप भी बच्चे हैं। स्टूडेंट्स पूछना चाहिए, बोलिए सर। I have a question whether film, I just want to learn whether film is a teacher or film is a entertainer. फिल्म इज एंटरटेनर, वो टीचर जो एंटरटेन करता है। आपको ऐसा टीचर चाहिए जो प्रवचन करे? मुझे तो नहीं चाहिए। एक ऐसा टीचर जो बोल रहा है A+B में A का आविष्कार ऐसे हुआ था, B वॉर फाउंडेड इन, अरे नहीं जानना मेरे को। जब तक आप उसको मजे लेकर नहीं बताते कहानी को, तब तक नो बडी, ये बच्चे इंटरेस्ट, बोर हो जाएंगे। हम बोर हो जाते थे, कौन, हमने टीचर्स के नाम रख दिए थे अपने, है ना, पपीता, पकाऊ, आई एम सॉरी, ये करते हैं, सबने किया होगा अपनी लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो बोर कर रहा है मुझे यार, और उसकी गलती नहीं है। वो एक चैप्टर पढ़ता है, टीचर एक चैप्टर ना 15 साल पहले पढ़ लेता है, 15 साल तक वही पढ़ाता रहता है। स्टूडेंट बदल जाते हैं, ना टीचर बदलता है। इट्स लाइक कुछ भी बोल दो आप। हिंदुस्तान के इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, जो कि नॉर्थ में है, पहले साल पढ़ाया, अब सेकंड ईयर। नॉर्थ में जो दिल्ली है वो हिंदुस्तान की कैपिटल है। हिंदुस्तान की कैपिटल नॉर्थ में है और वो दिल्ली है। एक ही बात को 4 तरीके से पढ़ाता है वो। कहने का मतलब है बोर करेगा ना आपको। तो आपको टीचर वो चाहिए जो एंटरटेनर हो। यही फिल्म है, पहला काम उसका एंटरटेन करना है, आपको मजे ले लगे। मम्मी कैसे खाना खिलाती थी बचपन में, वो देखो एक चिड़िया है, मुंह खोलो, ओ आई चिड़िया, मुंह खोलो, आ खा गया खाना। अदरवाइज मम्मी पीछे भागती रहती है, खाना लेके नहीं खाता है बच्चा। वो बताए कि इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, नहीं चाहिए मेरे को प्रोटीन विटामिन। तो आपका जवाब आपके क्वेश्चन में है, टीचर हैज टू बी एंटरटेनर। एक एंटरटेनिंग टीचर चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल सेशन। जैसे कि सर ने बोला 40 मिनट का वक्त था, लेकिन 1 घंटा कब हो गया वो पता ही नहीं चला। इसलिए मैं स्टेज पे भी नहीं आ रही थी, बिकॉज सुनने के लिए इतना अच्छा लग रहा था। एंड एज एलुमनाइज ऑफ BPFTIO, बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो आप ही से सीखेंगे। Thank you for this session. Now I would like to request Chairman BPFTIO, Shri Sanjay Patnaik sir, to come on stage and felicitate our alumni and our guest of today, Shri Dheer sir.
Thank you so much. So with completing 25 years of glorious journey, BPFTIO on this Silver Jubilee occasion has conducted many competitions like radio program, short film competition, short story writing, and BPFTIO students' story in photographs. So before going to present the awards to the winners, I would like to request to play the short films, 3 of the short films who are winners of this competition. सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई हेले एबे बदलुछि पाणीपाग बदलुछि परिस्थिति जलवायु परिवर्तनर ज्वाला सहुछि पृथ्वी प्रदूषित हेउछि राजधानी भुवनेश्वर वायु तयारी भितर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामना को आसी कोहलिला दिल्ली और एनसीआर रे भूकंप अनुभूत होइछि दिल्ली समेत उत्तर भारत रे भूमिकंप राज्यर 11 जिल्ला रे नियंटिया वर्षा फल अधिकांश जिल्ला रे मरुड़ी आशंका सृष्टि होइछि ए वर्ष पुणी आसिबो खरादिनिया बात्या बढ़िछि संभावना फनी अम्फन यस एवं असानी परे ए वर्ष मौखार संभावना मात्र किछि घंटार वर्षा रे बेहाल राजधानी अस्तव्यस्त जन देख आमे आम दुनिया सहित कौन करिछु ये आम दुनिया मोर आज भी मने अछि आम पवन रे केते स्वच्छ महक थिला आमे नदी रो डायरेक्ट पानी पी पारथुलु वर्षा हेले सेई माटीर बास्ना लोक माने ताकू बहुत भल से बारी पारुथिले केते शांति केते स्वच्छ परिवेश थिला हमर हेले आजी एबे देखो आमे पृथ्वी को कौन कर देइछु कंक्रीट पलटि गलानी ए पृथ्वी यह आमर भूल रो एक कैनभास बड़ बड़ सहर बहुत पॉल्यूशन बढ़ी गलानी कोठी कृत्रिम वर्षा करा जाउची तो कौन सी ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं पहुंचा जाउची लोक मान को ऑक्सीजन ही मिलुनी स्वर्ग मिलथिला हमकु रहिया को किंतु आमे ताकू बंजर माटी करि सालुनु बंजर माटी यही डिस्ट्रक्शन पाई खाली आमे ही दायी खाली आमे ही दायी नाई मत किसी गोटे करिया पड़ो यही पृथ्वी को बंचा हेले मत किसी गोटे करिया पड़ो मुझे एकला बसले हेनी किंतु किंतु मु एकुटिया करी कौन किंतु किंतु हार मानि गले हेनी मत किसी गोटे करिया पड़ो नाई मत निश्चय किसी करिया पड़ो प्रिय आगामी दिन मु एही लेटरटी को दुखर सह लिखुची मु एही पीढ़ीर जी पश्चाताप करने को चाहूँगी एही पृथ्वी पई दिन थिला आम पृथ्वी जीवनर एक संगीत परि मन हेउथिला वर्तमान आमर अवहेला पई से चुप हो जाइछि मु से गछ पई क्षमा मागुछि जहाको आमे काटिछु मु से महासागर पई क्षमा मागुछि जहाको आमे प्रदूषित करिछु मु से वायु पई क्षमा मागुछि जहाको आमे विषाक्त करिछु निशब्द प्रयास रे मु एही भूल स्वीकारनामा को जलाई देउछि जलाई दे सारी सेही पाउंस को पृथ्वीर परिवर्तन पई चेष्टा करिबी मु आशा करे मो लुह इंग सह मिसी तुम पृथ्वीर आरोग्य कामना करिबो इति वर्तमान एहा मोर प्रतिज्ञा तुमको मोर प्रॉमिस एही निया आम पश्चाताप को दूर करू तुम मनरे गोटे बदलैबार चिंताधारा आसू जहा हेई गलानी ताको आमे आनी परिबानी किंतु आम परे आसुथुबा लोकमानंक पई
किछि गोटे भल करबा को चेष्टा करिबा निश्चय। एही अग्नि आम भूल को शुद्ध करिदेउ एवं पाउंसरू पृथ्वी पाई एक नूतन परिवेश आरंभ हेउ। एतिकी मो आशा और विश्वास। এটা কোনো খেলিবা জিনিস হইছি নেকি ধুড়ি মুড়ি করিকে নেকি আসছো দে হাত দে যে পড়িব যে জলদি রাঁধিলে বাপা খাইকি অফিস যাবে যে দাদে পানি কাই নষ্ট করছো আমার কি পানি নষ্ট করতেনি যাও তুমি পানি পুরি নষ্ট করলো আমারি একটা মারো খাইবো ପାଠ ସେଠ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଠି ଦୁଷ୍ଟମି ଚାଲିଛି ଚାଲ ଏପଟେ परिवेश परिष्कार रखिबाकू सरकारंकर केते नियम हेले मानुची किए एठी समस्ते निजको पाठुआ बुद्धिया बोलाउच जो बाट दे जाउच सेठी थुकुच आ लाज माडुनी सर्वाधिक गुरुत्व होची आज दिन में जो भाव परिवेश दूषित होची जो भाव में स्थिति खराब होची पृथ्वीर बृहत्तम देश भारतवर्ष सबुठ प्रदूषित देश में परिणत होची जो भाव दिल्ली स्थिति देखिले अन्य राज्य स्थिति देखिले से माँ सर्वोच्च न्याय गोटे निर्देशना देते जो भाव में परिवेश सुस्थ हम बाण फुटा बंद हम परिवेश उपर गोटे बड़ गुरुत्व प्रश्न आज समस्त पाखे चैलेंजिंग क्वेश्चन भाव ठिया जदि लोक ग्रीन फील्ड उपर गुरुत्व नदेवे और क्लीन उपर नदेवे कटक महानगर निगम गोटे बड़ गुरुत्व नौ क्लीन कटक ग्रीन कटक उपर गुरुत्व दौर हो भाई आए गुटका खाऊच अलिया करुच डस्टबिन टा देखा जाउनी आखि की
आम परिवेश सुरक्षा आम हाथ रे टिके तो से कथा मनरे हेज। एनवायरमेंट को सुस्थ और सुंदर रखा गवर्नमेंट नुहे आम निजक निजे सचेतन हवा दरकार। वेस्ट मैनेजमेंट को शिखा पड़ो जो वाटर आमर वेस्ट होची केमती आम रिसाइक्लिंग द्वारा मैनेज कर जदि निहाती दरकार आम वेहिकल्स यूज कर ना तो वाकिंग डिस्टेंस अच्छे आम चलिकी जापर। आज युवपीढ़ी पैकेजिंग फूड उपर बेसी आकृष्ट होती तो पैकेजिंग फूड द्वारा आमर बहुत गुड़े वेस्ट रोचे। फ्यूचर जेनेरेशन को आम गोटे सुस्थ और सुंदर परिवेश देवा ताहले आमको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट आम करवा सेटा होची प्लान। लोके जदि निजे सचेतन न हेबे नियम सब चुलिकी जीवनी। परिवेश पई आगे आस सुंदर दिशिब आमरी विश्व। ये जो सिनेमा आपण माने देखिले शॉर्ट फिल्म कंपटीशन रो ये सिनेमा कोनोसी फिल्म स्कूल रे पाठ पढ़िथिबा पिला माने करे नाहंती परं +2 पढ़ुथुबा छात्र छात्री माने तैयारी करिसंती जोंति पई कंपटीशन रो आयोजन करा जायथिला आ केते मीनिंगफुल सिनेमा याकु देखिबा परे ही जणा पडुची। रेडियो कंपटीशन मध्य करा जायथिला रेडियो प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस रहिथिला थीम। तो आसंतो सुनिबा से प्रतियोगी जो माने इतरे कृतकार्य होइछंती सेमानकर से कंपटीशन रो कार्य को। कांधरे अखाबुरारे तैयारी छिड़ा चूला आउ पादरे भिन्न भिन्न रंगर दुईटी चपल देहरे मैला फतेईटे एवं हाथरे अंका बंका गोटे बंकुली बाड़ी अंटा नई जाइछि पादर मुंड पर्यंत दुखर लहड़ी खेलुछि। सूर्यदेव कृपा भी नहीं बुढ़ा उपरे मुंड उपरे टाण खरा आउ पेटरे भोकर ज्वाला। नई नई ए फांका रास्तार चालू चालू गाँटीए पड़ा। गाँर ना आदित्यपुर। चाली चाली बहुत थका छाई देखी रास्ता पाखरे बसी पड़ा बुढ़ा। बहुत शोष पानी पाई आहुरी कौन चलवाक पड़ो। बुढ़ा ऊपर को चाहिला से छाई कौन गचर नथिला से छाई थिला एक विराट सुदृश्य घरर। बड़ लोकर घर बोधे जाए देखी पानी सहित भल खाଇବା भी मिल जिवो। से उठी से घर आड़ को गला। गेट पाखरे कुकुर गुड़ाक बहुत जोर रे भुकिले सते जेमिति से माने कहूथिले ए जा जा पळा एठू गेट खोला केवल धनी लोकंक पई तो पई नो। आउ भीतर को जीवा को चारा नाही सेठू डाक पकाइला मां टिके पानी मिलिबो। थरे डाकिला दुई थर डाकिला बहुत थर डाकिला केवल कुकुर माने जोर भुकिले सिना को मारो देखा मिलानी। सेठू आसीबा को बाहरिला बेले जने मां को पाटी सुभिला किए टे काका डाकुछ किरे का पाटे ने लागछि। ओहो एई बडे चिल्लौथले ने कोन। गाली सुनिबा तो मोर अभ्यास जाए पानी टोपे पी देबी। से जाई गेट पाखरे पहुंची कहिला मां पानी टिकी देलो। बहु जनक बोतलटा को घर भितर आनी गेट एपट को फिंगी देला। बोतलटी तले कचाड़ी होई पड़िबा परी तार ठिपेटी बाहरी गला। बोतलटी गड़ी गड़ी जाउथाय और पानी पड़ी पड़ी जाउथाय। सेई बोई जाउथिबा पानीर धाररे बुढ़ा भिकारी एवं से घरर बहु मध्यरे टाणी होई जाइथिला लक्ष्मण गार। ए लक्ष्मण गार नुह ये हेउची शोषर गार। तथापि शोषिला पेट पाई बोतलटी को धरिबा को चिपा बेड़कू यह गोबर उपरे चापी होई पानी बंद होई गला। बुढ़ा पानी पीब कौन से सेठारु मन दुखरे आग को चलिला। खाइबार आशा तो एठी करिबा ही वृथा जोटी पानी टोपाई भी भाग्य रे नाही।
ଆଦିତ୍ୟପୁରର ଏ ଆତିଥ୍ୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେମିତି ଟାଣ ଖରାରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଢ଼ା। ଗାଁର ନାଁ ଗରିବପୁର। ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ଡାକ ପକାଇଲା, ମା ଗିଲାସେ ପାଣି ମିଳିବ? ବୁଢ଼ାର କଥା ନ ସରୁଣୁ ଘର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣେ ପାଣି ଗିଲାସେ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମଉସା ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଖାଇବା କଥା କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିପହର ବେଳ, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଯିବେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଛପର ହେଇନି ଏ ଘର। କୁଟା ସବୁ ବାଉଁଶ ହୋଇଗଲାଣି, ଜାଗେ ଜାଗେ ବାଉଁଶ ବତା ସବୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ଜଣକ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆସନଟିଏ ପକାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଦେଇ ଘରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟିଏ। ତଥାପି ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ହେଉ ପଛେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଇଟାରେ ତିଆରି ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ମା ଜଣକ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲେ। ପଖାଳ, କଳମ ଶାଗ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ, ତାପରେ କଂସେ ପାଣି। ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ାର। ଭାତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବୁଢ଼ା। ଅଧା ନ ଖାଉଣୁ ପୁଣି ଡାକରା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା ତରକାରୀ କହିଲେ ଆମର ଖାଲି ଶାଗ, ଗରିବ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଚଳେଇ ନେବେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନାଇଁରେ ମା, ଏଇ ଶାଗ ପଖାଳ ମୋ ପାଇଁ ମାଉଁସ ଭାତଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଗାଁର ନାଁ ଗରିବପୁର। ଏଠି ପଇସା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଇ ତାର ମନ ଶାନ୍ତି କରିବା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆତିଥ୍ୟପୁରର ପଇସା ବାଲା ଘରଟେ ପାଣି ଟୋପି ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସେ ଆତିଥ୍ୟପୁର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବପୁର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶିଖେଇଲା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। हेलो नमस्कार सर, कृतिश पाड़ी कहते। हाँ कहतु किए कहते? सर मो फ्लिपकार्ट ऑफिस कहती, आपंकर गोटे पार्सल थिले सर। अच्छा अच्छा सर आम डिलीवरी पार्टनर आपण आड्रेस रे अच्छी किंतु आपण घर पाऊनी सर। अच्छा कौटी अच्छा सर एक्जाक्टली से कौटी अच्छी सेटा तो मुझे कहीपरि तो तुमको कहतु मत फोन करेंगे मुझे घर बाटटा बतईदेवी। नाई सर एबे डायरेक्टली कॉलिंग प्रोसेसटा आमर बंद हो जाइए, तो मुझे आपको गोटे प्रोसीजर कहूँ आप फॉलो करूँ, आप डायरेक्टली सहित कथा पारे। अच्छा अच्छा कहतु सर एबे प्रथम आप निजर फोन डायलरटा ऑन करूँ, से *401* आड करूँ। एबे मु आपन गोटे नंबरटा देवी आम डिलीवरी पार्टनर, से नंबरटा आड करी आप डायल करेंगे, जहाँद्वारा कि आप डायरेक्टली सहित कथा पारे। बुझिपारे सर? एटा कले तो मो कॉल सब फॉरवर्ड हो ना? नाई सर, से कॉल डायरेक्टली आपन को आम डिलीवरी पार्टनर सहित कनेक्ट करेगा। मत कौन मूर्ख भाज? ये प्रोसीजर फॉलो कले जो नंबर मु स्टार पर डायल करी से नंबर को मोर समस्त कॉल और मेसेज फॉरवर्ड हो, जोटा यूज करे तुम बैंक डिटेल्स ओटीपी एक्सेस करी बैंक अकाउंट खाली कर दो नहीं भलो। अरे नाई नाई सर, सेमती किसी कॉल फॉरवर्डिंग होबनी, आपण थरे डायल करी तो देखंतु। आ मते ठकी बोका बनने को चेष्टा करनी, एमती करे तुम केते निरीह लोक को लुटी थी मु जानी पारुछि। अरे साला ताले तो सियाना अच्छो जानी पाई, सब परिश्रम किंतु वृथा कर दे। छाड़ अलगा बकरा खोजिबा। एभली भावे आजिकल अनेक कॉल आसुछि,
ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ गिफ्ट पार्सल प्राइज भଳି ଜିନିଷର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ତାଙ୍କୁ OTP ଓ UPI ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ କିଛି କ୍ଷଣରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଅକ୍ଷରବାଚୀ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆସେ ମମତା, କରୁଣା, ଦୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମା ବେଳେବେଳେ କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଯଦି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ବାପା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ମୋର 4ଟା ବାପା, କିନ୍ତୁ ମା ନାହିଁ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭଳି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କନ୍ୟା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ଗୋଟିଏ କମନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା 4 ଜଣ ରୁମ୍ ପାର୍ଟନର ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ମୋତେ ସେହି ଅଳିଆ ଗଦାରୁ। ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଓ ସେହି 4 ଜଣ ମୋ ବାପା। 4 ପାର୍ଟନର, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଜଣେ ମୁସଲିମ, ଜଣେ ଶିଖ ଆଉ ଜଣେ ଇସାଇ। ଗୋଟିଏ ବାପା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାପା ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଧରେ ବସି ବୁଲଉ ଖେଳଉଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଗେଲ କରି ଶୁଏଇ ଦେଉଥିଲେ। 4 ଜଣ ବାପା ମୋ ଲାଲନ ପାଲନରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ। ନାଁ ରଖିଥିଲେ ମୋର ଭାରତୀ। ସ୍କୁଲରେ ପାଦ ଦେଲି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିଲି 4ଟା ବାପର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ମୋର ବାପା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଝିଅ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଭାରତୀ। ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ମନ। ଅତି ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅ। ମୋର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର 4 ବାପା ମୋର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯାହା ମୁଁ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବାପାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ପଡ଼ିଯାଏ। ଝିଅର ବାହାଘର। 4ଟା ଯାକ ବାପା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ରେ। ହିନ୍ଦୁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବର, ମୁସଲିମ ବାପା ଖୋଜୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ବର, ଶିଖ ବାପା ଶିଖ ବର ତ ଇସାଇ ବାପା ଖୋଜୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଇସାଇ ବର। ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ମହାଭାରତ, ଏକ ନୂଆ କୋରାନ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାଇବେଲର ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହୁଥିବା ରୁମ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିବାଦ। 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ହେଲି ମୁଁ। ସତେଧିକ ମୋତେ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ମୋତେ ଛି ଛି କହିବ। ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ବାଳିକା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏ ସଂସାରରେ ଅନାଥ ରହିବା ଭଲ, ନା ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ହେବା ଭଲ? ସେଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଁ ମଲିନି କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁକି ମାରୁଥାଏ ମନରେ। ସାହସ ବାନ୍ଧିଲି ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ହେ ପୂଜ୍ୟ ବାପାମାନେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଠେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତମେମାନେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଛ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ତମ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ୟା ଭିତରେ ମୋ ବିବାହ କ'ଣ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ
ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ବାପାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମୋର। ପାଖରେ ଥିଲେ 4 ଜଣ ବାପା। ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ପଚାରିଲି, ହେ ବାପାମାନେ, ଏ ଅନାଥ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏ ଆଖିରେ ଏତେ ଲୁହ? ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ନାଇଁଲୋ ଭାରତୀ, ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ଲୁହ। ସମୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମ ଝିଅ ଆଜି ଆମ ମା ଭାରତୀ ହେଇଗଲାଣି। So, this radio program competition and short film competition was conducted in inter-college among +2 students. Now, I would like to request Shri Rakesh Ranjan sir and Shri Prashant Naik sir, along with Shri Ashwini Virendhir sir, to come on stage to give award to the winners of these competitions. In radio program competition, the first prize goes to Saroj Parida, Baba Panchalingeshwar Junior College, Baleshwar. I request him to come on stage and with the certificate, the institute is giving him 15,000 cash prize. The second position goes to Devash Maharana, Dreams University. We felicitate him with 10,000 cash prize. Devash Maharana. In radio program competition, the third prize goes to Pratiksha Priyadarsini Patnaik, Mahatma Gandhi College, Bargad. Do we have Pratiksha? Okay, on behalf of Pratiksha, her uncle is here to receive this award with 7,000 cash prize. Moving on to short film competition, the first prize goes to Subhakant Maji, BJB Higher Secondary School, Bhubaneswar. Along with certificate, the institute is felicitating him with 25,000 cash prize, which will motivate these students to go further in their life. The second prize goes to E. Sanchita Patra, Autonomous Science College, Hinjurikatu. I request our winners of various competitions to come on stage a bit faster. E. Sanchita Patra, Autonomous Science College, Hinjurikatu. We felicitate her with 20,000 cash prize. The third prize goes to Sampada Priyadarshini, Revensa College, Cuttack. Along with certificate, the institute is delighted to present her 15,000 cash prize. Sampada Priyadarshini. The next category for this competition was short story writing and storytelling in 10 photographs, which was conducted among 10th plus 2 and graduate students. The first prize in short story writing goes to Nibedita Sahu, Med School of Biotechnology, Bhubaneswar. Nibedita Sahu.
We wish her all the very best for her future, and the institute present her certificate and 7,000 cash. The second prize goes to Akansha Kar Mahapatra, OUAT Bhubaneswar. We are happy and immense pleasure to award her the second prize with 5,000 cash. Akanksha Kar Mahapatra, OUAT Bhubaneswar. The third prize goes to Pooja Parida, Raghunath Jiu Higher Secondary School. Pooja Parida. We award her the certificate with 3,000 cash prize. Pooja Parida. Moving on next, storytelling in 10 photographs. I request Ankita Khatua, who has got the first prize from Stewart Science College, Cuttack. I request all the winners, please come on stage a bit faster. Ankita Khatua, Stewart Science College, Cuttack. We present her the certificate along with 10,000 cash prize. The second prize goes to Ratan Kumar Mahapatra, Government Autonomous College, Angul. We are happy to motivate him with certificate and 7,000 cash prize, Ratan Kumar Mahapatra. And storytelling in 10 photographs. The third prize goes to Sneha Behera, Shri Krishna Chandra Gajapati Autonomous College, Gajapati. I request her to come on stage. We present her certificate with 5,000 cash prize. In short film competition, the special jury award goes to Himanshi Mahapatra. Himanshi Mahapatra. I request again all the winners, please come to stage a bit faster. And along with Himanshi, Smriti Smita Martha also got a special jury award in short film competition. Yes? Okay. Next, radio program competition. The special jury award goes to Nirmal Chandra Rautrai. Do we have Nirmal? Okay. We had an institute level competition for photograph, and the first prize in this goes to Sambit Shubhankar Pradhan, who is from film editing branch. Sambit Shubhankar Pradhan. Okay. We have Nirmal Chandra Rautrai, who has got special jury award for radio program. Okay. Now request Sambit Shubhankar Pradhan from film editing branch, who has got first position in photograph competition. We award him with 5,000 cash prize. The second prize goes to Lakshmidhar Malik, and he is also from the film editing branch. Lakshmidhar Malik, we award him with 3,000 cash prize. And the third prize goes to Rahul Mahalik from cinematography department. Thank you, sir. Thank you so much.
for presenting awards to our winners. Thank you so much. I would like to request to all of you, please take your seat. So now, I request my dear friend to play the film. We'll have a screening of a film on National Road Safety Short Film Festival 2023, which has been conducted by ST Odisha. The Best Direction Award has got by Ayushman Bodapanda, who is of 5th semester of BPFTIO. The film name was Not Out, and the team was Frame Makers. So now we'll have a screening of this film, and after that we'll have a tea break. Thank you. बहुत दिन पर आमे देखा हेले लंबा छुट्टी जो मिली तू रॉबिन रो गेम देखिछु रॉबिन क्रिस रे बहुत फास्ट रोड रे से दिन भी रॉबिन सेंचुरी मारला ଆଉ ରୋଡରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ତା ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରବିନ ଆସିଲା आज 3 जिला को ऑरेंज 16 जिला को खाली क्रीज रे रोड रे नॉट आउट रहिबा भी सेतिक इम्पोर्टेंट
हेलो चेक हेलो चेक ଖରଚ ହେବ କି? କେତେଟା ବାହାରିବ? ବେଳେବେଳେ ଦରକାର ହେବ କହିଲେ
चेक 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 हेलो हेलो चेक हेलो चेक 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 हेलो चेक थोड़ा सा रिवर्ब है इसको तो फ्लैट रखिए बाकी सारे माइक्स कीबोर्ड का बेस थोड़ा सा कट करवा दो। क्लैप बॉक्स बूम कर रहा है थोड़ा, उसको भी सेट करवा दो। क्लैप बॉक्स में बूम आ रही है, बूम। अभी भी आ रही है थोड़ी सी, और थोड़ा कम बूम करवा दो। हाँ अभी ठीक। हेलो हेलो अच्छा, जो माइक्स है ना उन सब में एको बंद कर दीजिए। इस वाले माइक में भी एको बंद कर दो, इसको बिल्कुल फ्लैट कर दो। हाँ, इस वाले को बिल्कुल फ्लैट कर दो। अच्छा फ्लैट है। बाकी सब में हल्का सा रिवर्ब डाल दो, बिल्कुल हल्का सा। थोड़ा सा हाइज खोल सकते हो माइक्स का। इधर के जो दोनों माइक्स है ना उनका थोड़ा सा हाइज खोल दीजिए। उधर वाले माइक में थोड़ा सा हाइज और खोल दो। अच्छा, हमें एक मॉनिटर चाहिए होगा यहाँ पे, 2 मॉनिटर्स। थोड़ा उसका लेवल खोल दीजिए, थोड़ा सा और। चेक चेक, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम।
ठीक है ठीक है, हो गया ये ना, रोक दे फिर उनको, रोक दे। एक बार we'll check once. तेरे लिए आया मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना तो क्या कीजिए। मॉनिटर्स में वोकल थोड़ा और खोल दीजिए सभी का, तबला थोड़ा लाउड है, थोड़ा कम करवा दीजिए। वो जो अधूरी सी बात बाकी है। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा। हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा। इसका थोड़ा सा लेवल खोलो। महामाया जगदम्बा जय दुर्गा, जय दुर्गा। महामाया जगदम्बा जय दुर्गा। थोड़ा सा तबला और खोल दो, ज्यादा कम हो गया। जगदम्बा जय दुर्गा, जय दुर्गा। और कॉर्नर वाला जो माइक है उसको भी थोड़ा लेवल बढ़ा दो। अगर बूम करता है ना भैया तो रिवर्ब फिर हटा दीजिएगा, बाकी माइक से अगर बूम करता है तो हटा दीजिएगा। So, नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग। यस प्लीज सर। Mic. Hello. Very good evening, ladies and gentlemen. We have the students from Sri Sri University who is going to perform a very spiritual jazz performance in front of you. So can we have a huge round of applause for them? I hope they are going to make us enjoy with their beautiful music and we're going to love them. Thank you.
Thank you for the very warm welcome. So, we are from Shri Shri University and we follow Gurudev Shri Shri Ravi Shankar's Ji's vision of spreading smiles and happiness all across the world. And we do that through our music. तो यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, some of them are from architecture, some of them are from osteopathy, some are from arts, some are from psychology. So we have people from all different backgrounds here. Yet we unite at one point, that is music. Thank you. That's the most beautiful thing. But जब ये म्यूज़िक भगवान की भक्ति के लिए अपने अंदर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग ही बात होती है। और आज हम लोग यहाँ पर वही आपको एक्सपीरियंस करवाने के लिए आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ हैं? यस, जोर से। तो मेरा नाम कुशाग्र है and we have Kushi with us. We have Apurva with us, Sagarika. These are on vocals, and we have Rajas with us. We have Shivani with us. We have Aryan with us, and we have Shashank with us. So, and we have our most special guest, who's playing the keys for us. We are very grateful for him to be here. So we'll start with chanting Om, but उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है, हम लोग आज यहाँ पर कुछ गाना गाने आए हैं, कुछ परफॉर्म करने के लिए आए हैं, आपको ऐसा लगता है? लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। बट सत्संग में क्या होता है, सत्संग की एक अलग बात होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर हम लोग सब एक साथ गाते हैं और एक ही पावर से कनेक्ट होते हैं। उस एक पावर से कनेक्ट होने के लिए हर इंसान का, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सभी का 100% आना बहुत ज़रूरी है। तो 100% कैसे आ सकता है? आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ गाना है और मैजिक देखना है, ठीक है? जैसे कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं ना लाइफ में, ऐसे ही सब लोग नई चीज़ ट्राई करना चाहेंगे? तो कितने लोगों ने पहले यहाँ पे अटेंड किया है कभी ऐसे कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम या कोई सत्संग? अरे वाह, क्या बात है, कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है, हमें तो इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे किसी ने कभी मेडिटेशन करी है? ओके, कितने लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, एक करते हैं। कितने लोग भगवान को मानते हैं? कितने लोग भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। तो भाई हम सबका काम है आज इनकी भक्ति को बढ़ाना, ये मान के चलना है। आज सब ने इनकी भक्ति बढ़ानी है, बस पूरी मौज में आते हुए आज की ये शाम की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, फोन्स वगैरह सब लोग एक तरफ साइलेंट पे करके रख सकते हैं। We can all close our eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Deep breath in for Om. वक्रतुण्ड महाकाय
शरणं गणेश गणेश शरणं 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 शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश मङ्गलमूर्ति शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 मोरया रे बाप्पा सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा गणेश जी को याद करके बोल दीजिए मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया अष्टविनायक मोरया गणपति बाप्पा मोरया अष्टविनायक मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 And everyone can close their eyes for a few seconds. थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिएगा
एक छोटा सा भजन सुन के, छोटा सा भजन गा के क्या आपके अंदर कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी आपको फील हो रही है? क्योंकि हम सभी लोग उस एक शक्ति से बने हैं जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं। तो शिव शक्ति क्या होती है? एक एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है। वो एनर्जी जो हर जगह मौजूद है, जिससे हम लोग बने, जिससे ये लाइट्स जलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे बोलते हैं, वो एक ऐसा तत्व जिसमें से सब कुछ जीवा है और जिसमें सब कुछ मिल जाता है अंत में, वो होता है शिव तत्व। आइए। शिव राजा महेश्वराज शंकर शिव शंभो। शिव राजा महेश्वराज शंकर शिव शंभो। शिव राजा महेश्वराज शंकर शिव शंभो। शिव राजा आज इस शिव तत्व को महसूस करें, हमारे साथ गाएगा। आइए। हो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो। शंकर शिव शिव हर हर शिव शिव शंकर शिव शंभो। शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो। सब एक साथ। शिव राजा महेश्वराज शंकर शिव शंभो। शिव राजा महेश्वराज जय शंकर शिव शंभो। शिव शंभो। नटराजा महेश्वराज जय शंकर शिव शंभो। शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो। शंकर शिव हर हर शिव शिव शंकर शिव। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो। शिव शिव शंकर शिव शंभो। शिव राजा महेश्वराज जय शंकर शिव शंभो। शिव राजा महेश्वराज जय शंकर शिव शंभो।
शिव शंभो नटराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोलेंगे बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल तालियों के साथ बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। शिवराजा महेश्वराजा शंकर शिव शंभो। जय शिव शंकर जय शिव शंकर। भजन की शुरुआत करने से पहले बोल दीजिए एक बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जी की मस्ती में मस्त होते हुए आज उनका नाम ले दीजिए। यहाँ पे मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठना ही अलाउड है सिर्फ। श्री राम जय जय। मुस्कुराते मुस्कुराते गाएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम।
अपने शरीर को झूलने में मस्त हो जाए। सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। मजा आ रहा है सबको? मौज आ रही है कि नहीं? देखिए ऐसी है भक्ति, भक्ति का रस ही अलग होता है। आप जिसको भी मानते हो, जिनकी भी भक्ति करो, भक्ति का एक रस ही अलग है। दुनिया में हर एक इंसान हमारे जैसा यही भक्ति ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। हम इस प्यार को ही ढूंढ रहे हैं, कहीं चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, कहीं जॉब में ढूंढ रहे हैं, कहीं सक्सेस में ढूंढ रहे हैं, कहीं बच्चों में ढूंढ रहे हैं, बट यही प्यार ढूंढ रहे हैं। पर हमें पता ही नहीं है प्यार तो इतना आसान है पाना, अपने अंदर ही है। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। क्या बात है? मुझे हीरो से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। क्या बात है? क्या बात है? बोल दीजिए, क्या बात है?
बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना कहीं और ना कहीं और ना कहीं और ना सजदा गवारा हसाते तैनू रब बनिया तू माने आना माने दिलदारा हसाते तैनू रब बनिया दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा हसाते तैनू रब बनिया तू माने आना माने दिलदारा हसाते तैनू रब बनिया अपने तन के खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई अपने तन के खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई मेरी सांसों का मेरी सांसों का मेरी सांसों का बोले एक तारा हसाते तैनू रब बनिया तू माने आना माने दिलदारा हसाते तैनू रब बनिया तू माने आना माने दिलदारा हसाते तैनू रब बनिया सच्ची सी थी ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है जो दुनिया को सजी है दुनिया मेरी हमदम आसमां मिला Everyone can join us. तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई जिसमें जैसे निगाहों पा जादू कोई जिसमें नगमा कोई जिसमें खुशबू कोई जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी जिसमें जैसे मचलती हुई रागिनी जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक चमन जिसमें जैसे कि सूरज की पहली किरण जिसमें तरशा हुआ दिलकशो दिलकशी संदली संदली मरमरी मरमरी। आप भी गाइए। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आखिरी आखिरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आखिरी 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 उसने जाना की
तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन। मेरी जिंदगी सवर मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले सभी दोस्तों के लिए बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ओ ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार दी। एक बार फिर से हो जाए, जयकारा शेरा वाली दा, बोले साचे दरबार की। कितने लोग माता रानी के भक्त हैं यहाँ पे? हम भी हैं। आइए एक साथ गाते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, सबने बोलना है साथ में, जय माता दी। बोलेंगे जय माता दी। वालिए, पहाड़ा वालिए, तू मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है
बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सुने मन में जल गई बाती, सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ पे मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, कष्ट निवारे जय माता दी, पार निकाले जय माता दी, देवी माँ बोली जय माता दी, भर दे झोली जय माता दी, बाबे के दर्शन जय माता दी, 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 जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला, बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला, बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला, बोलो नारायणा जय सब लोग खड़े हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायणा रंग रंग विठ्ठला, 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 बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला। बोलो नारायणा जय। खड़े होके सब नाच सकते हैं ना, कंजूसी क्या करना है इसमें। बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला, बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला, लक्ष्मी नारायणा रंग रंग 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 विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, बोलो नारायण
रे परभार छोगाड़ा थारा ओरे चोगेला थारा ओरे रंगीला थारा रंग बेरू जुए कारी बात रंग लो जो कालिंदी ने बात छोगाड़ा थारा ओरे चोगेला थारा ओरे रंगीला थारा रंग बेरू जुए कारी बात रंग लो हे तने हे मने हे तने हे मने तने मने मने तने तने मने 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 तने वर्षितानी यशोदा मार चोगाड़ा थारा ओरे चोगीला थारा ओरे रंगीला थारा रंग बेरू जुए तारी बात रंग लो हे रंग लो जो कालिंदी ने बात चोगाड़ा थारा ओरे चोगीला थारा ओरे रंगीला थारा रंग बेरू जुए तारी बात हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज भी आनंद भी प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज भी आनंद भी प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज भी आनंद भी प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज भी आनंद भी नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आषाढुचारम मेघमल्हारम बनिबहारम विस्तारम दादूर पुकारम मयूरनकारम बनिताकारम विस्तारम राधे प्यारी गोकुलहारी गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रावण सरी को हाजियों ने पर्वत में रुसरान गुरुजी थारा मुखड़ुआ काणू के पति तारा पग पकाणू गुरुजी तारा मुखड़ुआ काणू के पति तारा पग पकाणू गुरुजी तारा मुखड़ुआ काणू के पति तारा पग पकाणू बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला लक्ष्मी नारायणा रंग रंग विठ्ठला लक्ष्मी नारायणा पांडुरंग विठ्ठला बोलो नारायणा जय जय 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 तो आप लोगों ने क्या बोलना है इसमें मेरे साथ? मैं बोलूँगा शिव शिवम, आपको बोलना है? हाँ, एक आवाज़ तो आई। शिव शिवम मैं बोलता हूँ, आप लोगों ने बोलना है हर हरा। मैं बोलूँगा हर हरा, आपने बोलना है शिव शिव। हम बोलेंगे शिव हरा, आपने बोलना है
हम बोलेंगे शिव शिव हरा, ये बात। हो बम बम भोला, बम बम भोला, तालियां नहीं रुकने चाहिए। बम बम भोला, बम बम भोला भोला, 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 बम बम भोला। शिव 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 शिव। हर 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 बम बम भोला। शिव 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 बम बम भोला। हर 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 बम बम भोला। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला भोला, बम बम भोला, बम बम भोला भोला, बम बम भोला। शिव 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 बम बम भोला। हर 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 बम बम भोला। हर 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 बम बम भोला। शिव 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 बम बम भोला। हो भोलेनाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते। 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 शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा। आवाज नहीं आई। शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा। इधर वाले हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा। भोला बम बम भोला, बम बम भोला भोला, बम बम भोला। ओ बम बम भोला भोला, बम बम भोला, बम बम भोला भोला, बम बम भोला। शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। ओ शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। ओ भोलानाथ भोलानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। 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 शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। शंभो शंकर उमानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। भोलानाथ भोलानाथ, 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 हर हर शंकर भोलानाथ। ओ भोलानाथ भोलानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। भोलानाथ भोलानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। भोलानाथ भोलानाथ, हर हर शंकर भोलानाथ। भोलानाथ भोलानाथ, हर हर शंकर ओ भोलानाथ। भोलानाथ
बला झूले लाल लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा से बनदा सखी शाबाज कलंदर आवाज नहीं आई दमादम अलीदा दमादम अलीदा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी पत्नी रखियो बड़ा झूले लाल सिंदड़ी दा से बनदा सखी शाबाज कलंदर दमादम सखी शाबाज कलंदर आवाज नहीं आई लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल ओ लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल 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 ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंदड़ी दा से बनदा सखी दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे बड़न हमेशा चार चराग तेरे बनन हमेशा चार चराग तेरे बड़न हमेशा ओ पंचमा में पालन आओ सैया झूले लालन ओ पंचमा में पालन आओ सैया झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश दमादम मस्त कलंदर हमेशा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर हमेशा पहला कलंदर दमादम मस्त कलंदर हमेशा पहला नंबर छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के 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 नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना सभी गाएंगे साथ में नैना 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 तो से 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 नैना तो से नैना 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 श्री कृष्ण महाराज की कैसे हैं सब लोग?
तो एक प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए, एक प्यार भरा गाना। और ये प्यार हम भगवान को डिवोट करते हैं, अपने कृष्ण जी को, अपने राम जी को डिवोट करते हैं। Wise men say only fools rush in. If I can't help rising in love with Everyone can turn their flashlights. only fools rush in. I can't help rising in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help rising in love with you? Shall I stay? Would it be a sin? For I can't help rising in love with you.
इनका थोड़ा सा बाइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, परसों 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली। यस, जय श्री राम। तो थोड़ा सा राम जी की भी आराधना कर लेते। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। सभी गाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगा, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, 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 राम आएंगे। जय जय राम। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 श्याम राधे कृष्ण गोविंद श्याम राधे कृष्ण
केशवा यादवा केशवा यादवा केशवा यादवा यदुनंद नंद आनंद कृष्णा गोविंदा 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 कृष्णा गोविंदा 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 गोविंद श्याम राधे कृष्णा गोविंद श्याम राधे कृष्णा गोविंद श्याम राधे कृष्णा नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला मुकुंद कृष्ण गोविंदा मुरली कृष्ण गोपाला मुकुंद कृष्ण गोविंदा मुरली कृष्ण गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला मुकुंद कृष्ण गोविंदा मुरली कृष्ण गोपाला मुकुंद कृष्ण गोविंदा मुरली कृष्ण गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाला गोपाला हे नंद नंद गोपाला आनंद नंद 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 गोपाला हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद नंद गोपाला हे नंद नंद आनंद यदुनंद नंद गोपाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है वो है अलबेला मजनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो है अलबेला मजनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना
है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल 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 हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, बम बम भोले, जय माता दी। अब आप हमें अगली बार नहीं बुलाओगे अगर हम अभी गा देंगे तो। हाँ, अगली बार हम आपके लिए 2 राम भजन और लेके आएंगे, 1 2। आइए आप सभी के लिए तो हम गाएंगे ज़रूर, बट आप लोगों ने हमारे साथ गाना है, पक्का प्रॉमिस। आइए, थोड़ा शांति वाला भजन है, प्यार वाला भजन है, बिकॉज दिस इज़ टुडे, फॉर टुडे इट इज़ द एंड। तो आज हम चाहेंगे आप सब लोग अपने दिल में राम जी का नाम लेके जाएं, और 22 तारीख को भारत के बच्चे बच्चे के मुंह से क्या निकलना चाहिए, ये बात। सब लोग बैठ सकते हैं।
सब लोग बैठ जाएं आराम से। राम जी के भाव को महसूस करते हुए तू ही माता, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम। सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 हो तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े बोलती रहेगा। ओ तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, हे राम हे राम हो तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, हो तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसारे, मन में राम बसारे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो
आंखें बंद कर लेते हैं सभी लोग। और ये जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है, इसके लिए नेचर से, भगवान से शुक्रगुजार महसूस करते हैं कि ये काम फाइनली हो गया। इसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बहुत ही बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरीके से सारे डिस्प्यूट्स को सेटल किया, सारी मीडिएशन करी, तो भगवान से इस बड़े अवसर के लिए आज शुक्रगुजार महसूस करते हैं और आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लें। Jai Jagannath. What a lovely evening it is. You guys have made us dance and sing all together. I would like to give you a huge round of applause for them. And one applause for yourself also. इतनी अच्छी beautiful audience के लिए ऐसा नहीं देखने को मिलता हमेशा. Thank you so much. But I want to ask you, are you really singers? Because I feel you are magicians. You have made us dance and sing all together. It was really beautiful and really nice. Now, I would like to ask our director, Sir Gosal, Sir, to felicitate all of them. Once again, I would like to thank Chandan for playing the beautiful keys for us. Khushi Patil from Shishi University studying osteopathy and medical science. Apurva from psychology. And Sagarika. Apurva and Sagarika both on vocals. And we have Rajas on vocals. We have with us Shivani on the vocals. And Arin and Shashank, both on the percussion. And myself, Kushagra, on guitar and vocals. Thank you so much. This was a beautiful, beautiful evening. So by the time our sir is coming, can you please tell us how you guys met and how you formed this beautiful group and you started all this doing? Oh, you're asking me. Yeah, I was. Please, तो लाइक कैसे आपने ये सब चालू किया? लाइक आप लोग इतने सारे अलग अलग फील्ड से हो, तो आपने ये ग्रुप फॉर्म कैसे किया एंड ये सब कैसे शुरू हुआ? तो हमें से कुछ लोग 6 साल पहले मिले थे श्री श्री यूनिवर्सिटी में. हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं वहाँ पर ऑस्टियोपैथी. कुछ लोग ऑस्टियोपैथी पढ़ने आए. तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, बड़ी ब्यूटीफुल साइंस है ऑस्टियोपैथी. इसमें हम बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट करते हैं. और हमें इसके बारे में पता चला कि इतनी सुंदर साइंस भी एग्जिस्ट करती है कि भाई सारी बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक हो जाती है. तो हम भी बाकी लोगों की तरह MBBS करना चाहते थे. कोई लोग डेंटिस्ट बनना चाहते थे, कुछ लोग आयुर्वेदा में जाना चाहते थे.
बट ये एक न्यू और बहुत ही इफेक्टिव ब्यूटीफुल साइंस हमें पता चली, तो हम आए श्री श्री यूनिवर्सिटी में ऑस्टियोपैथी पढ़ने के लिए। उसके बाद हम में से बाकी जो लोग हैं वो लोग आए हमसे 2 साल बाद, 1 साल बाद, और जैसे जैसे सब लोग जुड़ते गए, ये माहौल इतना सुंदर बनता गया, इस टीम की एनर्जी इतनी बढ़ती गई। हम लोग कभी नहीं गाते थे पहले, ना ही कभी सत्संग करते थे, कुछ भी करते थे, बट वहाँ पर आए तो हमें लगा जी ये तो करना चाहिए। आपके मन, अभी आपका मन कैसा लग रहा है? आपको आपके मन के अंदर शांति महसूस हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? कुछ तो बात है, देखिए कुछ तो बात ज़रूर है, बस वही बात है। वही बात लेके हम लोग भी इसी मोटिव से कि हम हर जगह जाकर सबको ये सुंदर बात महसूस करवाएं, क्योंकि हमने खुद से वो बात महसूस करी है। और हमारे गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं, आप सबके साथ हैं, आपको ये भाव, ये मस्ती दे पा रहे हैं, तो ऑल थैंक्स टू हिम। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, आप लोग हमारे यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ सकते हैं। हर थर्सडे यूनिवर्सिटी में सत्संग होता है। जो जितने भी लोग आसपास रहते हैं, श्री श्री यूनिवर्सिटी इट्स इन कटक, नराज ब्रिज, सब लोग जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं भाई, पराठे मिलते हैं वहाँ इतने टेस्टी। तो नराज ब्रिज से बहुत ही पास है श्री श्री यूनिवर्सिटी, श्री श्री यूनिवर्सिटी। आप लोग आ सकते हैं हर थर्सडे शाम को 6:30 से 8:30, 7:30 ये प्रोग्राम वहाँ पर होता है, और आप लोग आ सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। मेडिटेशंस हम सिखाते हैं श्री श्री यूनिवर्सिटी में, और माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स सिखाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आज की एज में। हम सभी लोग चाहते हैं हमारा मन शांत रहे, चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि जब मन शांत होता है तो काम मस्त हो जाता है। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच। हम लोग ज़रूर विजिट करेंगे आपके यूनिवर्सिटी, एंड वी विल हैव योर CEO म्यूजिक अगेन। So I would like to request our head of department, Sri SR Rai, to felicitate all our talents. It's a small gift from our institute. Keep the applaud going. I would also like to ask Sinjan Das to join us on stage for felicitation. Please. Sinjan Das, how are you? Sir, आओ जोड़ें. It's a film institute. So let's.